both Mahesh and of course the Bedra Media having a live telecast here. Here is the first ball of the day number 3. The batsman going for the reverse sweep. Damodar went for the reverse sweep. This time wide signal umpire, non-striker, they wanted to get the single Kishore in the negation, and the rightly so Damodar said, of course, this is a first delivery. You need to be a little bit the patience so that first run comes up in the form of extra for YFC Krishnanagar. Fires balls, beautifully bowled, equally well played there by Damodar. Almost down the leg stump, batsman off the back foot. Damodar very strong off his legs and placing the ball quite nicely towards the deep mid-wicket region for his first run and second run of that total score of YFC Krishnanagar. Fires, away from us, right arm over the wicket. To Kishore this time, lovely delivery, but little bit that ball is going down the leg stump. At the same time, the bat is involved in the negation, and with that single, even Kishore is also off the mark with a single. 3 without loss of any wicket here in over number first in progress. Bright sunny morning today, very good weather condition. As the next ball, fires balls, going for the cut shot again, missed it completely, beautifully bowled, excellent line, and even the width is offered for the batsman, but the line and that ball is just came along the carpet, so the batsman completely missed out, and there is no chance of any run. 3 without loss of any wicket here in over number first in progress. Away from us, right arm over the wicket, fires balls to Damodar, drives the run powerfully, good piece of fielding there by fielder in the negation. In one action, Anish fields the ball, and third umpire in first over itself. It's now for the third umpire to decide whether it's out or not out here, and wait and see how close it's going to be, that run out appeal. So not out is the call from third umpire. The very good piece of fielding there by Anish. If it is a direct, it might be that it was the end of Damodar. As the fact that after throw coming from Anish, and bowler collects the ball and then removes the bails, and the batsman has got a time to reach his home. So Damodar safe, 4 without loss of any wicket here in over number first in progress. Fires, bowling away from us with the short run up. Past umpire Roland Pinto at square leg. Sriraj are the 2 field umpires for the first match. This time chip that one just over the head of that fielder and down towards a short cover point region, between short cover point and deep cover point. In middle of that, the fielder going back and fields the ball, and batsman got ample time to complete the single. With that single, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Payaz again bowling away from us. Right arm over the wicket to Damodar. Damodar across the line of the delivery, tried to place one of his favorite shot, but line is so good in the negation there from Fayaz. So batsman completely missed out that ball from his bat. Good over. After winning the toss, green line, Kasaba Bengre elected to field first, and bowler Fayaz just exploiting the morning condition of this cricket ground, especially in the pitch. We can see a little bit wetness in both the end, and because of yesterday a lot of watering for the pitch to make that one very suitable by the groundsmen and curators. Done a great job here to make this pitch once again the third day's pitch this is, but seems to be pretty good here, and a lot of watering is done in the evening after that match, and that's why we can see some little bit wetness in this both the end in the wickets, but it will go into dry very soon because we know that the bright sunshine today, that condition seems to be a pretty good here. There is no cloudy weather condition. It's a bad sunny morning. The blue sky and the birds are flying high. Here is a first delivery of the over number 2 and second over of the power play.
Imtiaz balls the morning warm-up delivery, and the white signal umpire Sri Raj, so scoreboard moves on to 6 on the board without loss of any wicket. This time, lovely shot there from Kishore, just over that off infield, the ball running down, a lovely piece of fielding there by the fielder at wideish long on. Almost he is in a wideish long on. Look at the way he is covering the ground from wideish long on to deep long off when he was collect the ball. Excellent. He's a very good tall fielder there in the deep long on, so that he managed to tackle with a bounce. Again, this time straight to the hands of deep extra cover. Kishore this time I wanted to hit the big shot, but placement is not right. Nothing wrong with the stroke, but something wrong with that placement. So Imtiaz quite deliberately tossing the ball and inviting the batsman to go for the big shot on the offside region. He kept the one fielder and the deep extra cover. And Kishore couldn't manage to see the fielder, then pays the penalty for that. And YFC Krishnanagar have lost their first wicket at the score of 8. Imtiaz, the captain of Green Star, Green Line, Bengre, they got a very important breakthrough here. So new batsman is one more fantastic performer. Ranjit came into middle here, very experienced campaigner for the side of YFC Krishnanagar. Usually represent Vikram Magrodi, but in this match, as Vikram Magrodi was not really taking part, he is representing for YFC Krishnanagar. From the far end, bows this time, lovely shot. That was a delightful reverse throw coming from the blade of Damodar, and no chance at all for the fieldsman. The moment that ball left the bat of Damodar, one can realize that that will go into be a boundary. Excellent cricketing stroke there from Damodar towards a deep back point region boundary for 4 runs. Much required boundary came from Damodar in that occasion. 12 on the board. This time Damodar little bit again direct it. They're going for the run here, just grabbing the opportunity for that direct it, and the batsman completed a single. Damodar this time the previous delivery, what he wanted to hit the ball on the onside region, quickly realizing that the line is outside the line of off stump, not quite able to hit the ball properly. Then because of a direct hit coming from that short third man fieldsman, the batsman able to complete the single. 13 for the loss of 1 wicket. Yes. Irfan from the far end, from the Venkatesh Bhandari end, bowling right arm over the wicket, balls Ranjit quite focused in the delegation, very patient, seeing the line of the delivery, pushing the ball right in the gap towards the extra cover to pick the single. 14 for the loss of 1 wicket. This time again Damodar trying for the similar shot where he got a boundary in that over, but he is a little bit frustrated with himself that line is that much of suitable to play the reverse stroke, but he missed it from the bat. Might be a little bit early into the strokes. The ball is came late to him, missed it completely. It's a completion of over number 2. YFC Krishnanagar are 14 for the loss of 1 wicket. They're going exactly 7 runs per over. For the latecomers, it's match number 1 is going on here, the day number 3 of this prestigious Kudla Premier League 2021 season 6. As the fact that young friends Urwa, they are celebrating their 25th year, so that on the memory of that they wanted to make this 25 years very sweet memories for them, and they are organizing such a wonderful cricket tournament in the name of Kudla Premier League 2021 season 6. And one must say that festival of cricket is going on here. After that 2 successful day number 1, day number 2, very successful. Now we are started the day number 3. The match number 1 is going on. 14 for the loss of 1 wicket. Our another co-commentator Janab Abdul Samad Katipalla just arrived here in commentary box, and good morning to Abdul Samad Katipalla.
So Ashpak is bowling right arm over the wicket balls. This time Ranjit just taken an aerial route. No, exactly the fielder is in the deep, very safe shot, but quite knowingly just chipping that one down to extra cover region for a single. With the single score moves on to 15 for the loss of 1 wicket. Ashpaka. Bounce to Damodar once again rotating the strike quite nicely. Chance of run out. Damodar little bit jogging there in the middle. If it is a direct hit, I think Damodar's innings must be close here. And might be little bit in the middle. Damodar little bit slowing down. And fortunately for him that his ball is missed the stump. And warning number 1 has been given to Damodar for a bowler. In fact, that's why he's bowling down the wicket. Short mid wicket fielder fields the ball, but ample time for the batsman to complete the single. With the single, 17 on the board. Again Ashpak round the wicket operates balls. And Damodar again delicately played down to deep fine leg region, sweeping the ball quite beautifully, very very strong behind the wicket and square of the wicket. Damodar picked up one more single, 18 on the board for the loss of 1 wicket. For the next match I would like to call upon Sarvagni Urwa as well as Torpedoes Khana. Please report here and kindly request you to complete the formalities of signature. This time Ranjit going for the reverse sweep. He's got a little bit bat in the negation, tried to hit that one down to deep backward point region, but ball is went very fine towards the fine third man region. Fieldsman there in the deep, so batsman have to settle for the single. 19 for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Ashpak round the wicket, he bows. Damodar runs again, works that one on the onside region. In this over the batsmen are dealing with the single. They exactly know they exactly know that each and every run, if they are able to pick the single, they will coming very close to that 40 to 45 runs. And now it's a 20 on the board for the loss of 1 wicket. 3 overs completed, 20 for the loss of 1 wicket. YFC Krishnanagar are still they are looking for some acceleration of run rate, having 9 wickets in hand, having Damodar and Ranjit, 2 very good batsmen are in the middle. I think the Green Lions Bengare have to ball very good in the remaining 3 overs, and wait and see the kind of reply coming from the batsman, and wait and see how well Green Lions Bengare will going to restrict the batsmen of YFC Krishnanagar. Meanwhile, I would like to once again welcome Gopi for the further explanation of the match in our national language Hindi. And Gopi, welcome back and good morning to you. Subhodaya. And day number 3 is going to be very interesting, because in this day one team will going to qualify for the finals of this prestigious cricket tournament, and that's why the day number 3 is going to be the one of the most important day for the local teams. And looks like it's going to be the one more good day here for young friends Urwa, the Kudla Premier League. And over to you, Gopi. बिल्कुल सतीश, सारे दर्शकों का मैं गोपी यहाँ पर स्वागत करता हूँ. बिल्कुल सही बात आपने फरमाया. आज का दिन एक और बेहतर दिन क्रिकेट के लिए यहाँ पर साबित होने की उम्मीद अपेक्षा यहाँ पर हम रखते हैं. और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कुडला प्रीमियर लीग सीजन 6 2021-2021 और पहला मैच आज का यहाँ पर खेला जाता हुआ ग्रीन लाइन बेंगरे और YFC कृष्णनगर के बीच. ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई गेंद को इस वक्त खेलना चाहूँ, और जहां तक सवाल है रनों का तो रन मिलेंगे 1, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 22 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर. 22 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. फयाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार बेहतर गेंद थी इस वक्त, और इसी के साथ ये विकेट यहां पर गिर चुका है. मेरे ख्याल से प्लम्ब इन फ्रंट इस वक्त घोषित, और बिल्कुल जमीन पर गेंद टिप्पा खाकर आए थे जमीन के सहारे अलोंग द कार्पेट, और दामोदर गेंद को ड्राइव करने के प्रयास में चूंकि उनके पैर पर गेंद टकराई और उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है. 22 for 2 इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस. आज इस श्रृंखला का तीसरा दिन का पहला मैच यहाँ पर खेला जाता हुआ, और KPL सीजन 6 2021 इस शानदार श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है. यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड और फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड ने
अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर सिल्वर जुबली 25th ईयर। और ये श्रृंखला यहाँ पर एक शानदार प्रगति करते हुए कल मैंगलोर के टीमों के टॉप सीरीज टीमों के मैचेस खेले जाएंगे, लीग मैचेस। 8 प्रतिष्ठित मंगलूर की टीमें कल हिस्सा लेंगी और 8 टीमों को दो गुटों में बांट दिया गया है। 4 टीम एक गुट में होगा और 3 मैचेस उन्हें हर ग्रुप में खेलने होंगे एक दूसरे से। और उसके बाद दोनों ग्रुपों से 2 टीमें सेमीफाइनल को प्रवेश करेंगी। और यहाँ पर ड्राइव कर दिया वाइडिश एक्स्ट्रा लॉग ऑफ की दिशा में 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका। 23 रन 2 विकेट के नुकसान पर 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, फयाज गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, लेकिन 1 रन उन्हें जरूर मिलेगा। मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका 24 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर 24 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ स्टंप्स को कवर करते हुए डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और दूसरे रन के लिए बल्लेबाज दौड़ पड़े। वहां पर मैं समझता हूं थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर या फिर फील्डर वहां पर धीमे थे, तो इस वजह से बल्लेबाज के पास समय था 2 रन न पूरा करने का। ये देखिए किस तरीके से हुआ, इत्मीनान के साथ गेंद को फील्ड करना चाहा, गेंद उनके हाथों से छूटी, मिसफील्ड, और इस मिसफील्ड का फायदा उठाकर बल्लेबाज ने दूसरा रन पूर्ण कर लिया और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इन 2 रनों के साथ 26 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर, जबकि 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 overs completed and it's 26 for the loss of 2 wicket after completion of 4 overs. 2 overs remaining in their innings, and let's see how many runs they are making in this remaining 2 overs. तो 5वां ओवर यहां पर शुरू होता हुआ अनीश गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार फाइन गेंद को निकालने में सफल, लेकिन स्ट्रोक्स में ज्यादा रफ्तार नहीं, रिवर्स शॉट खेलना चाहता। मैं समझता हूं गेंद उनके टॉप एज पर टकराने के बाद थर्ड मैन की दिशा में निकली, मत स्ट्रेटर, और स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं, तो इस वजह से गेंद फील्ड कर ली गई 20 गज के दायरे के कुछ बाहर, शॉट थर्ड मैन पर 1 रन का इजाफा हो चुका है। 27 बोल्ड आउट, स्वीप करना चाहा, परिवर्तन के तौर पर धीमी ऑफ कटर गेंद, और इस ऑफ कटर के टर्न को समझ नहीं पाए और बल्ला पहले अड़ा गए, गेंद बाद में आई और बल्ले और गेंद का कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे जा टकराए मिडल और लेग स्टंप पर। तीसरा विकेट गिर चुका है वही एफसी कृष्णानगर का 27 रनों के ऊपर। इट्स 27 for 3। अगला मैच सर्वाग्नि उर्वा और टोरपेडोस खाना के बीच में खेला जाएगा और मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर दर्ज करने के लिए। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು। नए बल्लेबाज का आगमन यहां पर होता हुआ नवाज नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर मौजूद और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ऑफ कटर गेंद कट किया, बैकफुट पर जाने के बाद गेंद को रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन मिलेगा। इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता और 1 रन के साथ कुल स्कोर बढ़कर यहां पर पहुंच चुका है 28 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, अनिश की गेंद ऑफ द टोस, गेंद को मोड़ना चाहा और गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 29 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 29 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 5 इन प्रोग्रेस। और एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया खूबसूरती के साथ, पैडल स्वीप, गेंद पहुंची डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में और इससे पहले कि गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 30 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर यहां पर प्रगति पर। अनीश
इस ओवर में अंतिम बार गेंदबाजी करते हुए मोटे कद के खिलाड़ी इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अनीश की गेंदों का ऑफ कटर, गेंद को खेल दिया, गेंद की टर्न को पहचानते हुए मिड ऑफ पर रहा और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति। 5 overs completed. It's 31 for the loss of 3 wickets scored by YF Krishnagar at batted first after being losing the toss and put it to bat by Green Line Bengre Kasba in the match number 1 of the day 3 of KPL season 6 2021. रंजीत सामना करने के लिए तैयार और गेंदबाज यहां पर नया ओवर प्रारंभ करते हुए अंतिम ओवर शुरू होता हुआ YF कृष्णनगर की पारी में पहली गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई तेज तरीके के विकेट कीपिंग और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में क्रीज से कुछ हद तक बाहर निकल चुके थे और इसे देखते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट चटका दिए और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। इम्तियाज थे विकेट कीपर। जहां तक सवाल है विकेट का तो विकेट नंबर 4 गिर चुका है इस वक्त 31 रनों के ऊपर। इट्स 31 for 4 एंड रंजीत डिपार्ट्स एंड जस्ट नाउ 5 balls remaining in their innings. संतोष का आगमन यहां पर हो चुका है और गेंदबाज अशफाक इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में और यहां पर बल्लेबाज खड़े हुए हैं लेकिन उन्हें यहां पर जाना होगा क्योंकि कॉटन बोल्ड यहां पर लिया गया है और इसी के साथ ये विकेट नंबर 5 यहां पर गिर चुका है। 31 for 5 with just 4 balls now remaining in their innings. हैट्रिक का मौका इस वक्त गेंदबाज के लिए, अशफाक के लिए। मंसूर का आगमन होता हुआ और हैट्रिक गेंद लेकर इस वक्त तैयार गेंदबाज अशफाक और फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई सारे फील्डर अपने स्वस्थान पर लौटते हुए और इस बीच मंसूर सामना करने के लिए तैयार। अशरफ की हैट्रिक गेंद का यह गेंद बल्ले का भीतरी किनारा, आक्रामक स्ट्रोक खेलना चाहा लेकिन बल्ले का भीतरी किनारा टकराने के बाद गेंद पहुंची शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में। 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 32-32 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 एंड लास्ट इन प्रोग्रेस इन देयर इनिंग्स। फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट करते हुए विकेट कीपर इम्तियाज और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है अशफाक का गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट स्वीप किया शॉट फैलने की दिशा में। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 33 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। आज का पहला मैच यहां पर खेला जाता वो YF कृष्णनगर और ग्रीन लाइन बंगरे के बीच में और
अशफक गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए मंसूर के लिए रिवर्स शॉट, इस वक्त गेंद तो उछाला पॉइंट फील्डर के दाईं ओर से और दौड़ लगाने के बाद जब तक गेंद को वो फील्ड कर रहे बल्लेबाज तीसरे रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन इस बार वो बच नहीं पाएंगे और 2 रन उनके खाते में जुड़ेंगे और तीसरा रन चुराने के प्रयास में यहां पर अपना विकेट गंवा चुके हैं रनआउट के रूप में बल्लेबाज। 2 रन उनके खाते में जुड़ चुके हैं 35 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस वक्त बाकी और उस अंतिम गेंद का सामना करने के लिए बल्लेबाज इस वक्त आगे बढ़ते हुए क्रीज की ओर, फिलहाल वो नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद और स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार नवाज। तो अशफक गेंदबाज नवाज के लिए उनकी पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड विकेट, लेग स्टंप से काफी बाहर और एक और इस बार वाइड का इशारा हो चुका है और इस बीच ये विकेट गिर चुका है यहां पर रनआउट के रूप में। तो 7वां विकेट, इट्स 36 for 7 एंड स्टिल नाउ लास्ट बॉल रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स। तो मुनीर का आगमन हो चुका है और सामना करने के लिए तैयार अशफक की गेंदों का अंतिम गेंद लेकर तैयार गेंदबाज। यह गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट फाइनल की दिशा में गेंद पहुंची और इस बीच 1 रन मिल चुका है। इसी के साथ द इनिंग्स इज अप फॉर वाईएफसी कृष्णनगर। दे फिनिश्ड विद 37 for the loss of 7 wickets and now the target for Green Line Bengre is 38. They have to score in the stipulated 6 overs. And as far as the required run rate is concerned, exactly 6.33 runs per over they have to score for victory with the help of 10 wickets. The present equation shows for them, and let's see can they reach the target or not. So their inning starts with a shot while और उनकी पारी की शुरुआत चंद लम्हों बाद यहाँ पर होगी और जब उनकी पारी की शुरुआत होगी हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद के साथ राज्यभाषा कन्नड़ में जब ग्रीन लाइन बेंगरे की पारी की शुरुआत होगी यहां पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।
ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಹಾಗೂ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದಿನದ ಬುಧವಾರದ ಮುಂಜಾನೆಯ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡ್ರೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಈಗ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 38 ರನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ಜೊತೆಗಿರುವವರು ನೌಷಾದ್ ರವರಿಗೆ ಸುಸ್ಟನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕವರಣ ತುದಿಯಿಂದ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ನೌಷಾದ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನು ತಸ್ಲೀಂ ರವರಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಸ್ಲೀಂ ಓರ್ವ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಲಮೀನ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 3ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ. ಈ ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳು 6 ಓವರ್ಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸುಸ್ಟನ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೌಷಾದ್ ರವರಿಗೆ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರಿಂದ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ. ಇದೀಗ ನೌಷಾದ್ ರವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ. ಆ ನೋ ಬಾಲ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ. 35 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಹಾಗೂ ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಓರ್ವ ದಿಟ್ಟ ತೀರ್ಪುಗಾರನೆಂದು ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹೊಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ, ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ ಕೈಯಾದವರು ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜೀವಂತವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರ ಪಾತ್ರ ಹಿರಿದಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಟನ್, ನೌಷಾದ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಸುಸ್ಟನ್ ಕ್ಯಾಚಿಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಭೂಮಿಗೆ ಧರೆಬಿತ್ತು. 5 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತಗಳು ಇನ್ನು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಗಾಂಧಿನಗರವನ್ನು, ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಕಾವೂರು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ಅಲ್ಲಮೀನ್ ತಂಡವನ್ನು, NFC ಉರ್ವಾ ತಂಡವನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ ಸುಸ್ಟನ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸುಸ್ಟನ್. ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ನಾಮ ಅದು ಸುಸ್ಟನ್. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 5, 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಯುವ ಒಳಗೆ
ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸರ್ವಗ್ನಿ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಸಹಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಘಟಕರ ತೀರ್ಮಾನ. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದಿವಸ 8 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 1 ಓವರನ್ನು ಕುಂಠಿತಗೊಳಿಸಿದೆ. 7 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು 6 ಓವರಿಗೆ ಇಳಿಸಿ ಈ ದಿನ 8 ಪಂದ್ಯಗಳು ಮುಗಿಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಓವರಿನ ಕಡಿತವನ್ನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಗ್ನಿ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಸಹಿಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಗಿದೊಡನೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ತಸ್ಲೀಂ ರವರನ್ನು ಸೇರಲು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ನೌಷದ್ರವರಿಗೆ ತಸ್ಲೀಂ, ಸಂತೋಷ್ ನೌಷದ್ರವರಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 38 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 5 ಬಂದಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು. ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 38 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 5 ಬಂದಿದೆ. ತಸ್ಲೀಂ ರವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೌಷದ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೌಷದ್. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಹಾಗೂ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ. 6 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ 3ನೇ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಇದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್. ಯಾಕಂದರೆ 2 ಅದ್ಭುತ ಆಟಗಾರರು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೇವಲ 38 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್. ಸುಲಭ ಚೆಂಡಿದು. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ನೆಗೆದೆದ್ದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸಂತೋಷ್ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಉರುಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ರನ್ನಿಗೆ 2ನೇ ಉದರಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 38 ಮಾಡಿತ್ತು. 36 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ 6 ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 38 ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿತಾ ಇದೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ನೌಷದ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಜೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಲು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸದಸ್ಯ
ಅಶ್ಫಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಅಶ್ಫಕ್ ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭವನ್ನರಿತು ಆಡುವವರು, ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲಂಥ ಆಟಗಾರ. ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಮಿನುಗು ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಅಶ್ಫಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಅಶ್ಫಕ್ ರವರಿಗೆ, ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು. ಸಂತೋಷ್ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶ್ಫಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಆ ಓಟಕ್ಕೆ ಕೈಯೊಡ್ಡಿದ್ರು, ಅಶ್ಫಕ್ ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಓಟ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎನ್ ಕಡೆಗಿತ್ತು. ಬೇಕು ಬೇಡ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಶ್ಫಕ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 8 ರನ್ನಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. ಮೂರನೇ ವಿಕೆಟ್ ಪತನದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. ಈ ದಿನದ ಈ ಬುಧವಾರದ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಲು ಆದಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಆದಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಸಂತೋಷ್ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ. 9 ರನ್ನಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. ಇನ್ನು 9 ರನ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 3 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 29 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ನಾಯಕ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇನ್ನು ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಸ್ಲೀಂ, ಅಶ್ಫಕ್ ಹಾಗೂ ನೌಷಾದ್ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ತಂಡದ್ದು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೊರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆದಿಲ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ರಂಜಿತ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಒಳಗೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಗ್ನಿ ಉರ್ವಾ ಸಹಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ, ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪಂದ್ಯಾಟಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆಗಾರ ರಂಜಿತ್. ಪ್ರಥಮ ದಿನ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಕಾರ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರಿಗೆ, ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡು 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದಿಲ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ
ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕನೂ ಹೌದು, ಬಲಿಷ್ಠ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಈ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮೂರಿನ ಹೆಸರನ್ನು ರಾರಾಜಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸದುದ್ದೇಶವನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾ ತನ್ನ ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯ ಆಟದ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 11 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಈ ಬಾರಿ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಯಾಚ್. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ. 11 ಮಾಡಿದೆ, 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೇತನವನ್ನು ಕೊಡುವವರು ಯಾರು? ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ನಗೆಯನ್ನು ಬೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಆಟಗಾರ ಯಾರು ಎಂಬುದು ಬಹಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟ, ಇದು 3ನೇ ದಿನ. ಇಂದು ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಫೈನಲಿಗೆ ಬರುವ ತಂಡ ಯಾವುದು ಎಂಬ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಇವತ್ತು ವಹಿಸಿದರೆ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಿಗ್ಗಜರ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆದಿಲ್ ರವರನ್ನ ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಬೀರ್ ರವರ ಆಗಮನ. ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎತ್ತದೊಂದಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 12 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ರಂಜಿತ್ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಆದಿಲ್ ರವರಿಗೆ. ಆದಿಲ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ರನ್ ಪೇರಿಸಲು. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಆದಿಲ್ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 13 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ತುದಿಯಿಂದ ರಂಜಿತ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 14 ಬಂದಿದೆ. 3ನೇ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಬೆಂಗಾರೆ ತಂಡಕ್ಕೆ 24 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಹಳ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲುವು ಯಾರಿಗೆ ಎಂಬುದರ ಆ ಅಂಶಾಂಶವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಿಚ್ಚಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. Hello, mic check. Thank you very much, Janab Abdul Samad Katipalla. So match is going to be very interesting here because another 24 runs to get from remaining 18 deliveries, so that it's going to be a very interesting match. Imtiaz still there in the middle facing first delivery of the over number 4.
And this time, little bit correction. Imtiaz is back into pavilion. Now the two batsmen are in the middle. Adil and Shabir, the two batsmen, have to do the job here for Green Line Bengre if they wanted to win this match. 15 for the loss of 4 wickets, and single is taken by the batsman, the previous delivery. And now Adil facing Munir. This time straight to the hands of fieldsman, and he missed it. That was a straightforward catch. Absolutely straightforward catch here for one of the senior most. The fieldsman of YFC Krishnanagar missed the ball completely, and just got the opportunity here, and he missed it. From the Venkatesh Bandari, and right arm over the wicket, bounce to Adil. Adil this time chipped that one quite rightly in the gap. They're running hard. They completed it two. If run well, they can come back for the third, and they will. Absolutely good running between the wicket. And these 3 runs, certainly Green Lines will going to enjoy that one. Very important 3 runs here for the batsman Adil. Quite deliberately, he chipped that one between the gap in the air, but Shabir is placed the ball quite beautifully, and exactly there is no deep cover point, there is no deep backward point, and it's a long way to go for the deep extra cover fielder to cover the ground, and batsman got enough time to complete that 3 runs. 19 for the loss of 4 wicket, and now 19 to get in remaining deliveries. 15 deliveries to go, and 19 to get. Mobile balls, batsman drives it and powerfully towards the deep long off region. They're looking for the second. In comes the throw. Very good throw coming from the fielder. Just over the bills in the end of non-cycles, and the batsman have to settle for the single. 20 for the loss of 4 wicket. 18 more runs required for the victory in the remaining 14 deliveries. From the Venkatesh Bandari and Mobile bowling. A right arm over the wicket to the right-hander batsman Shabir. Shabir drives that one beautifully. It's very straight. Oh, good piece of fielding that by the fielder. Once it looks like the fielder will going to misjudge that turn of that stroke came from the bat of the batsman, but he managed well when the ball is almost changing the direction after the ball is falling short of that fielder, and he's managed very well to keeping the eye on the ball in the last moment, and batsman able to get just a single for that. 21 for the loss of 4 wicket. 17 to get. 13 balls remaining. Right arm over the wicket. Again, the batsman drives. This seems to be a pretty good over here for Green Line Bengre, Kasba Bengre. One more addition to total the completion of over number 4, chasing 38 to win this match. Green Line Kasba Bengre, still they are fighting hard for the victory. They got 22 now. That means 16 to get from 12 balls. Just a difference between Brandon ball is 4, and 8 runs per over required run rate here for Green Line Bengre if they wanted to win the match. So YFC Krishnanagar have to do something special from the bowling, because this overs seems to be very crucial for both the team. As far as Green Line wanted to win this match, I think in this over at least they have to get 8 to 10 runs. Then it's going to be so easy for them when they are dealing with the final overs. When it was 6 runs to get for the final over, I think it's so easy. And coming back to YFC Krishnanagar, if they wanted to keep the match alive for the last over, I think the bowler has to bowl very well. They have to bowl economical and wicket-taking overs, and then the bowler managed to bowl one economical delivery, the big over of 4 to 5 runs. I think it's going to be very interesting here. So it's anybody's game. Once again, I request all the players of Sarvagna cricketers as well as Torpedoes Khana, if any players are yet to sign the official chart, please sign, because end of this match, then if anybody is coming for the signature, and I think as per the rules and regulation, they are not allowed to sign and they are not allowed to play. Please cooperate with the organizers that you have to complete your signature and you have to complete your tossing ceremony, and before the end of this match. So from the commentary box end, it's going to be jersey number 18 will going to start the proceedings.
Sustan. Sustan will go into ball his second and last over his quota. He bowled no Damodar. I think it's a good move by the captain of YFC Krishnanagar, saying that this is a crucial over because it's no question about keeping the Damodar for the last over. If in this over, if the bowler concedes 9 to 10 runs, then I think it's going to be no use keeping Damodar. But if Damodar in this over is able to put some pressure onto the batsman by bowling one or two dotted deliveries, then I think the final bowler can a little bit be relaxed if it was a 10 runs required from the last over. That's why the captain of YFC Krishna asking Damodar to bowl that very important fifth over. Wait and see how Damodar will going to contribute here. Away from us. Right arm over the wicket balls. Beautifully ball. Sharp incoming delivery. After ball is deflected from the bat and pad ball running down to short fine leg region. One more addition to total. Scoreboard moves on to 23 for the loss of 4 wicket. Now 15 to get and 11 balls remaining for the victory. The batsman is on strike. Shabir. I wait and see how Sabir will going to contribute here. Damodar away from us. Bowls to Sabir. Bowled him, cleaned him up. Ball is just passing between his legs. And that's what the captain of YFC Krishna wanted in this over from Damodar. You know exactly this is the one over. They need to tighten up the screws by picking up the wickets. Outstanding delivery. Look at that one in replay. Damodar having one jump before delivering the ball and sharp incoming delivery. Batsman going for the mighty stroke without seeing the line of the ball, without coming to the line of the delivery. Ball just moving from the good length spot, coming into the batsman very sharply and hitting the off stump of the batsman. Off and midland off stump of the batsman. So one more wicket is back into pavilion in the right time here for YFC Krishna Nagar. They've got a breakthrough here. So new batsman. Not an easy condition for any new batsman coming to the middle when it was no other option at all for the batsman. Have to pick some runs here. 15 to get from remaining 10 deliveries. Damodar bowled 2 very good deliveries and he's bowling third time in this over. Right arm over the wicket to new batsman Iqbal. Iqbal facing Damodar. Bowls. Oh, one more sharp incoming delivery and wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. This is a little bit mistake of the wicketkeeper Ranjit. Ranjit thought that it might be the ball is hits the stumps. It's going to be a bowled. But that was once again extra turn for Damodar in the negation. So he missed it completely. And the strikes are rotated. That's what's going to be a very interesting thing. The strikes are rotated. Then Adil came in to strike now. Adil there for the middle for the long time. And wait and see how we'll go into tackle. This time a slow over one, beautifully bowled, absolutely experience comes into play here. This is what you call the experience. Being the experience is not important, but converting that experience into performance is so important. Here is Damodar is converting that his experience, dealing with some situation, dealing with some under pressure situation very well. The slower one, batsman going for the reverse sweep, missed the line completely and no run has been scored. Damodar bowling away from us. Right arm over the wicket. Adil lofted that one. Fielder there in the dip. Takes a catch. That's the end of Adil's innings. Damodar strikes again twice in this over. All in sudden that one over of Damodar changing the complexion of the match and green line Bengre now came into the situation that do or die. The 24 for the loss of 6 wicket and of the 14 runs required for the victory now. And they got last delivery. What outstanding over there from Damodar. Away from us. Right arm over the wicket. This time batsman going for the big shot. It's going to be one more.
The fielder is coming here and takes a catch. Third wicket here for Damodar. What an outstanding stuff here from Damodar. If I want to say you one thing, before the start of this over, the captain thought up the other bowler. Sustan, I think, he's got a ball in his hand, and at that time, the last minute, the captain changing the mind and asking Sustan to not bowl that over, and he asked Damodar to come and bowl, and that what a great thinking there by the captain. Absolutely good thinking, and Damodar not really disappointing the addition of his captain, and he picked up 3 valuable wickets for just 2 runs. And it's outstanding match turning over ball by Damodar. 24 for the loss of 7 wicket. The next match, Torpedoes Kahana takes on Sarvagni cricketers, and Sarvagni won the toss and elected to not. Decision is pending. Please tell your decision. You have to tell your decision immediately after the toss. Please note. Decided to bat first. Now warm welcome to the owner of Triscon, Oman Samim. He is just arrived here, one of the best supporter of the cricket, and he is wishing for the success of this Kudla Premier League. Thank you very much, sir, for your heartily support for the success of this cricket tournament, and welcome on behalf of organizers and owner of Triscon, Oman Samim. Yes, opportunity of run out is gone. One more wicket is back into pavilion of Green Line. They lost the wicket number 8. 24 for the loss of 8 wicket. To get remaining 5 deliveries. The target is looking tougher and stiffer here for the Green Line, but not impossible in cricket from the far end. Right arm over the wicket, batsman going for the swing of the bat, a little bit shuffled across, but line is so good. Even that is a ball is coming all along the carpet, so no chance at all for the batsman to freeze his arm. Missed it completely. Now 4 balls remaining, 14 to get. Sustan from the Venkatesh Mandari end. Right arm over the wicket, balls. Batsman went for the big shot. Lack of placement. Straight to the hands of Kishore. Direct shot mid on. No question of any run. 3 dotted deliveries in this over. Now 3 balls, 14 to get. And last opportunity here for Green Line Bengre to win this match. Coming down the track, charging again, not quite able to beat the infield. Throw comes from that fielder at short mid wicket, but not quite able to stop the single. Now 2 balls remaining, 13 to get. They can tie the match if he hits the 2 consecutive sixes. They can tie the match and they can go for the super over of the 3 deliveries. Again, going for the swing of the bat, missed it completely. That's it. Now, just an formalities left in this game for OEF Sri Krishnanagar. They really deserve this victory the way they back into this game. I think Damodar is a man who really changing the complexion of this match down the leg stump. Going to be wide. They're going for the run here, running hard. A couple of runs here. But wait and see. Will that couple will going to help them? 27, 11 to get from last delivery. Sustan, if you're not making any mistake in this final delivery, and it's difficult for them to win the match. Lovely shot. The boundary will not going to help, but put them very close to the target. And because of that boundary, they got 31 runs. That means they lost the match by 6 runs. And now they may be thinking about the Green Line
where the things are went wrong. Maybe they're thinking about that over number 5, which is bowled by Damodar, where they lost 3 wickets. If they play sensibly, they rotate the strike, they can get 6 runs, which is their loss, that 6 runs. And that's what we are talking about. Cricket, the losing and winning is a part of cricket, but you should learn from the mistake. You should talk about what the things are went wrong, which department where we play fails to contribute, and that's what all about the cricket. Is a good teacher of up and down. Losing, the winning is a part of cricket, but you need to learn from your mistake. And I think Green Line Bengal might be there little bit talking about this aspect. So now it's time for announce the man of the match. The man of the match is, I think it's not a big question here, not a tough job here for the selector, because a man who scored valuable 11 runs from his bat and then who changed the complexion of the match when it was 16 to get from 12 balls, when it was looks like YFC Krishna can win the match. He came in and dismantling the batting department of the opposition by picking up 3 wickets and conceding just 2 runs, and that's why the Damodar is going to be a man of the match for this match. And for that I would like to invite Umar Samim of the proprietor of Trescon. Please present this man of the match to Damodar for his wonderful all-round performance. Once again, he is justifying Damodar why he was one of the best all-rounder in a present underarm cricket. And Umar Thamim is presenting this man of the match award to Damodar. The Kudla Premier League underarm cricket league match and man of the match, and Kudla Premier League KPL season 6, the first man of the match of the day number 3 goes to Damodar. Lot of cricketing action is coming in this UCG cricket ground. Just like we are already mentioned about the Koti Chennai Trophy 2021 will going to commence in this particular cricket ground on 17th and 18th of this month. Below Sangha Register Urwa Ashokanagara Urwa Mangalore ಇವರ ವಜ್ರೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನೈ ಟ್ರೋಫಿ 2021 ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಉರ್ವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುವುದು. ಬರುವ 17 ಏಪ್ರಿಲ್ ಹಾಗೂ 18 ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಂದರೆ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯವಾರ ದಿವಸದಂದು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ಆಡಲಾಗುವುದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ತಂಡಗಳು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡಿ ಸಂಘಟಕರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ತಂಡದವರು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಹಾಗೂ ತ್ರಿಶಾಂತ್ ಸ್ನೇಹ ಮಾಲಿಮಾರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 4-5 ಟೀಮ್ನ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕೋಆಪರೇಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್. ಎನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಟೀಮ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಯುವರ್ team's name for the participation, because the 5,000 going to be entry fees, and winners will going to get 50,000 cash along with the Koti Chennai Trophy 2021. The runners up will going to get 25,000 cash prize along with the attractive Koti Chennai Trophy 2021. There will be other attractive individual prizes for the best batsman, best bowler, the man of the match, man of the series. Open to all tournament, ಮುಕ್ತ ಪಂದ್ಯಾಟ, ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂದು ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ. So first match is a very interesting finish for the first match of the day number 3, and wait and see how the second match will going to be. And that match will be played between Sarvagni cricketers versus Tarpados Ghana. And in that match, the captain of Sarvagni won the toss, but quite interestingly, they elected to bat first. And this is the only one team, I think, in a UCG cricket ground. Every time when they won the toss, they decided to bat first. And wait to see how well their strategy, the game plan will going to work out here. After winning the toss, they elected to bat first. And before the innings of Sarvagni cricketers will go into commence, it's time to ask Mr. Gopi to take over the microphone in our national language. Please welcome Gopi
for the further explanation of the match in your national language. Thank you. धन्यवाद सतीश. So the match number 2 is now going to begin between Sarvagni Urwa versus Torperuskana. So in this match, Sarvagni Urwa, after won the toss, they elected to bat first, and because of that, their openers are the crease, and the bowler is now brought into the attack for Torperuskana, who will be going to start the proceedings from the commentator box end. और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जयंत के लिए. और जहां तक जयंत का सवाल है, इस वक्त वो सामना करेंगे रिलवान, जो कि गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और मैच की पहली गेंद लेकर तैयार. 6 overs per side to be play, 6 overs format, और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार. मैच नंबर 2 KPL एडिशन 6 2021 इज नाउ कमिंग अप. ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला है. गेंद जाती हुई बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद वहां पर गेंद को फील्ड किया गया फील्डर द्वारा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. आखिरी मौके पर गेंद की उछाल को पहचानते हुए खूबसूरती के साथ गेंद को रिवर्स शॉट खेल दिया था जयंत ने, और 2 रनों के साथ वो अपना खाता यहां पर खोल चुके हैं. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का. 3 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के. जयंत ऑफ द स्ट्राइक हो चुके हैं और प्रदीप इस वक्त सामना करने के लिए तैयार, और गेंदबाज रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए. पावर प्ले इस वक्त जारी, और रिलवान दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद प्रदीप के लिए बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग, विकेटों के पीछे विकेट कीपर द्वारा, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस बीच वाइड का इशारा अंपायर का, लेग स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलती हुई, और 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है. और जहाँ तक सवाल है इस श्रृंखला का, कुडला प्रीमियर लीग एडिशन 6 2021 का तीसरे दिन का दूसरा मैच यहाँ पर शुरू हो चुका है. और यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड और फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड, इनके सहयोग से ये श्रृंखला इस वक्त रचाई गई है, ऑर्गेनाइज की गई है. और ये गेंद अच्छी गेंद ड्राइव किया बैक टू द बॉलर की दिशा में, ओवर पिच गेंद थी. और जहाँ तक जब तक सवाल है रनों का, 1 रन मिलेगा इससे पहले कि मिड ऑन फील्डर गेंद को फील्ड करने के बाद थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रेट पर. यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड इस क्लब के 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 25th ईयर सिल्वर जुबली इस श्रृंखला का आयोजन किया गया है. 5 दिनों तक ये श्रृंखला यहाँ पर चलेगी. आज इस श्रृंखला का तीसरा दिन का दूसरा मैच खेला जाता हुआ खूबसूरती के साथ स्वीप किया इस वक्त जयंत ने गेंद को डीप मिड विकेट सीमा रेखा की ओर गेंद बढ़ती हुई, और गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त जयंत द्वारा, गेंद की लाइन को पहचानते हुए आखिरी मौके पर गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया, स्विंग कर दिया इस वक्त, और डीप मिड विकेट सीमा रेखा को गेंद पार कर चुकी है. पावर प्ले का फायदा उठाते हुए इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर बिना किसी नुकसान के. कुल मिलाकर उनकी पारी का पहला ओवर प्रगति पर. तो गेंदबाज को कुछ समझाते हुए टीम के अन्य खिलाड़ी और कुछ सलाह मशवरा करने के बाद गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी के लिए तैयार. अंपायर रोलैंड पिंटो नॉन स्ट्राइकर के बल्लेबाज से इस वक्त कुछ कहते हुए, और इस वक्त ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज रिलवान जयंत के लिए.
और दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर और इस बीच एक रन का इजाफा लेग बाई के रूप में और लेग बाई के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। बेटर स्टार्ट फॉर शिवाग्नि उर्वा और गेंदबाज रिलवान इस वक्त गेंदबाजी करेंगे प्रदीप के लिए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात था। प्रदीप ये गेंद बहुत ही बेहतर गेंद थी, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई गेंद तक पहुंचने का प्रयास किया, चूंकि गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद 10 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। इट्स 10 विदाउट लॉस फॉर शिवाग्नि उर्वा आफ्टर बीइंग won the toss and elected to bat first in the match number 2 of the 3 of KPL edition 6 2021. They made a pretty good start. It's 10 for none after first over. So that's the story. It's 10 without loss after first over. और जहाँ तक सवाल है इस वक्त दूसरे ओवर का, और दूसरा ओवर लेकर इस वक्त गेंदबाजी करते हुए हमसे दूर वाले छोर से यानी वेंकटेश भंडारी एंड की ओर से सिनान और स्ट्राइक इस वक्त लेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज जयंत पहले ओवर में चौका झड़ने के बाद काफ़ी आत्मविश्वास भरे नजर आते हुए। और यहाँ पर देखना यह है कि वो सिनान की गेंदों का किस तरह सामना करते हैं। फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, पावर प्ले ओवर जारी, दूसरा पावर प्ले ओवर। और जहां तक अगले मैच का सवाल है, फर्स्ट का वॉरियर्स का मुकाबला होगा कुदरोली यंग बॉयज़ के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए। और गेंदबाज सिनान फील्डिंग में जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद स्वीप करना चाहा, बॉल्ड आउट। परिवर्तन के तौर पर धीमी गेंद थी, लॉन्ग द कार्पेट, बिल्कुल जमीन के सहारे आई। गेंद को ऑन साइड पर मोड़ना चाहा था जयंत ने, क्योंकि और गेंद और बल्ले के कोई संपर्क नहीं और गेंद सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर, गिल्ली बिल ऑफ होते हुए। और इसके साथ ये पहला विकेट यहां पर गिर चुका 10 रनों के योग पर शिवाग्नि उर्वा का। 10 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। 7 रन जयंत ने बनाए एक चौके की मदद से और एक अच्छी पारी खेलने के बाद पेविलियन वापस लौट चुका है। पहला विकेट यहां पर शिवाग्नि उर्वा को हो चुका है 10 रनों के योग पर। ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ದಯವಿಟ್ಟು. नितिन का आगमन यहाँ पर हो चुका है और वो इस वक्त सामना करेंगे सिनान की गेंदों का। सुबह का वक्त 10:12 यहाँ पर बज चुके हैं। बिल्कुल साफ शुभ्र नीलाकाश, बादलों का नामो निशान नहीं और इस नीलाकाश तले सूरज इस वक्त झगमगाता हुआ अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ और इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ धूप की तीव्रता भी यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई। गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी इस वक्त करते हुए। दिन धीरे धीरे सुबह से दोपहर की ओर बढ़ता हुआ और फील्डिंग में इस वक्त जमावट चलती हुई। लॉन्ग ऑफ इस वक्त तैनात, लॉन्ग ऑन तैनात, 2 फील्डर 20 गज के दायरे के बाहर और सिनान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। नए बल्लेबाज नितिन इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद स्वीप किया खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, लेकिन अपने पैर के जरिए गेंद को रोका गया इस वक्त स्क्वायर लेग 20 गज के दायरे के अंदर और इस बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। Swept that one well, but good fielding made by the square leg fielder, stopping the ball with his leg, and because of that the batsman gets only a single for that stroke. 11 for the loss of 1 wicket. Now और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। प्रदीप सामना करते हुए, ये गेंद इस बार गेंद को खेल दिया स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पहुंची पॉइंट पर और धीमी तरीके की रनिंग बिटवीन द विकेट एंड इट्स गोइंग टू बी थर्ड अंपायर।
सो इज गॉन। और यहाँ पर ये दूसरा विकेट गिर चुका है। काफी धीमी गति से दौड़े थे बल्लेबाज और आखिरकार रनआउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए 11 रन 2 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। स्वस्तिक का आगमन पानी लेकर यहाँ पर हो चुका है और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है। धन्या नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए और वो इस वक्त सामना करेंगे सिनान की गेंदों का। तो यहाँ पर जहाँ तक एक अच्छा स्कोर रखड़ा करने का सवाल है, इस वक्त के साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त ज़रूरत सर्वाग्नि उर्वा को। और देखना यह है कि जो कमी इस वक्त नज़र आ रही है साझेदारी की, उस कमी को धन्या प्रदीप के साथ मिलकर साझेदार के रूप में पूरा कर पाते हैं या नहीं। और गेंदबाज सिनान इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज धन्या इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद इस बार धन्या के लिए, गेंद को ड्राइव किया, जगह नहीं बना पाए, फॉलो थ्रू में मिसफील्ड, थोड़ी सी दाईं ओर जाने के बाद गेंद को फील्ड करना चाहा, फील्ड नहीं कर पाए और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। प्रदीप इज नाउ बैक ऑन स्ट्राइक फेसिंग सिनान और सिनान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए प्रदीप के लिए। यह गेंद ड्राइव किया, बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 13 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में और एक गेंद अभी भी बाकी पावर प्ले खत्म होने में। और गेंदबाज सिनान धन्या के लिए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर। धन्या ने गेंद को ड्राइव करना चाहा, दौड़ पड़े, इस वक्त कोई बैकअप नहीं वहां पर, नॉन स्ट्राइक रन पर और 1 रन आखिरकार दोनों बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। तो 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। So it's off the bat, I think so, and single run added to the total. It's 14 for the loss of 2 wicket. In fact, it's a wide now declared by umpire. तो काफी देर के बाद वाइड इस वक्त घोषित किया अंपायर ने। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकल रही थी और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 15 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर। एक गेंद अभी भी बाकी इस ओवर में। और प्रदीप एक बार फिर से गेंदबाजी का सामना करने के लिए तैयार। सिनान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट प्रदीप के लिए। Spectra wide, it's going to be Spectra wide. Yes, it is. 1 + 1, 2 runs added to the total. 17 for the loss of 2 wickets. 17 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर और निस्संदेह 2 विकेट होने के बावजूद इस वक्त रन बनते हुए अतिरिक्त के रूप में सर्वाग्नि उर्वा के लिए। और एक बार फिर से गेंदबाज तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए सिनान धन्या के लिए। ये गेंद ड्राइव करना चाहा, मिड ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा और सीधे मिड ऑफ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया और इसके साथ ओवर नंबर 2 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। तो पहले ओवर में रन्स बने 10, दूसरे ओवर में बने 8, कुल मिलाकर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 18 रन जोड़ चुका है सर्वाग्नि उर्वा 2 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर स्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ 2 विकेटों को खोने के बावजूद। खुदरोली यंग बॉयज का मुकाबला होगा फास्टेक वॉरियर्स के साथ अगले मैच में। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे स्टेज पर संपर्क करें ऑफिशियल चार्ट पर अपना हस्ताक्षर साइन दर्ज करने के लिए।
ನಮ್ಮ ಇಂದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಮ್ ಟ್ರಸ್ಕಾನ್ ಇವರು ಮಾಲಕರು, ಟ್ರಸ್ಕಾನ್ ಇವರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸಂಘಟಕರ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸರ್ವ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಮ್ ಮಾಲಕರು ಟ್ರಸ್ಕಾನ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬಂದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸಲೀಮ್ ರವರೇ. So back to this game and third over start and the bowler is now going to bowl third over is Anil. पहली गेंद लेकर अनिल इस वक्त तैयार. धनिया स्ट्राइक लेते हुए दाहिना तो ऊपर द विकेट. ये गेंद इस बार धनिया के लिए बेहतरीन गेंद, ऑफ कटर गेंद. गेंद को इस वक्त खेलना चाहता चूके और गेंद लगभग ऑफ स्टंप को टकराने के बाद निकल गई विकेट कीपर के हाथ में और इस बेहतरीन गेंद के जरिए ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है. धनिया की पारी समाप्त. 18 रनों पर तीसरा विकेट गिर चुका है. इट्स 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस. तो वैशाख का आगमन यहाँ पर होता हुआ एज नंबर 5 बैट्समैन फोर्स वाग्ने उर्वा और वो इस वक्त सामना करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज अनिल की ओवर की दूसरी गेंद का. धनिया का विकेट गिर जाने के बाद वो कमी फिर से नजर आती हुई साझदारी की सर्वाग्नि उर्वा के लिए. और देखना यह है कि अब नए बल्लेबाज जो है वैशाख वो प्रदीप के साथ मिलकर उस कमी को किस तरह पूर्ण कर पाते हैं. अनिल ये गेंद अच्छी गेंद ऑफ कटर अंदर की ओर आई, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेला शॉट मिड ऑफ पर और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का. 19 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर. तीसरा ओवर यहां पर शुरू हो चुका है और अगली गेंद के लिए इस वक्त गेंदबाज तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए प्रदीप इस वक्त सामना करते हुए. गेंद चिप किया स्ट्राइट ऑफ द बॉलर सेट डाउन टू लॉन्ग ऑफ और 1 रन मिलेगा. इस बीच हल्के से गेंद को स्कूप कर दिया था गेंदबाज के सिर के ऊपर से. गेंद की टर्न को भांपते हुए बल्लेबाज ने और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर. रन्स सिंगल्स के रूप में बनते हुए लेकिन बेहतर बात यह है कि इस वक्त रन्स बढ़ रहे हैं सर्वाग्नि उर्वा के लिए. स्वीप करना चाहा लॉन्ग दिखा पे धीमी गेंद, रनआउट का खतरा, थ्रो पहुंचा, बेल्स ऑफ हुए और इसी के साथ यह विकेट वैशाख का यहां पर गिर चुका है. गेंद सीधे विकेट कीपर के हाथों में पहुंची थी, हालांकि विकेट कीपर के हाथों से गेंद छूटी और इसे देखकर बल्लेबाज ने रन लेने की हड़बड़ाहट यहां पर दिखाई. लेकिन इससे पहले कि नॉन स्ट्राइकर पर बल्लेबाज पहुंचे विकेट कीपर ने आगे की ओर आकर उस गेंद को फील्ड कर लिया और थ्रो किया नॉन स्ट्राइकर पर और थ्रो पहुंचा बल्लेबाज से पहले स्टंप्सों पर जाकर टकराया. गिल्लियां बेल्स ऑफ हुए और बल्लेबाज रनआउट के रूप में आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं. तो नए बल्लेबाज का आगमन नॉन स्ट्राइकर एंड पर. सुजीत इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद जबकि स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए प्रदीप. दाहिने हाथों पर द विकेट अनिल गेंदबाजी करते हुए ऑफ कटर गेंद प्रदीप के लिए खूबसूरती के साथ स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को निकाला. इस वक्त डीप कवर पॉइंट पर गेंद पहुंची और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का.
21 for the loss of 4 wicket. प्रदीप फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए, एक गेंद इस ओवर में बाकी और अनिल गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए इस बार सुजीत के लिए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। इस बार विकेट से हटकर गेंद को खेलना चाहा, समझो पर टकराई गेंद और इस बार जस्ट वी have to wait for the third umpire once again in this over. It's gone. So one more wicket fallen. He fell just short of the crease when the ball was hit to the stumps. And that is the wicket number 4 for Savagne. So unfortunate dismissal for Pradeep. And now they are 21 for 5 after the completion of 3 overs. 3 ओवर के समाप्ति 21 रन 5 विकेट के नुकसान पर सर्वाग्नि उर्वा अभी भी अपनी सही राह को तराशता हुआ और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मेरे अजीज दोस्त जनाब अब्दुल समद को राज्य भाषा कन्नड़ में। आइए समद, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟದ 3ನೇ
ದಿವಸದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಈ ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಮೊದಲು ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ಜಮಾಯಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಆ ನಿರ್ಧಾರ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ 21 ಬಂದಿದೆ. ಮೂರನೇ ಓವರಿಗೆ 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಓವರಿನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಆಫ್ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಪರಿಸರದ ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆಗಾರ ಸಂತೋಷ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೃಷ್ಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎಂಬ ನಿಶಾನಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ ರವರಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 24ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಸಂತೋಷ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಜಿತ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸುವ ಎಸೆತ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಂದ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 26 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ತೆಗೆದು ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಚೇತನ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂತೋಷ್. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಂತೋಷ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಭಾಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 28ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ. ಈ ಬಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಆದರೂ ಲೆಗ್ ಬೈ ಎನ್ನುವ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 29 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ. ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಭಾಳ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ತಂಡದ ಎದುರು ತಮ್ಮ ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ ಸರ್ವಜ್ಞಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 29, 5 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಈ ದಿನ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯರು ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಐದನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅನಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಕೃಷ್ಣ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್ ರವರ 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅನಿಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಅನಿಲ್. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲೂ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್. ಈ ಬಾರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತುಷ್ಟರಾಗಿ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನಿಲ್. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾದರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ
ಓರ್ವ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿ ತಮ್ಮ ಮೆರುಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಓರ್ವ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ದೈತ್ಯ ಸಲೀಂ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದ. ಇದ್ರೆ ಅವರ ಸಹೋದರ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್ ಭಾಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡ ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದವರು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಶೀರ್ ಹಾಗೂ ಶರೀಫ್ ಈ ದಿನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದ ನಿಮಿತ್ತ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ರಜೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಈ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉಸ್ಮಾನ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಬೆಂಬಲಿಗನಾಗಿ ಈ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 30ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಇಂದು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿರಿಯರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಹಕಾರ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎದುರಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾ 31 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಿಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಗುರು ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಸತ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಜಮಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ಬಂದಿದೆ ಈಗ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಆಟಗಾರ ಸುಜಿತ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್. ಸುಜಿತ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾರೆ, ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಸುಜಿತ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ರವರ ಎಸೆತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನೇ ಲಘು ಬಗನೆ ಓಡಿ ಸುಜಿತ್ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. 33 ಬಂದಿದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಅನಿಲ್ ತನ್ನ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗುರು ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬಾಲ್ಡ್. ಅನಿಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 18 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿತು ಸರ್ವಾಗ್ನಿ. ಈಗ 5 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 33 ರನ್ನ ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10, ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 8, ಮತ್ತೆ ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಾ ಬಂತು ಸರ್ವಾಗ್ನಿ. ಈಗ 30 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 33 ಮಾಡಿದೆ. 7 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅದರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಎಂದೂ ಮರೆಯುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಸೂದ್ ಮಾಡುವ ಪಾತ್ರ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿರಿಯದಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಶಮೀಮ್, ಫಾರೂಕ್ ಎಂದಿನಂತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಚುರುಕುತನ, ಆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಅದು ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಆಟಗಾರರು ಮಾಡಿಟ್ಟ ಆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ತಂಡ ಅದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಸೆಗಾರ ರಿಲ್ವಾನ್. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ. ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನರಾಗ್ತಾರೆ ರಿಲ್ವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಸುಜಿತ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ ಕ್ರೀಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಸುಜಿತ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನುಭವದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ
ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ಮಧ್ಯೆ 2 ಓಟ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ, ಆ ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಇದು ಒಳಿತು ಕೂಡ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ಬಂದಿತ್ತು, ಆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ 10 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತದತ್ತ ದಾಪು ಕಾಲಿಡಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಆಟಗಾರ ಸುಜಿತ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ, ಮತ್ತೆ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶರೀಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಓರ್ವ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆಯುವ ಓರ್ವ ಸೊಗಸುಗಾರ ಈ ಶರೀಫ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಿಲ್ವಾನ್. ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು, ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 3 ಬಂದಿದೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಈ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ರಿಲ್ವಾನ್ 3ನೇ ಬಾರಿ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಅಲ್ಲಿ ಶರೀಫ್ ಓಡೋಡಿ ಹೋಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾದರು. 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶರೀಫ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ 2 ಓಟಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವಾಗ್ನಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 5 ಬಂದಿದೆ ರಿಲ್ವಾನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಮಿಂಚಿನ ಓಟ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದೆ, ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಬಹಳ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿಕೆಟಿಗೆ ತಲುಪಿಸಿದರು. ಅದು ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ರನ್ಔಟ್. 8ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 38 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ರನ್ನನ್ನು ಪಡೀತದೋ ಅದು ಗೆಲುವಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಬಲ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 38 ಮಾಡಿದೆ, 34 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 38 ಮಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತ ಇದೆ. ಸುಜಿತ್ ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸುಮಿತ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸುಮಿತ್ ಈ ಬಾರಿ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ, ಸುಜಿತ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ. 5ನೇ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್. ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತುದಿಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಸುಜಿತ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ 35ರ ಮುಂದೆ 38 ಬಂದಿದೆ. 40 ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತ. ಈ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಜಿತ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಫಲಿತಾಂಶದ ಮುಂದೆ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ ತಂಡದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈ ಬಾರಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಸುಜಿತ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತುದಿಯಿಂದ ನೇರ ಕಾಲಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 39 ರನ್ನುಗಳು ಬಂದಿದೆ. 40ರ ಗುರಿ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಸರ್ವಜ್ಞಿ ಉರ್ವ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 40 ರನ್ನಿನ ಸವಾಲು ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ್ ರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಈ ತಂಡ ಕಳೆದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ಗೋರಿ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಆ ನೆನಪುಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಅನುಭವಗಳು, ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯದ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್.
So thank you very much, Abdul Samad Katipalla. So 40 at last, it's a target here for Torpedoes Khan against Sarvagna cricketers. Sarvagna cricketers, they starts well in the beginning, but not quite able to continue that start what they got in the first 2 overs. And downfall starts when their wickets are tumbling in frequent intervals. They lost the wicket, and because of that, they couldn't manage to get a big total. But 40 runs, it's always going to be a total where you cannot underestimate. 6.66 runs per over, the required run at the beginning itself here for Torpedoes Khana, and 6.66 runs per over against the bowling department of Sarvagna cricketers. I think if Sarvagna cricketers bowlers manage to bowl as per the reputation what they got, especially in this particular ground, they're bowling in their home condition, they can give challenge here for Torpedoes Khana's batsmen. And wait and see how well Torpedoes Khana will going to give reply here. And just a while ago, my friend Abdul Samad Katipala is mentioning about that Torpedoes Khana are the winners of Gori Trophy 2021, but I think a little bit correction here. They are not won Gori Trophy 2021, they won Elegant Trophy, and that's what the one correction I have to do. Torpedoes Khana, they won this year's Elegant Trophy 2021, and Gori Trophy, which is won by NM Cricketers Mangalore and KFC Krishnapura, they become the runners of at Gori Trophy 2021. So So 40 is going to be a target here for Torpedoes Khana. Wait and see how well Torpedoes Khana batsman will going to get this 40 runs in 6.66 runs per over in the run rate required. So Nitin is got a ball in his hand. Absolutely is one of the most economical, experienced campaigner for the side of Sarvagna cricketers, who started his career for playing a Friends bowler when Friends bowler are dominating during the 4-5 years back, and he is the one is the key player of Friends bowler, always gives very good start from his opening bowling, and Nitin might be a little bit strengthening the bowling department of Sarvagna cricketers here. Warm welcome to Vijay Raj sir for the commentary box, and here is the first ball, right arm over the wicket. Balls this time, a lovely shot. The first delivery itself, Imran's is lofted that one, but not quite able to get the boundary. Excellent piece of fielding by the fielder in the deep, and that was a good piece of fielding. It looks like when a little bit correction. Akram lofted that one down to mid wicket. It looks like it's going to be a boundary, but that ball is fielded by the fielder in the deep wideish mid wicket, and just a couple of runs for Akram. Previous delivery is a very good line ball by Nitin, seeing that the potential and strength of the batsman around his legs, so that he ball outside the line of off stamp. This time a single-handed reverse sweep, chance of run out here. Might be the wicketkeeper Jayant not quickly coming behind the wicket. Might be a little bit wide throw, understandable. But if he's in a good position, can be there was a run out opportunities created, and a good piece of fielding there by the fielder. There is short third man. Excellent pick up and throw, and the batsman just survived here. So Jalal is a left-hand batsman, one more promising left-hand batsman for the side of Torpedoes Khana. Is always going to be the good to see when there is a left and right combination for any team, the opening batsmen. This time Jalal lofted that one right in the gap towards the deep long on. They're running hard, and before the throw coming from the deep, batsman got ample time to complete that couple of runs. With that couple of runs, scoreboard was on to 2 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Intention is very clear from the batsmen of Torpedoes Khana. They wanted to take the advantage of the fielding restriction of the power play. Nitin again, away from us, right arm of the wicket, beautifully bowled, absolutely perfect one. This time Nitin quickly realizing that if you bowl quickly, the batsman will going to enjoy
because whenever good striker of the ball, they wanted to see that ball is coming very quickly to the bat. When you bowl a little bit slower one, and I think it's a little bit effective, and Nitin quickly realizing, and he bowled a slower one in that occasion, and batsman completely missed out. This time, not a good line, not a good line. Going to be a 1+1, 2 extras here. It's going to be a bonus here for Torpedoes Khana, and with that, couple of bonus runs, scoreboard moves on to 7 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Nitin, little bit struggling with this line and length, quite understandable. Whenever the left and right combination is on, it's not that much of easy for the bowlers to maintain the line and length, because you need to change the line and length each and every time when strikes are rotated. Then very difficult for a bowler to change the line immediately. Nitin bowls this. Oh, what a shot! Imperious, beautifully square right that one. Akram towards the deep backward point position. He won that couple of runs. I think Akram played that one. Lovely square cut, opening the face, and I want to see it in the if the replays available in Bedra Media. I think it was one of the classical stroke to see for any youngsters. If you're watching here in Bedra Media, look at that, how lovely shot actually. Look at that square cut, beautiful shot. This is outstanding technically, because in underarm cricket it's a very difficult stroke to play. In overarm cricket, ball is almost coming in a good height, but underarm cricket very difficult to handle the bounce. Sometimes it's coming along the carpet, sometimes uneven bounces. And considering all this fact, I think it is one of the best strokes to watch in underarm cricket. And Akram picked up that couple of runs, 9 on the board without loss of any wicket in the over number 1 completed. So good start given by the two opening batsmen of Torpedoes Khana. Left and right combination always going to be a headache for the opposition. The time where they're going to spend in the middle, it's going to be very difficult for the captain of opposition. Difficult to set a field every time. They need to change the field set when strikes are rotated. Even the bowler has to change the line and length. They have to change the angle as well. The round the wicket for the left-hand batsman, right over the wicket for the right-handed batsman. So all these things comes into play when there is a left and right combination is on. From the far end, Venkatesh Bandarian going to be a change of second over of the power play will start from Venkatesh Bandarian. Right arm around the wicket, Guru bowls. Jalal went for the big shot. Giant missed it, and batsman not missing the opportunity to go for the single in the form of a bye. Frustration for the bowler. Whenever the bowlers got success to beat the bat of the batsman, the wicketkeeper fails to collect the ball. Suddenly it will go into a little bit frustration for the bowler. And that ball actually just missing the stumps of Jalal. Jalal going for the mighty stroke. The blind stroke is attempted, and luckily that ball just missed the stumps there, and taken a single in the form of bite. 10 on the board without loss of any wicket. From the far end, Guru bowls to Akram. Akram misjudging the ball, but even miscollection by the wicketkeeper behind the stump. Giant is not up to the mark behind the stump. Of course, whenever the down the leg stump, of course, there was excuse for the wicketkeeper because very difficult to collect the ball. Whenever the ball outside the line of off stump, I think the wicketkeeper need to collect that one, because he can see the line of the delivery quite clearly. And there's no excuse at all for that mistake. 11 on the board for the without loss of any wicket. From the far end, Guru bows to Jalal. Jalal drives that one. What a bad throw that one from Sujit. This is not a good cricket, I will tell you. Sarvagni cricketers need to grab the opportunity whenever the opportunity is coming your way. This is not a really bad throw indeed. The golden opportunity is missed out. The opportunity of run out in the non-striker's end. And the batsman completed a single. 12 without loss of any wicket. Guru from the far end. Venkatesh Bandarian searching for the wicket. Akram across the line, swinging his bat through the gap towards the deep backward mid-wicket region. And good footwork by the fielder in the deep. I think it's Amit, the fieldsman there in the deep. Is run hard and covered a lot of ground in that occasion, but not quite able to stop the 3 valuable runs from the batsman. Akram being the experienced campaigner for the side of Torpedoes Khana, he's been promoted up in the order. Usually he's coming in the middle order, but today I think the captain thought that Akram might be a suitable batsman to take the advantage of the fielding restriction, and he's not really disappointing the decision of his captain. 15 already on the board.
Jalal lofted that one again, not quite able to hold the strokes properly. Ball is in the air for a while, but safely landed towards a deep long off region. And with that single, scoreboard moves on to 16 on the board. Runs are coming very freely in this power play overs. Sarvagni cricketers' bowling is not up to the mark today. Yesterday they bowled really very well. They bowled extremely well and not quite able to continue that performance in this match. Akram went for the reverse sweep, one of his favourite, but missed it completely in the occasion. But Giant in that occasion, wicketkeeper behind the stump and succeeded to collect the ball. So one more big over going in favour of Torpedoes Khana, chasing 40 to win this match. It's a 16 on the board without loss of one wicket. That means 24 more runs required for the victory in remaining 4 overs. And that means 6 runs per over is the required run rate here for Torpedoes Khana. Next match, Kudroli young boys takes on Fast Tech Warriors. So I request both the teams, players along with the captain, please report and sign the official chart, as well as please complete the formalities of toss as well. They will go into play the next match. After that, the Friends Kuttar takes on Deadly Kankanadi. So 2 overs completed, 2 overs going in favour of Torpedoes Khana. Needed some bounce back here from the bowlers of Sarvagni cricketers. That's why they called Anantesh to bowl, one of the most experienced campaigner. And if he bowl with the rhythm, I will tell you, he can create the problem for the batsman. And need to see that how well Anantesh will go into the ball here. And he bowling round the wickets to the left-hand batsman Jalal. Jalal, very good striker of the ball, clinical striker of the ball. And having deep backward square leg, deep in wicket, deep wide dish long on, in the offside and a deep extra cover, between deep extra cover and deep cover. The first ball, Anantesh ball, beautiful ball, beautifully bowled. That was a line Anantesh will going to enjoy, especially when the left hand batsman is on strike, is bowling leg cutter. That means incoming delivery for the batsman, and batsman completely misreading the turn of the delivery. Anantesh away from us, balls full toss, try to york the batsman, but certainly that ball is the impact of the line outside the line of off time, no question of leg before wicket. And Jalal's leg almost outside the line of off time when Anantesh tried to york the batsman in the negation, and the batsman cross off for a single. With that single, scoreboard moves on to 17 on the board without loss of any wicket. Anantesh, now one fielder coming from the deep cover point towards the deep backward point. And for Akram of the bowling of Anantesh, right above the wicket, time in this over. Sensible batting there from Akram. He know exactly the potential of this man, bowler, who got us fantastic bowling action and leg cutter. So he is quite watchful in the negation. No, exactly, no need to panic at all. Rotation of strike is much important than going for the big shot and losing the wickets. Here is Anantesh. Balls, Jalal swinging his bat, didn't got that much of enough bat onto that. They're coming back for the second for the throw. Chance of run out in the non-striker end as well. Throw is not quick enough in the negation from the fielder in the deep. That's why Jalal quickly realizing that the laziness of the fieldsman, Jalal calling Akram for the second run, and they made it quite easily in the end. 20 already on the board without loss of any wicket. They laid the foundation. Both the opening batsmen of Torpedoes Khana, half of the job is completed, and they have to complete another half of the job. That means 20 required. Anand bowls. This time Jalal going for the big shot. Ball is landed safely. And they're coming back for the second, and chance of run out. And oh my goodness. Umpire asking for the third umpire because Danya, the fieldsman, coming right in front of umpire. Danya coming right in front of Roland Pinto, so that he really not able to see what really happened. That's why he's asking for the run out. But we are the third umpire, Shiraj, will go in to see will it going to be out or not out. And they're coming back for the second run. Ball actually landed safely, and throw coming from, I think the Pradeep is a fieldsman, is returns the ball towards the hands of wicket keeper. And here we have to see that the batsman safe or not.
whether its bat is in or it is in the air. That was want to see here in this replay, in this technicians of Bedra Media, leadership of Irfan. Irfan, of course, handling that one, being the experience. So coming back to this cricket tournament, for the latecomers, you are watching match number 2 of this prestigious Kudla Premier League season 6 2021, and as young friends Urwa celebrating their silver jubilee 25th year, and in association with the friends, the out is a call from third umpire, the batsman walking towards the pavilion, Jalal. So 21 for the loss of 1 wicket. So Kudla Premier League season 6 is going on here. This is day number 3 of the local pools are clashing here for the place in the final of this prestigious cricket tournament. From tomorrow onwards, the league matches to be played with the 8 seeded teams of South Kenda district, and 2 groups A and B. Each group has got 4 teams, and each and every team has got a chance to play 3 matches in their league matches. Ashok is a new batsman in. Anantesh so far I think is really doing a good job here. But unfortunately, actually, that was a chance of catch actually because of that fielder is not quick enough. The batsman, this time loose strokes, the fielder couldn't manage to take the catch in the digits and direct it. But Akram is safe, so no question of any wicket here. Arantesh finished his over. So completion of over number 3, chasing 40 to win the match. Torpedoes Khana are 22 for the loss of 1 wicket now. 3 overs remaining, 18 balls remaining. They have to get another 18 runs to win this match. Asking run rate remains the same, 6 runs per over. Before that, over of the 4th over is going to come, and say once again here a change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match. And Gopi, 18 to get from 18 deliveries, and but Torpedoes Khana, they got 9 wickets in hand, and that's why the Sarvagna cricketers have to do something special in their bowling, and something special in the sense they have to pick the wickets if they wanted to put some pressure onto the batsmen of Torpedoes Khana. That, and at the same time, having Akram in the middle is looking pretty good in the. A little bit promoted up in the order today, is coming as opener for the side, just exploiting the condition very well, that fielding restriction. And what do you think, Sarvagna cricketers, the bowling department, can they able to restrict them not to get 18 runs from 18 balls? जैसा कि आपने फरमाया सतीश, इस वक्त सर्वाग्नि उर्वा को रोकने की क्षमता है उनके गेंदबाजों को। अगर वो शतक लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, और खासकर उन्हें अक्रम का विकेट उखाड़ना होगा अगर टॉर्पेडोज खाना के रन की रफ्तार को रोकना है तो। और मैं समझता हूँ चंद डॉट गेंदें, चंद विकेटें उन्हें इस मैच में पूरी तरह वापस ला सकते हैं। और जहाँ तक टॉर्पेडोज खाना का सवाल है, मैं कहूँगा ये साझेदारी की उपस्थिति उनके लिए बेहद ज़रूरी है। अक्रम और अशोक इस वक्त मैदान पर मौजूद और रन के लिए दौड़ पड़े इस बीच, और आखिरी मौके पर थर्ड अंपायर, वंस अगेन वी आर गोइंग टू अ थर्ड अंपायर। तो जहां तक सवाल है, जैसा कि आपने फरमाया था सतीश, ये दोनों बल्लेबाजों की उपस्थिति टॉर्पेडोज खाना के लिए बेहद ज़रूरी है। जो साझेदारी इस वक्त बन रही है अक्रम और अशोक के बीच में, ये साझेदारी को और भी चंद ओवर तक रुकना होगा। ये दोनों बल्लेबाजों को एक साझेदारी, इस साझेदारी को और बढ़ाना होगा, तब टॉर्पेडोज खाना अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकता है। फिलहाल यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अशोक इस वक्त बचते हैं या नहीं। थर्ड अंपायर को कॉल इस वक्त दिया गया है, और थर्ड अंपायर इस वक्त इस निर्धार का परिशीलन करते हुए
इज गॉन। जब विकेटों को गेंद लगाया गया था तब बल्लेबाज क्रीज से कुछ इंच बाहर थे, तो इस वजह से बेहतर तरीके से थर्ड अंपायर के लिए अंपायर रोलैंड पिंटो ने कॉल दिया था, क्योंकि काफ़ी नज़दीकी मामला था और यहाँ पर थर्ड अंपायर ने उन्हें आउट घोषित किया है और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है। और जैसे ही हम साझेदारी की बात कर रहे थे सतीश, ये साझेदारी को रुकना ज़रूरी है अगले चंद ओवर तक, और यहाँ पर अशोक का विकेट गिर चुका है। तो अब यही एक सही वक्त है सर्वाग्नि क्रिकेटर्स के गेंदबाजों को शिकंजा कसने का। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है और नए बल्लेबाज आमतौर पर क्रीज पर जमने के लिए कुछ समय लेते हैं, और यहाँ पर एक कसी हुई गेंदबाजी सर्वाग्नि उर्वा के गेंदबाज अगर करते हैं तो निस्संदेह दबाव टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों के ऊपर आ सकता है। देखते हैं क्या होता है। और नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त होता हुआ नॉन स्ट्राइक रेट पर फिलहाल अकरम, जो कि प्रमुख बल्लेबाज टॉर्पेडोज काना के इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। सदाकत नए बल्लेबाज के रूप में ये गेंद, रिवर्स शॉट, एब्सोल्युटली एक्सक्यूजिट, वन बाउंस एंड इनटू द फेंस फॉर अ बाउंड्री। और जो दबाव विकेट गिरने के बाद बना हुआ था टॉर्पेडोज काना के ऊपर, उस दबाव को अकरम लगभग हटा चुके हैं विद अ ट्विस्टेड बैट, ये स्ट्रोक को खेलने के बाद चौके के साथ। अब इक्वेशन सीम्स टू बी इजियर नाउ। 26-14 टू गेट। इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, प्लम इन फ्रंट, एंड दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड कमबैक। द बॉल पिच्ड राइट ऑन द लाइन, concentrated to middle stump. Akram wanted to play the same stroke that he played in the previous delivery. This time the ball raising very sharply after pitching, stuck into his leg, and his leg showed clean in front of the middle stump, and umpire have no hesitation to rule him absolutely plumb in front. अकरम की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। 13 रन अकरम ने बनाए एक चौके की मदद से, और स्कोर इस वक्त रुक चुका है 26 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 26 for the loss of 3 wicket, 14 to get now, and the ball is remaining 16. Fifteen balls in fact remaining. शरीफ का आगमन यहां पर होता हुआ सामना करने के लिए तैयार प्रदीप की गेंदों का, और प्रदीप इस वक्त गेंदबाज आगे बढ़ाते हुए स्वीप किया इस वक्त खूबसूरती के साथ। गेंद पहुंची डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल सेंसिबल बल्लेबाजी की इस वक्त ज़रूरत है टॉर्पेडोज काना के बल्लेबाजों को। और जहां तक सवाल है सर्वाग्नि उर्वा का, तो एक कसी हुई गेंदबाजी की उन्हें ज़रूरत है इस वक्त। ये गेंद स्वीप किया, पैडल स्वीप खूबसूरती के साथ पूरी तरह शफल होते हुए, और जब तक गेंद को डीप फाइन लेग पर उसी फील्डर द्वारा फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 28 3 विकेट के नुकसान पर। 28 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। द इक्वल बैटल इज नॉट कंटिन्यूइंग हियर। और गेंदबाज ये गेंद स्वीप करना चाहा, पैरों पर टकराई, सर्टनली पिच्ड आउटसाइड द लाइन, और इस बीच 1 रन का इजाफा लेग बाय, and 29 for the loss of 3 wicket, and 4 overs have been bowled, and 11 to get now from 12 balls. 11 रन चाहिए 12 गेंदों में, और मैच अभी भी बराबरी पर रुक चुका है। फर्स्ट टेक वॉरियर्स का मुकाबला होगा कुदरुली यंग बॉयज के साथ अगले मैच में, तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि अगले मैच के लिए कृपया वो तैयार रहे। प्लीज गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट मैच। तो अनंत कृष्णा यानी अनंत इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार। शरीफ पहली गेंद लेकर गेंदबाज अनंत इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद स्वीप किया इस वक्त शॉट स्क्वायर की दिशा में, रन के लिए दौड़ पड़े, मिसफील्ड वहां पर। और इससे पहले कि दोबारा जब तक फील्डर गेंद को फील्ड करे, प्रदीप थे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का।
प्रदीप्त फील्डर और स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 10 रन चाहिए 11 गेंदों पर। अनंत एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सदाकत के लिए ये गेंद पैडफुल टॉस, गेंद को इस वक्त चिप कर दिया आखिरी मौके पर स्कोर लेग पर, और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 31 नाउ फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट, 9 to get from 10 balls. What a match is now going on here. तो विकेट कीपर जयंत इस वक्त आकर उन्होंने कुछ कहा गेंदबाज से कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी उन्हें करनी चाहिए, और गेंदबाज अनंत इस वक्त तैयार। डॉट गेंदों की सख्त ज़रूरत इस वक्त सर्वाग्नि क्रिकेटर्स को इस मैच में वापस आने के लिए। फील्डिंग में जमावट यहाँ पर करते हुए और शरीफ सामना करने के लिए तैयार अनंत की गेंदों का। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खेलना चाहा, शॉट को लेग फील्डर गेंद तक पहुंचे, निशाना टकरा चुका है एंड वंस अगेन इट्स गोइंग टू बी अ थर्ड अंपायर। शॉट स्कोर लेग पर गेंद पहुंची थी, रन लेने की हड़बड़ाहट दिखाई, और देखते हैं क्या होता है। यहां पर निशाना लगा था स्कोर लेग का फील्डर का, और देखते हैं जब निशाना लगते समय बल्लेबाज का बल्ला क्रीज के अंदर था या बाहर। इट्स गॉन। तो बल्लेबाज का बल्ला क्रीज से बाहर था और रनआउट के रूप में यह विकेट गिर चुका है। न सिर्फ रनआउट के रूप में यह विकेट गिरा बल्कि एक डॉट गेंद भी इस वक्त जुड़ चुका है उनके खाते में। तो अब रन से चाहिए 9, गेंदें बाकी हैं 9। 9 of 9 balls. Now Torpedoes gonna have to score for victory. 4th wicket down, 31 for the loss of 4 wicket, and now the match still stands in a balance. नए बल्लेबाज का इस वक्त इंतजार है, नंबर 6 बल्लेबाज अस्वाद नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त मैदान पर उतरते हुए, और वो इस वक्त सामना करेंगे अनंत की गेंदों का। शरीफ उनसे कुछ बातचीत करते हुए नॉन स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज, और अस्वाद अपने स्ट्राइकर एंड की ओर इस वक्त कदम बढ़ाते हुए। धूप की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहां पर बढ़ती नजर आती हुई, और इस बढ़ती हुई धूप की तीव्रता के साथ संघर्ष की तीव्रता भी बढ़ती नजर आती हुई दोनों टीमों के खिलाड़ियों के बीच में। कुल मिलाकर यह मैच एक दिलचस्प मोड़ पर आकर रुक चुका है। 9 रन चाहिए 9 गेंदों में। अनंत तैयार, दाहिना तो ऊपर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद चिप गया इस वक्त, गेंद को पहुंची एक्स्ट्रा कवर पर, फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा काफी धीमा, और काफी धीमा थ्रो, इसकी वजह से बल्लेबाज ने दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर लिया। प्लेसमेंट के जरिए गेंद को उछाला था इस वक्त शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से, वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान बेहतरीन तरीके से बल्लेबाज ने। तो जहां तक सवाल है अगली गेंद का, चिप किया इस बार मौका, और यह विकेट गिर चुका है। अब एक बार फिर से बचे हुए गेंद और बनाने हुए रन बराबर हो चुके हैं। 7 गेंदें बाकी और 7 रन चाहिए। 7 to get from 7 balls now. ಫಾಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಟಾಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮುಕಿಗಾಗಿ So absolutely the fantastic match is now going on here. 7 of 7 Torpedoes gonna have to score. और जहाँ तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो रिलवान का आगमन यहाँ पर होता हुआ, और रिलवान इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद। शरीफ इस वक्त स्ट्राइकर एंड पर, इस वक्त रिलवान से कुछ बातचीत करने के बाद वो अपने स्वस्थान पर लौटते हुए स्ट्राइकर एंड की ओर, और गेंदबाज अनंत इस ओवर में
अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। अब तक एक बेहतर ओवर अनंत का साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ 4 रन पहले 5 गेंदों में वो प्रदान न कर चुके हैं। और इस ओवर की अंतिम गेंद लेकर तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज शरीफ के लिए अनंत। ये गेंद इस बार टॉप एज एंड taken behind the stumps by wicketkeeper Jayant, and now one more wicket fallen for Torpedoes Khana, and now with this dismissal I think they are looking in trouble now. The tide is now slowly turning, and now 7 to get from last over. So what a fantastic 2 deliveries bowled by Anant, the last 2 deliveries of previous over, and because of that I think because of that 2 deliveries Sarvagni Urwa now are back in the game. 6 wickets down, 33 for 6, 7 runs to get from remaining 6 balls. That means in last over. Chetan, the number 8 batsman for Torpedoes Khana, is now coming out to the middle with lots of responsibility. Just talking with Rilwan about the game plan in batting in last over. So the bowler from Venkatesh Bhandari, Mumbai, and the bowler starts fresh over wearing 91 jersey is Nitin, who will be starts a match deciding over. 7 runs to get from 6 ball, 6 for tie, 7 for win. और ओवर की पहली गेंद लेकर चेतन नितिन इस वक्त तैयार, जबकि रिलवान स्ट्राइक लेते हुए। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई, और कुल मिलाकर उसी तरह का क्षेत्र रक्षण, 4 फील्डर 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। एक बेहतरीन मैच आज का यहां पर प्रगति पर रहा। तो नितिन इस वक्त तैयार रिलवान के लिए। दर्शक काफी खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, पहली गेंद ऑफ स्टंप पर, नो बॉल कॉल्ड बाय अंपायर एंड इट्स गोइंग टू बी अ फ्री हिट। तो जहां तक का सवाल है, नो बॉल ओवर स्टेप मेरे हिसाब से किया था गेंदबाज ने, और आखिरी मौके पर इसे नो बॉल घोषित किया है। अब 6 रन चाहिए 6 गेंदों में, एंड नाउ इट्स गोइंग टू बी अ फ्री हिट। So in the next match, Kudroli young boys, after won the toss, they elected to field first against Fast Tech Warriors, and because of that I request to the both teams players to please get ready for the next match. तो अब इस नो बॉल की बदौलत लक्ष्य कुछ हद तक आसान हो चुका है। 6 of 6 फ्री हिट डिलीवरी कम्स ऑफ स्टंप से बाहर। ओह, इट्स गॉन फाइन। और इसी के साथ अब ऐसा कहना पड़ेगा, टॉर्पेडोज खाना अपने विजय के द्वार पर आकर खड़ा हो चुका है। तो 1 रन सिर्फ चाहिए अब विजय के लिए 6 गेंदों में, और ड्राइव किया। इसी के साथ टॉर्पेडोज खाना रजिस्टर्ड अ 4 विकेट्स विक्ट्री विद 5 balls to spare against Sarvagni Urwa in a thrilling match, and with that victory they are through to the next round of this tournament. So the next match is now going to begin between Fast Tech Warriors and Kudroli Young Boys, and that match starts with Nijay Shutwal in this match. So in this match, Kudroli Young Boys, after won the toss, they elected to field first, and we'll be back right after the short break with my friend Janab Abdul Samad, when the next match will going to begin within just a short while. And now it's time for break. Thank you. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠನಾಗಿ ಟೋರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಅನಿಲ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅವರು ನೀಡಿದರು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 3 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 2 overs, no maiden, 7 runs and 3 wickets. Absolutely fantastic bowling wickets from Anil.
ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಅನಿಲ್ ಇವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರೀಯುತ ಸಲೀಂ ಮಾಲಕರು ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ ಇವರಿಂದ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅನಿಲ್ ಇವರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಲೀಂ ಮಾಲಕರು ಟ್ರೆಸ್ಕಾನ್ ಕಂಪನಿ ಇವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ದಯವಿಟ್ಟು. And for the next further comments, I'd like to invite my friend Janab Abdul Samad in Kannada. Thank you. Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ದಿನದ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪರವಾಗಿ ಅದೇ ಜೋಡಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಅವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ತಂಡವನ್ನು, ಅದೇ ರೀತಿ ನಿನ್ನೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಜರ್ ಪಾಣೆ ಮಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಈಗ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಅಣಿಯಾಗಿದೆ. ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ KFC ಕೃಷ್ಣಾಪುರದ ಎದುರು ಆಕ್ಕೋರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಮೂರನೇ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ
ಕುದ್ರೋಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡಿದಾಗಿತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಬೇಡ ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಅಶ್ರಫ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ರನ್ಔಟ್ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ರನ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಖಾತೆ ತೆರೆಯದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ರನ್ಔಟ್. ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕರು ಹೌದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಯುವಕರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ ಓರ್ವ ನಾಯಕನೂ ಹೌದು ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್. ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮಾಲಕನಾಗಿ ಊರಿನ ಅದೆಷ್ಟೋ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದ ಓರ್ವ ನಾಯಕ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಈಗ ಔಟಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ತನ್ಜೀಮ್ ಮೂಲತಃ ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಹಸಗಾಥೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಜ್ ರವರ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಚೆಂಡು. ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ತನ್ಜೀಮ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಜ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲರಾದರು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಖಾತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ. ಇಮ್ರಾನ್ ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡುವ ಆಟಗಾರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಇತಿಹಾಸ ಹೊಂದಿದ ಓರ್ವ ದಾಂಡಿಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ದಿನ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ರಿಯಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಾ 4ನೇ ಎಸೆತ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಗೂಟ ಉರುಳಿದೆ. ಗೂಟವನ್ನು ಚಿಮ್ಮಿದೆ ಚೆಂಡು, ಗೂಟವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ ಆ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಇಂದು ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ರನ್ಔಟ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ, 4ನೇ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 1 ರನ್ನಿಗೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ 4 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿ. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಲೀಂ ಹಾಗೂ ತನ್ಜೀಮ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಐದನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ರಿಯಾಜ್ ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಸಲೀಂ ರಿಯಾಜ್ ರವರ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇದೆ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿದ್ರು ಸಲೀಂ. ಆ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಬಂದ ಚೆಂಡು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು, ಅದು ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 1 ವಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ 1 ರನ್ಔಟ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಿಯಾಜ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸಲೀಂ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 2. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ ರಿಯಾಜ್ ರವರಿಂದ. 2 ಓಟವನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 2 ಬಂದಿದೆ, 30 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ತನ್ಜೀಮ್ ಈ ಮೈದಾನದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರಿತಂಥ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಸಲೀಂ
ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂಥ ಆಟಗಾರ. ಈ ಎರಡು ಆಟಗಾರರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇರುವ ತಂಡ. ನಿನ್ನೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ ಎದುರು ಆಡಿತ್ತು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಆಟ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಿಸಿತ್ತು ಬ್ಲೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಉಲಾಯಿಬೆಟ್ಟು ತಂಡದ್ದು. ಆದರೂ ಜಯ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪಾಳಿಗಾಗಿತ್ತು. ಆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪಾಳೆಯದ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲಕ ಓರ್ವ ಬಾಲಕನಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಟ್ಟಿರುವುದು ನೆನಪಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಎಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕವರ್ಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮೂಲಕ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಕುದ್ರೋಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಫರಾಜ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸಲೀಮ್ರವರಿಗೆ ಫರಾಜ್. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಆರಂಭ. ಆಕರ್ಷಕ ಚೆಂಡು ಇದು ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಭಾಳಷ್ಟು ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ರಿಯಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2, ಫರಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಫರಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಮುಂಬೈ ಆ ತುದಿಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಆಕಾಶದ ಬಾನಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಲೀಮ್ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲೀಮ್ರವರ ನಿರ್ಗಮನ ಭಾಳಷ್ಟು ಬೇಸರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಆಟ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿರುತ್ತದೆ ನೋಡಲು. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಭಾರತ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕರು ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಅವರ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದರು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫರಾಜ್ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ 2 ಇದೇ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಬೌಂಡರಿಯತ್ತ. ಇದು ತನ್ಜೀಮ್ರವರ ಆರಂಭ. ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಆಶಾದಾಯಕವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ಜೀಮ್. ಫರಾಜ್ ರವರ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಹೊಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 6ಕ್ಕೆ ಏರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತನ್ಜೀಮ್ ರವರ ಆಟದ ವೈಖರಿ, ಆಟದ ಶೈಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫರಾಜ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಮಾನ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು, 7 ರನ್ನು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ತನ್ಜೀಮ್ ಈಗಾಗಲೇ 4ರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 7ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಿಗೂ, ತಂಡದ ಮಾಲಕನಿಗೂ, ತಂಡದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕನಿಗೂ, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿತ್ತು, ಒಂದೊಂದು ರನ್ನಿಗೂ ಪರದಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಆ 8ನೇ ಎಸೆತದ ಬೌಂಡರಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನೋಟವನ್ನು ನೋಡುವಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು. ಫರಾಜ್ ಈ ಬಾರಿ ಅಮಾನ್ ರವರಿಗೆ ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತ. ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲದ ಓಟ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ಜೀಮ್
ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಮಾನ್ ತಮ್ಮ ವಿಕೆಟನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ರವರ ಆಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಈಗ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. 7 ಬಂದಿದೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ತನ್ಜೀಮ್ ರವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಇನ್ನೋರ್ವ ಆಟಗಾರ ಸುನಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಕಣ್ಮಣಿ ಶಾರೂಕ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಶಾರೂಕ್ ಪರಿಸರದ ಮೂಡಬಿದ್ರೆ ಪರಿಸರದ ಕಣ್ಮಣಿ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬಲ್ಲಂಥ ಆಟಗಾರ ಶಾರೂಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಫರಾಜ್. ತನ್ನ ಓವರಿನ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಮಿಂಚಿನ ಓಟ, 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತನ್ಜೀಮ್ ಹಾಗೂ ಶಾರೂಕ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ. 9 ಬಂದಿದೆ, 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡು 9 ರನ್ನಿಗೆ 4. ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾಲಕ ಇದ್ದ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಬಾಲಕ ಈಗ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೇರ ಮೈದಾನದ ಎದುರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಾಲಕ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಆ ಬಾಲಕ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಇಂದು ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಬಂದ ಆ ಬಾಲಕನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಚಾಲಕನಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 9 ರನ್ನುಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ರಿಯಾಜ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 1 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. 1 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು ಇಮ್ರಾನ್ ರವರದ್ದು. ಮತ್ತೆ ಕೈಚಲಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ ರಿಯಾಜ್. ತಮ್ಕೋಟಾದ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್, ತಂಡದ 3ನೇ ಓವರನ್ನು ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಶಾರೂಕ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ 1 ಓಟವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 10 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್, ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಶಾರೂಕ್. ಒಂದೇ ಊರಿನ 2 ಯುವಕರು, ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದ ಯುವಕರು, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಬಲ್ಲಂಥ ಯುವಕರು, ಬಹಳಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಸಹನೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಹಿಂದುಗಡೆ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಯಿತು. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕವರನ್ನ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಉತ್ತರ. ರಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. 11 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 40 ರನ್ನು ಒಂದು ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವಾದೀತು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ತಂಡ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದೆಷ್ಟೋ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿದ ತಂಡ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿ ಬಂದರು, ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಿದರು. ಶಾರೂಕ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 12. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 5ನೇ ಎಸೆತದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ, ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದ ತನ್ಜೀಮ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನು ದಾಟಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 1ರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ ರಿಯಾಜ್ ರವರದ್ದು. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ರಿಯಾಜ್ 13 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ರಿಯಾಜ್ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ.
1+1 ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹುಮಾನ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಮಟ್ಟಿನ ಆ ನಗು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಕಾರಣ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ 15 ಬಂದಿದೆ, 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರ ರಿಯಾಜ್, ಆಟಗಾರ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 16-18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇನ್ನೂ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತೋಡಾರಿನ ಪುರುಷರು ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಹಾಗೂ ಶಾರುಖ್ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗರಿವರು. ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಒಂದು ಗುಣ ಲಕ್ಷಣ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವವರು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು. ಇವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಇನ್ನುಳಿದ 18 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Thank you very much, Janab Abdul Samad Katipala. 16 for the loss of 4 wicket, and fast track warriors worries continues here, not only in the form of run rate, but they lost 4 wickets, the big wickets back into pavilion. From the far end, Faraz. So first ball, batsman quite easily picked up a single. (17) for the loss of 4 wicket. Once again from the Venkatesh Bandarian. Right arm over the wicket. Bowls to this time gone. One more wicket is back into pavilion. 17 for the loss of a 5 wicket. One more wicket is back into pavilion. Problem continues here for fast track warriors as they wanted to get fast runs here. The warriors couldn't manage to perform as like what they has got a name warriors, but not really playing like warriors. Worries continues here for the warriors, but nothing much worried about, because one of the most fantastic warrior is now walking towards the middle here. Is none other than Neeraj of Vijay Lakshmi Cricketers. Walking towards the middle, wait and see how well he managed to lift his team from trouble there. They're the trouble in the sense they lost 5 wickets for just 17 runs. Needed some partnership, and wait and see how well these two batsmen will go into bat in the remaining deliveries of their innings. From the Venkatesh Bandarian, right arm over the kitty balls. Batsman improvising quite nicely towards the deep fine leg ridge, and ball is running towards the deep fine leg. Will it go into chance here for the fielder? I don't think fielder will going to get that ball. Winning the race against the fieldsman. 2 fielders chasing the ball to stop that stop that boundary. Look at that improvisation. That was a delicately played by the batsman, and sending that one right between the fielders, and even the fielder from fine leg and square legs tried to stop that one, but not quite able to win the race against the ball. Welcome boundary here for fast track warriors. 21 for the loss of 5 wicket. Immediately when Neeraj enters the ground, the opposite batsman just started to grow his confidence. And from the far end, Faraz, right arm over the wicket, bowls again, this time a wrong hand towards the deep third man division. Played that reverse sweep quite nicely. He picked up a single. 22 on the board for the loss of 5 wickets. Next match.
Friends Kutar takes on Deadly Kankanadi. So I request all the teams, all the players of the teams, both the teams, please sign the official chart as soon as possible. Neeraj facing his first delivery. From the Venkatesh Bandari and bowler balls down the leg stump, nothing much to do with the delivery. And Neeraj's brother Suraj signaling as a white. It's really definitely going to be very interesting and good to see that brother is batting and elder brother is umpiring in front. Absolutely fantastic scenario. 23 for the loss of 5 wicket from the far end. Faraz bowls. Neeraj this time not quite got that one right from the middle of the bat, but able to rotate the strike in the negation. With that single, scoreboard was on to 24 for the loss of 5 wicket in the over number 4 in progress. Tanzim is really hanging there in the middle. He is just watching the wickets are tumbling in front of him, but he stands tall and patiently is batting for his team. Lovely cricket, absolutely lovely cricket. This is what you call cricket. They need to bat as per the condition required. You know exactly that they lost 5 wickets. You know exactly you got one quality batsman in the other end. If they batted sensibly in the remaining deliveries, they can get some good score here. 25 for the loss of 5 wicket after completion of over number 4. Now 2 overs remaining in the innings of 2 overs remaining in their innings, and wait and see how well they manage to get some good runs in the remaining 2 overs. Four overs belongs to Kudroli boys. Managed very well to put some pressure on the batsmen of Fast Tech Warriors because they picked up a wickets. Kudroli boys, so that the little bit pressure situation for Fast Tech Warriors. And now from the commentary box and first delivery of the over number 5. Going to be a chance here for the wicket keeper. Kishore takes the catch. What we are talking about, the patience is key to everything. And till now, this man looks to be very good and very focused and very patient, but looks like he just lost the patience. Going for the mighty strokes on the offside region, got outside edge of the bat. Wicketkeeper behind the stump, Kishore making no mistake at all. And 6th wicket of Fast Tech Warriors are back into pavilion. Once it looks like the partnership is going to start here between Neeraj and Tanzim. And Tanzim is quite unfortunately is back into pavilion after played a very good innings for his team. Is the highest run getter for his team, out for 17 valuable runs, and unfortunately is back into pavilion now. "25 for the loss of 6 wicket. Kudroli young boys are really looking in a commanding position in this match. They are able to put some pressure onto the batsman by picking up the wickets in frequent intervals, and they got valuable wickets here. 6 wickets back into pavilion. Now new batsman Taslim, one more fantastic all-rounder for the side of Fast Tech Warriors, facing next delivery. This time sensible batting, officially paid, but quite safely and deliberately paid there by Taslim. You know exactly the fielder there in the edge of the circle out there in the mid-off. And before the mid-off fielder to going to his left to field the ball, batsman got ample time to complete the single. 26 for the loss of 6 wicket here in over number 5 in progress. Neeraj back on strike now, facing next delivery of the bowler. This time nicely whipped that one towards the deep backward square leg region for a single, one of his favorite shot. Neeraj never missed that opportunity whenever the ball is around his legs. He is such a classical player to watch when he walks the ball on the onside region, and classically played that one down to deep backward square for a single. 27 for the loss of 6 wicket. Right arm balls, beautifully bowled, extra face, extra quicker delivery there from the bowler Afreed in the negation, and batsman Taslim completely missed out that delivery. The wicketkeeper behind the stump did the rest. Again now, bowler bowls. This time Taslim take an aerial route. Will it go to get the distance here? I think he's just going over that mid-off, long-off region for a maximum.
Outstanding cricketing stroke. Look at that, the Taslim, how effortlessly played. Doesn't look like when ball is taken an aerial route, will it going to get the distance here? But look at it in a replay here. Ball is in there for a long time and just crossing that deep long off region. There is no fielder actually in the long off. So Taslim quite deliberately just going over that of that mid off and got the distance and got a very valuable 6 runs, 33 for the loss of 6 wicket. Improvising, ball is in the way, again safely landed towards the deep backward square like one bounce collected by the fielder. Much required productive over coming here for Fast Tech Warriors. Worries little bit coming down now for the Warriors of Fast Tech because they got runs in this over of Afrid. Just imagine that 1-6 which is really changing the game here for Fast Tech Warriors. This is a cricket. This is a fast cricket. Small format of the games. Very difficult to say anything in cricket because one stroke which suddenly came to change the picture of the match. Now they got Fast Tech Warriors strongly back into this game with 34 runs in 5 overs and now 1 over remaining in their innings. Abdul Samad Kadipalla just mentioning about that little boy. They on the heart of cricket lovers. I think Nizam is the name of that boy who enjoying the game of cricket sitting in right of Venkatesh Mandari advertising board. And just while ago the cameraman catching him. I just mentioned yesterday that it looks like a junior Sachin Tendulkar. Why not? Who knows the future? Maybe he will become the junior Tendulkar of Indian cricket. This time again, one more wicket is back into pavilion. Taslim looks pretty good and tried to hit over the extra cover region, but didn't got that much of distance what he was looking for. He got the elevation, but didn't got the distance what he's looking for. And he finds the fielder there in the deep extra cover. And wicket number 7 is back into pavilion of Fast Track Warriors. But Taslim has played a very good innings. Small cameo is comes to an end. And the placement is not good. And nothing wrong with the strokes. Because that line of the delivery, of course, batsmen have to play that kind of cricketing stroke. The fact that he didn't got that much of distance what he was looking for. Very difficult, especially in the morning you are getting the distance towards extra cover. There's not that much of wind at all to favoring that strokes. 34 for the loss of 7 wicket. And the bowler... Shahzad is very good in the previous match yesterday they played. Shahzad, very young talented bowler for the Kudroli young boys. And one more single taken there by Neeraj. Neeraj know exactly the importance of each and every single run, even though they're dealing with the last and final over. And 35 for the loss of 7 wickets. Last 4 deliveries remaining in this final over. The batsman Arshad facing Shahzad and picked up a single there, rotating the strike each and every ball, waiting for the loose ball, but bowler not giving any opportunity for the batsman to freeze the arm. So rightly so, Arshad picking up the single. He thought that Neeraj will be the best option to deal with the remaining deliveries of the final over. 36 for the loss of 7 wicket. Wait to see how Neeraj will go into bat here. This time dries that one again. Placement I think is not more than a single extra cover fielder there in the deep. So one more addition to total scoreboard moves on to 37 for the loss of 7 wicket. Last 2 deliveries left in their innings. And Arshad back on strike now. From the far end. Balls big wide, defeats the wicketkeeper's hand. 1+1, 2 bonus runs here for Fast Track Warriors. I've already mentioned and the extras which is definitely going to be a very big mistakes for any teams. As much as you are conceding extras to the opposition, then the opportunity of winning match is going to be less. And this time Shahzad couldn't manage to control his line and he conceded 2 valuable runs for the opposition. 39 on the board. Neeraj back on strike.
This time delicately played, quickly realizing that the batsman Neeraj that very difficult to play the big shot, and he's just giving the direction towards that backward point region for a easy single. 40 comes up here for Fast Tech Warriors. Now last delivery of their innings is coming up. Ashad is on strike on. Facing the next delivery again, down the leg stamp, 1+1, second time the bowler making a mistake in this final over. 1+1 2, already the 4 gifted runs is conceded in this over. Bowler, don't know why he's started to feel the pressure after bowling a very good line and length. Whenever he bowls a good line and length, I think it's not that much of easy for the batsman to hit, but he conceding runs in the form of extras. 42 for the loss of 7 wicket from the far end. Final time in this over. Fantastic leg cutter. Neeraj went for the big shot, but not more than a single. That's it. They completed their 6 overs quota. Fast Tech Warriors, they really recovered very well. Strong recovery in the last 2 overs. When Abdul Samad Katipala hand over the mic to me, I think Fast Tech Warriors are really struggling. Their wickets are fell in the 4 wickets are back, but a good recovery after that. 3 overs they got runs what they wanted. Taslim who contributed. Neeraj played sensibly. You know exactly the 40 plus runs is going to be a winning total if they bowl well, fields well. And now they got exactly 43 valuable runs and they set a target of 44 to win the match, and wait and see. And here we can see that the names of the donors who really contributed for the success of this tournament. I think without support from the donors, it's hard to organize this kind of cricket tournament in 6 days of cricket, 5 days of festival of cricket. Once again, on behalf of young friends Urwa and on behalf of friends who are registered, we would like to give a special thanks to the sponsors, the donors who really supporting for the success of this cricket tournament, KPL Kudla Premier League Season 6. That's it. 44 is the target here for Kudroli Young Boys, and wait and see how Kudroli Young Boys will going to get this 44. I think Kudroli Young Boys, coming back to their batting department, they got some good players in their side. They got young talented players, some players like Kishore, the very talented left-hand batsman. If this man is able to play a big role, able to play big innings for his team, I think the Kudroli Young Boys, certainly they got opportunity to win the match. At the same time, coming up to Fast Tech Warriors, they got some excellent bowling department. You cannot underestimate the bowling department of Fast Tech Warriors. They got the service of Taslim, one of the most experienced bowler for the side of Fast Tech Warriors. And if the balls fell with their potential and they can be the little bit effective, they can restrict the opposition from the 44. The interesting game is coming up in the first 3 overs, and for that I would like to call upon Gopi to take over the microphone in our national language. But I think his Gopi is busy with his mobile. Maybe he is hearing his own commentary, how the commentary is coming in the Bedra Media, and looks to be having a smile face. He is satisfied with this commentary. Absolutely, Gopi. Because a lot of comments coming from Bedra Media in chatting that absolutely, and then Shukriya Satish. Ji haan Satish. Exactly, Satish. बिल्कुल सतीश, जैसा कि आपने कहा, और जहां तक सवाल है, इस वक्त 44 रनों का लक्ष्य। तो यहाँ पर 44 रनों का लक्ष्य, और जहाँ तक
तो 44 रन इस वक्त बनाने हैं निर्धारित 6 ओवर में। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रिक्वायर्ड रन रेट इस वक्त चाहिए 7.33 प्रति ओवर। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। और ये गेंद स्वीप करना चाहा आखिरी मौके पर। स्कोर इस वक्त मिलेगा 1 रन न बिना किसी नुकसान के, जबकि पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। और जहाँ तक सवाल है स्ट्राइकर एंड के बल्लेबाज का, तो मुन्ना इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। हर्षद इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। तो रिक्वायर्ड रन रेट के बारे में अगर जिक्र किया जाए 7.33 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाने हैं 10 विकेटों की मदद से। और अगली गेंद लेकर गेंदबाज हर्षद मुन्ना के लिए, दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। पावर प्ले इस वक्त जारी, 7 खिलाड़ी 20 गज के दायरे के अंदर तैनात। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ड्राइव किया इस वक्त मिड ऑफ की दिशा में, गेंद पहुंची रन के लिए, बल्लेबाज दौड़ पड़े और यशस्वीतम 1 रन ने यहां पर पूर्ण करते हुए। और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 2 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 2 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। एंड now Kishore is now back on strike facing Harshad. और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार, फील्डिंग में जमावट इस वक्त करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर सामना करने के लिए तैयार। एक बेहतर शुरुआत की इस वक्त सख्त जरूरत कुदरोली यंग बॉयज को, अगर उन्हें 44 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो। और हर्षद दाहिने हाथ राउंड द विकेट किशोर के लिए। ये गेंद स्टीयर किया खूबसूरती के साथ आखिरी मौके पर, मिडल ऑफ स्टंप पर गेंद थी, बल्ले को तिरछा उड़ाते हुए गेंद को स्टीयर कर दिया खूबसूरती के साथ थर्ड मैन की दिशा में। और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन न प्राप्त करने का। तो 1 रन के साथ इट्स गोइंग टू बी 3 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर, chasing the victory target of 44 in 6 overs, exactly 7.33 runs per over. With the help of 10 wickets they have to score for victory. And the first over of their innings is now going on here. और जहां तक सवाल है दाहिने हाथ राउंड द विकेट, अरशद गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। यह गेंद चिप किया है इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर, गेंद जाती हुई और बेहतरीन तरीके से इस कैच को लपक लिया गया है। ऐसा कहना पड़ेगा, is not quite mid-wicket at the last moment. Is got his stoppage and finally extra cover fielder made no mistake. गेंद उनके टॉपेज पर टकराई थी, एक्स्ट्रा कवर फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। हालांकि उनसे थोड़ी सी दौड़ इस वक्त लगाने पड़ी अपनी दाईं ओर, लेकिन गेंद पर अपनी नजरें गड़ाए रखे, गेंद को आखिरी मौके पर लपक लिया एक्स्ट्रा कवर 20 गज के कुछ बाहर। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 गिर चुका है 3 रनों के योग पर। 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और जहां तक सवाल है लक्ष्य का, तो 41 रन और बनाने हैं विजय के लिए। तो निस्संदेह यहां पर फ्रेंडली एटमॉस्फेयर और हमारे सीनियर, हमारे गुरु कहते हैं हम लोग, श्रीमान रोलैंड पिंटो हमारे साथ यहां पर बैठे हुए, वेयरिंग ब्लैक स्पेक्स एंड वॉचिंग द इंटरेस्टिंग मैच वेरी इंटरेस्टिंगली। और ऐसा कहना पड़ेगा निस्संदेह ये हमारा सौभाग्य है कि वो हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मैच का मुआयना कर रहे हैं। और आप देखिए टीवी आपके मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से वो इस वक्त मैच का मुआयना कर रहे हैं। ये गेंद रिवर्स स्वीप करना चाहता, गेंद को आखिरी मौके पर शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची और 1 रन का इजाफा हो चुका है लेग बाई के रूप में। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। और फील्डिंग में जमावट इस वक्त चलती हुई, स्क्वायर लेग इस वक्त मौजूद, मिड ऑन मिड ऑफ इस वक्त है ना, एक्स्ट्रा कवर पॉइंट। और जहां तक सवाल है 20 गज के बाहर के दायरे के फील्डिंग का, तो जहां तक मैं समझता हूँ लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन इस वक्त है ना, थोड़ा सा वाइडर दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और ओवर की अगली गेंद लेकर इस वक्त अरशद तैयार, फील्डिंग में तब्दीली होती हुई मिड विकेट फील्डर को थोड़ा सा स्क्वायर इस वक्त तैनात किया गया है। और दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज अरशद दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद ऑन साइड पर गेंद को मोड़ना चाहा, शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में निशाना चूका आखिरी मौके पर और बल्लेबाज बाल इस गेंद पर बच चुके हैं। लेग बाई का इशारा, अगर निशाना स्टंप्सों पर टकराता तो निस्संदेह यहां पर बल्लेबाज के लिए खतरा पैदा हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और निशाना चूका। और
बल्लेबाज सुरक्षित 1 रन के साथ अपना छोड़ बदल चुके हैं। 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 5 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर completion of first over, and let's straight away coming back to the equation. 44 the target, -5, that means 39 more runs now they have to score for victory in remaining 5 overs, and the asking run rate is now gone up to exactly 7.80 runs per over. और जहाँ तक इस ओवर का सवाल है, एक बेहतर ओवर अरशद ने अपने पहले ओवर में फेंकी जिसमें सिर्फ 5 रन उन्होंने प्रदान किए। अब वेंकटेश भंडारी मुंबई एंड की ओर से गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज तस्लीम, और वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे फैजान को, जो कि इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। दूसरा पावर प्ले ओवर यहां पर शुरू होता हुआ। दोपहर का वक्त ठीक 12:05 यहां पर बच चुके हैं, और धूप का प्रकोप मैदान पर और गहरा होता हुआ इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ सूरज ठीक आसमान की बुलंदियों को इस वक्त छू चुका है, अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ। और भीषण गर्मी का एहसास न सिर्फ खिलाड़ी बल्कि दर्शक भी जो इस मैदान के इर्द गिर्द मौजूद हैं, वो दर्शक भी इस भीषण गर्मी का एहसास यहाँ पर करते हुए, और इस भीषण गर्मी के तले यहाँ पर एक संघर्ष प्रगति पर। और ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार तस्लीम, दाहिना तो ओवर द विकेट। यह गेंद एक्स्ट्रा क्विकर विकेट कीपर चूके शॉर्ट थर्डमैन के हाथों में गेंद, रन्स इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, और स्कोर रुक चुका है इस वक्त 5 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 1 विकेट के नुकसान पर। 7 गेंदें उनकी पारी की यहाँ पर फेंकी जा चुकी है। तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज फैजान के लिए यह गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद थी इस वक्त, और वाइड का इशारा अंपायर का। ऑफ स्टंप से काफी बाहर की ओर गेंद निकलते हुए दिशाहीन गेंद, और 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका। 6 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। और गेंदबाज तस्लीम अपनी ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए फैजान के लिए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त। रिवर्स शॉट विद अ ट्विस्टेड बैट एंड फाइंड्स द गैप एज वेल, एंड आई थिंक इट कट्स इट ऑफ जस्ट इनसाइड डिफेंस बाय द फील्डर आफ्टर बीइंग लॉन्ग चेज। और इससे पहले बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने की। लंबी दौड़ लगाने के बाद गेंद को वो आखिरी मौके पर सीमा रेखा के अंदर फील्ड करने में सफल, और यहां पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतर स्ट्रोक, तिरछे बल्ले के सहारे इस स्ट्रोक को फाइन निकाला था गली फील्डर की बाईं ओर से। और जहां तक सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिल चुके हैं 2-8, 1 विकेट के नुकसान पर। 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार तस्लीम गेंदबाजी करते हुए ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद, और इस बार वाइड नंबर 2 इस ओवर में अपनी सही लेंथ और लाइन को इस वक्त तराशते हुए तस्लीम इस ओवर में 2 वाइड फेंक चुके हैं और 2 अतिरिक्त रन एक्स्ट्रा रन प्रदान कर चुके हैं, और स्कोर इस 1 रन के साथ बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 9 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। दर्शकों की तादाद इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती नजर आते हुए निस्संदेह हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं कि जैसा जैसा वक्त गुजरता जाएगा दर्शकों की संख्या में भी वृद्धि होती जाएगी। तस्लीम की गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला इस वक्त गली पर रख, गेंद पहुंची 1 रन का इजाफा, और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। धीरे धीरे तस्लीम अपनी सही लेंथ और लाइन को प्राप्त करते हुए और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज किशोर सामना करने के लिए तैयार। साझेदारी की इस वक्त सख्त ज़रूरत कुदरोली यंग बॉयज़ को, जहां तक लक्ष्य तक पहुंचने का सवाल है उनके लिए, और उस कमी को इस वक्त पूरा करने की पूरी कोशिश करते हुए क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज किशोर और फैजान। तस्लीम ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और वाइड नंबर 3 इस ओवर में। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर और वाइड के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 11 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। अभी भी 33 रन अपने विजय से और दूर, और 4 ओवर का खेल इस ओवर के बाद अभी भी फेंका जाना बाकी। ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेल दिया, गेंद पहुंची बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में, 1 रन मिलेगा
सेंसिबल क्रिकेट ये दोनों बल्लेबाज यहाँ पर अपनाते हुए, वो जानते हैं हर गेंद पर उन्हें रन इस वक्त बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 7 का है प्रति ओवर। अगर हर गेंद पर भी वो कम से कम 1 रन बटोरते हैं तो बीच में कोई ढीली गेंद अगर मिले तो उन्हें चौके या छक्के के लिए वो डिस्पैच कर सकते हैं। इस गेम प्लान रणनीति के साथ वो यहाँ पर बल्लेबाजी करते हुए हर गेंद पर रन बनाने की पूरी कोशिश करते हुए। तस्लीम ये गेंद बेहतर गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर फॉलो थ्रू में बेहतरीन, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, एंड अप गोस द फिंगर फ्रॉम स्क्वायर लेग अंपायर। दैट इज एन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एफर्ट। तेजी के साथ गेंद पर लपके तस्लीम, और आखिरी मौके पर देखिए किस तरीके से हुआ था। तस्लीम गेंद पर लपके इस वक्त, और एब्सोल्युटली दिस इज एन फिनोमिनल। गेंद को थ्रो करते समय उनका बिल्कुल संपूर्ण शरीर हवा पर था और उनका निशाना बिल्कुल ठीक बैठता हुआ। देखिए किस तरीके से, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। और यहाँ पर इस बेहतरीन रनआउट की बदौलत ये विकेट नंबर 2 गिर चुका है और 12 रन बन चुके हैं। अंतिम गेंद अभी भी बाकी, हालांकि कुछ तो 12 रन यहां पर बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, और 1.5 ओवर का खेल यहां पर पूर्ण हो चुका है। तो इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए अवीज, और वो इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अंतिम गेंद लेकर इस वक्त तैयार। तस्लीम शॉर्ट फाइन लेग, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, मिड ऑफ, एक्स्ट्रा कवर और कवर पॉइंट इस वक्त तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। अवीज सामना करते हुए तस्लीम की गेंदों का। एक लंबा ओवर उनका यहां पर प्रगति पर। दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद तस्लीम की ऑफ स्टंप पर आते हुए रिवर्स शॉट खेला, पॉइंट पर गेंद पहुंची, और इस बीच बल्लेबाज की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, गेंद एक्स्ट्रा बाउंस होते हुए थोड़ी उनके टॉपेज पर टकराए और आसान सा कैच पॉइंट पर लपकते हुए फील्डर, और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। विकेट नंबर 3, और अंतिम 2 गेंदों में 2 विकेट गिर जाने के बाद अब दबाव हल्का सा कुदरली यंग बॉयज के ऊपर। अब रन से चाहिए 32, गेंदे बाकी हैं 4, रिक्वायर्ड रन रेट है 8 और विकेटें हैं 7। तो कुल मिलाकर 32 रन चाहिए 4 ओवर में। और कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए गेंदबाज शाहिल गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए। निस्संदेह एक पार्टनरशिप, साझेदारी की सख्त जरूरत कुदरली यंग बॉयज को, अगर उन्हें 44 रनों के लक्ष्य तक पहुंचना है तो 3 चोटी के बल्लेबाज यहां पर पेविलियन वापस लौट चुके हैं, और इस वक्त नए बल्लेबाज के रूप में परवेज का आगमन होता हुआ, और शाहिल वार्म अप इस वक्त करते हुए गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज फैजान के लिए। हल्की सी हवा मैदान की दाईं से बाईं और इस वक्त गुजरते हुए, और ये हल्की हवा जो गुजर रही है निस्संदेह खिलाड़ी और दर्शकों को इस भीषण गर्मी से काफ़ी हद तक राहत दिलाते हुए। और यहाँ पर एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला कुडला प्रीमियर लीग सीजन 6 केपीएल सीजन 6 2021 की शानदार प्रगति होती हुई मैच नंबर 3 दिन नंबर 3 का यहाँ पर खेला जाता हुआ, जिसका शानदार तरीके से इस श्रृंखला का आयोजन किया है यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड और फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड, और खासकर यंग फ्रेंड्स उर्वा की 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर सिल्वर जुबली 25 as they are organized in this fantastic cricket tournament in the name of KPL season 6 2021. Quick piece of work behind the made by wicket keeper, and now umpire just asking for the third umpire. That was an outstanding work made by the fielder wicket keeper behind the stumps at the last moment. और जब विकेट उखाड़े गए थे तब देखना यह है कि बल्लेबाज का बैकफुट क्रीज से लिफ्ट हो चुका था,
या फिर बैकफुट क्रीज पर तैनात था। एंड इज गॉन। उनका पैर बैकफुट जो कि क्रीज से उठ चुका था, अपना बैकफुट लिफ्ट कर चुके थे, हवा में था उनका बैकफुट जब विकेट उखाड़े गए थे और बिल्कुल सही तरीके से थर्ड अंपायर रोलैंड पिंटो ने उन्हें आउट घोषित किया। तो बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग यहाँ पर और इस बेहतरीन स्टंपिंग की बदौलत ये विकेट यहाँ पर गिर चुका है, विकेट नंबर 4। इट्स 12 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट एंड विद दिस डिसमिसल कुद्रोली यंग बॉयज आर नाउ लुकिंग डीप इन ट्रबल। So just talking about the next match, Friends Kuttar will take over Deadly Kankanadi, and because of that I request all the players of both teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart and also complete the toss procedure before the end of this match. सिनान नए बल्लेबाज के रूप में शाहिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए इस वक्त अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ के बल्लेबाज इस वक्त सामना करते हुए सिनान और तो इस वक्त गेंदबाज तैयार, सिनान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, नए बल्लेबाज सिनान इस वक्त सामना करते हुए शाहिल की गेंदों का, ये गेंद हल्के से पुश कर दिया है बैकफुट पर जाने के बाद और 1 रन के साथ अपना छोड़ यहां पर बदल चुके हैं। 13 रन बन चुके हैं और विकेट इस वक्त गिर चुके हैं 4। तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। तो गेंदबाज शाहिल गेंदबाजी करेंगे इस वक्त दाहिने हाथ के बल्लेबाज परवेज के लिए और परवेज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। निस्संदेह एक लंबा सफर अभी भी तय करना बाकी कुद्रोली यंग बॉयज को। सिनान इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को खेलना चाहा लेकिन खेल नहीं पाए और आखिरी मौके पर फॉलो थ्रू में मिसफील्ड फील्डर द्वारा और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 14 रनों पर। एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए फास्टेक वॉरियर्स के गेंदबाज और फलस्वरूप कुद्रोली यंग बॉयज के बल्लेबाज रनों के लिए कड़ा संघर्ष यहां पर करते हुए और सिनान एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए फील्डिंग में कुछ हद तक तब्दीली करते हुए कप्तान फास्टेक वॉरियर्स के और सिनान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, शाहिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बार गेंद को स्वीप कर दिया था लेकिन ठीक तरह से स्वीप नहीं कर पाए। गेंद पहुंची मच स्ट्रेटर शॉर्ट मिड विकेट पर और रन इस बीच मिला 15 रन 4 विकेट के नुकसान पर। शाहिल अपने गेंदबाजी के मार्क पर यहां पर जाते हुए और परवेज इस वक्त सामना करने के लिए तैयार।
दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ लेकिन स्ट्रोक्स में ज़्यादा रफ्तार नहीं, और इससे पहले की गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 16 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर। रन सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहाँ तक सवाल है करारे स्ट्रोक्स का, चौके और छक्कों का, तो कोशिश तो ज़रूर कर रहे हैं कुदरुल यंग बॉयज़ के बल्लेबाज, लेकिन सफलता उनके पक्ष में नहीं आई है। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए शाहिल, दाहिने हाथ ओवर द विकेट ये गेंद, ओ दैट इज एन परफेक्ट लेग कटर डिलीवरी। और जहाँ तक सवाल है लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए ऑफ कटर थी, बेहतरीन गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद कुछ घुमाव लेती हुई और सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। और इसी के साथ ओवर नंबर 3 की समाप्ति हो चुकी है। 3 overs completed, it's 16 for the loss of 1 wicket, 28 to get from 3 overs, and now the asking run rate is now gone up to exactly 9.66 runs per over. Still they got 6 wickets in kept intact. Still they got 6 wickets in their hand. 28 रन बनाने 3 ओवर में, और देखते हैं इन बचे हुए 28 रनों को बनाने के लिए बचे हुए 3 ओवर में बल्लेबाज कुदरुल यंग बॉयज़ के कौन सी रणनीति टैक्टिक्स यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मेरे काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद को कन्नड़ में आगे का आंखों दिखाल सुनाने के लिए। आइए समद, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. 44 ರನ್ನಿನ ಗುರಿ ಇತ್ತು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗಾಗಲೇ 16 ಮಾಡಿದೆ, 4 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ. 38 ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತಹ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 28 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 3 ಎಸೆತದ 3 ಓವರ್ಗಳ ಮುಂದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ತಸ್ಲೀಂ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ, ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಪರ್ವೇಜ್ ಈ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 28 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಭಾಳ ಸಂಘರ್ಷ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪುಟಿದೆದ್ದು ಆಡುವ ಆಟ ಆಡುವಂಥ ತಂಡ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ತಸ್ಲೀಂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂಭವ. ಹೌದು, 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. 5ನೇ ಉದರಿಯ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಹೋರಾಟ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜೊತೆಯಾಟವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು. ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರಿತು ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರ ಆ ಆಟದ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಛಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. ರಿಯಾಜ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದವರು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವುದರ ಮೂಲಕ 2 ವಿಕೆಟನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಪಾಳೆಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದವರು ರಿಯಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಮ್ರವರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ. ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರಿಸರದ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಕಾರಣ ಈ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ ತಂಡ. ಆಟಗಾರರ ಗಮನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಉಳಿದ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯ ಆಟವಾಗಿದೆ ಈ ಮೈದಾನ. ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ರೋಹನ್ ರವರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹನ್ ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವೂ ಸತತ 3 ದಿವಸಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದವರು ರೋಹನ್ ರವರು.
ಈ ದಿವಸವೂ ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ನೋಟ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯ 12:30 ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಆಟಗಾರರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ತಸ್ಲೀಂ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆಟಗಾರನಿಗೆ. ಆಟಗಾರ ಸಿನಾನ್ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗನು ಕೂಡ, ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಮೈದಾನ, ಆ ಸಂದರ್ಭ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರವರು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರು. ಬಹಳಷ್ಟು ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ತಸ್ಲೀಂ ಮತ್ತೆ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನು ದಾಟಿ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡೆತ ಸಿನಾನ್ ರವರಿಂದ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಮುಂದುವರಿದು 18ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ, ಒಟ್ಟು ಚುರುಕಿನ ಓಟ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹನ್ ರವರು ಕುಳಿತ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸಮರ್ಪಕ ನಾಯಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಎಂಬ ತಂಡವನ್ನು ಸಮಸ್ತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಓರ್ವ ನಾಯಕ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ. ಇವರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರಿಗೂ ಒಂದು ಸಂತಸವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ನಾಯಕತ್ವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಒದಗಿದ್ದೇ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿತ ಮಟ್ಟದ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿಸುವುದಾದರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಅವರ ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರ, ಅವರ ಆಟದ ಅಭಿಲಾಷೆ, ಅವರ ಆಟದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಸಮರ್ಪಕ ನಾಯಕತ್ವದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡಿಸಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಅನ್ನುವ ಆ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಡೀ ಜಗತ್ತನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆವರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಅದನ್ನೇ ಸಮರ್ಪಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ತಿಲಕ್ ಗುರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅವಿರತ ಶ್ರಮ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಹನ್ ರವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ, ಮುಜಮ್ಮಿಲ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಕೈಗಗಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಇದು ಶ್ರೀರಾಜ್. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂದೇಹ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಮಧ್ಯಗೂಟಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಆ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು ಶ್ರೀರಾಜ್. ಕೈಯನ್ನು ಗಗನಕ್ಕೆತ್ತುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 7 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿಲ್. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಮುಖವೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಬಹಳ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾರ ಸತೀಶ್ ರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಬೆಳೆಯುವ ಸಿರಿ ಮೊಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತನ್ನು ಕಾದರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಹಿಲ್ ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸತೀಶ್. ಈ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಎಸ್ತವನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಮನದ ಅಂಶವನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಮನವಿರಲಿ, ಗಮನ ಹರಿಸಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಫರಾಜ್ ರವರಿಗೆ. ಓರ್ವ ಯಶಸ್ವಿ ಎಸೆಗಾರ ಫರಾಜ್
ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಸತೀಶ್ ರವರ ಮನ ಮುಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಸೆತ. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಸರೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಸೆತ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಫರಾಜ್ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಒಂದರಲ್ಲಿಯೇ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 19 ಬಂದಿದೆ, 7 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಕೇವಲ 19 ಇದೆ, 44 ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಸಂಗ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯ ತುದಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 20 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೂ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ, ಒಟ್ಟು 8 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 24 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಈ ಬಾರಿ ಫರಾಜ್ ರವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕುದ್ರೋಲಿ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಎಸೆತಗಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 21, ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಸಾಹಿಲ್ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಬಹಳ ರಭಸದಿಂದ ಆಟಗಾರನ ಚಲನವಲನವನ್ನರಿತು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕಂತೂ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಗಮನವನ್ನೇ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅವರು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಹಿಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯದ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್, ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಕ್ಯಾಚ್. ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನು ಮೆರೀತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ ಸತೀಶ್ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಾಗ ಕೇವಲ 15 ರನ್ನಿಟ್ಟು 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಒಟ್ಟು 44 ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ತದನಂತರ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಂತೂ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಂಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚೇತನವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರರು ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಫಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ವಿಕೆಟ್ ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಂಡಕ್ಕಿನ್ನೂ ಬೇಕಾಗಿದೆ 23 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 23 ರನ್ನುಗಳನ್ನೋದು ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಆದರೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತುಂಬ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ. 23 ರನ್ನು ಎನ್ನುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತೂ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಫಲವಿದೆ. ಅವನ ಛಲಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಗುವ ಮೈದಾನ ಇದು, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಭೂಮಿ ಇದು. ನೋಡೋಣ. 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 23 ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ವೇಗಿ ಜಗ್ಗು, ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಮೋಡಿಗಾರ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರ ಜಗ್ಗು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಸೆತಗಾರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಅದು ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಗೆ ನೀಡುವುದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಲೇಬೇಕು. ಕಳೆದ ದಿನವೂ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 14 ಬೇಕಿತ್ತು ಸತೀಶ್, ಹೌದಲ್ವಾ? 14 ಬೇಕಿದ್ದಾಗ ಇದೇ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತುದಿಯಿಂದ ಜಗ್ಗೂರವರನ್ನು ಕೊನೆಯ ಓವರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಆಗ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ನಾಯಕನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಇದು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಗ್ಗು ಓರ್ವ ಲೆಗ್ ಸ್ಪಿನ್ ಎಸೆತಗಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಪ್ರಬುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮೆರೆದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವ ಒಂದು ಮೈದಾನ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಿಕ್ಸರ್ ಒಂದು ಸಿಡಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಎಲ್ಲರ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣಗಾರರಲ್ಲಿದ್ದ ಎಲ್ಲರ ಮುಖ ಒಮ್ಮೆ ನಗುವಿನಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಆ ನಾಯಕನಿಗೆ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಒಂದು ನೋಟ ಬೀರಿತ್ತು. ಆದರೆ ಜಗ್ಗು ಛಲಗಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಉಳಿದ 5 ಎಸೆತಗಳಿಂದ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 4 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 4 ರನ್ನಿನಿಂದ ತಂಡ ಜಯಗಳಿಸಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು 23 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ವಿಕೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೂಲಕ ಚೆಂಡು 4 ರನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ಉಳಿದ 4 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಜಗ್ಗು ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಗ್ಗು ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೋ. ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಡುತ್ತದೋ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾಯ್ದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಹಿಂಬಾಲಕ, ಓರ್ವ ಅಭಿಮಾನಿ, ಆ ಬಾಲಕನಂತೂ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರಾಶೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ನಿನ್ನೆ ಆ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡ ಗೆದ್ದಾಗ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚೀರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆ ಬಾಲಕ ಈ ದಿನ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗೂರವರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆಲ್ ಔಟ್ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಆಟವನ್ನಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಗೆದ್ದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸೋತರೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಕುದ್ರೋಲಿ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ತಸ್ಲೀಂ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಓರ್ವ ಸಂಯೋಜಕರು, ಓರ್ವ ಅರ್ಹ ನಾಯಕರು ಆದ ರೋಹನ್ ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಸ್ಲೀಂ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಸ್ಲೀಂ ರವರು ಪಡೀಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸುತ್ತಾ, ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಒಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಪಂದ್ಯ ಇದು. ಎರಡೂ ತಂಡ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಅಲ್ತಫ್ ವಾಲ್ಪಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗನಾದರೆ, ಅತ್ತ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ನಿನ್ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಆಡಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರನ್ನು ಸಿಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ತಂಡದ ಆ ರನ್ ಗತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರ. ಅನುಭವದ ಮಧ್ಯೆ ಅನುಭವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ,
Thank you very much, Janab Abdul Samad Katipala, for your excellent commentary for this match in our state and sweet language, Kannada. And at last, it's Kudroli young boys not managed to get that 44 what they wanted in this 6 overs, and compromise victory in the end for the fast track warriors. They bowled like a warriors, they played like a warriors, batted like warriors, and they deserve the victory against Kudroli young boys. So it's going to be one more good match, the big match. And Kudroli, a little bit correction, Friends Kutar captain, after winning the toss, they elected to field first against the Deadly Boys Kankanadi, so that Deadly Boys Kankanadi, two opening batsmen, successful opening fair. Altaf Walpadi, along with him, is ours. Altaf Walpadi has got a fantastic season from his bat. In consecutive 3 times, he is becoming the finalist, and one at Eliar Padu. His team is represented. Within 3 days, he's become the teammates of 1 runners and 2 winners, and he is a man in form, Altaf Walpadi. And he represented 7-star Eliar Padav. That tournament is played at Eliar Padav, and becomes the man of the series for his wonderful batting performance. Then in Krishnapura, Chocobitu, All-Amin Trophy. This time, what are you talking about? The man in form. Here he go. Is lofted at one down to deep extra cover boundary, and good stop by the fielder. Nikhil, I think so, is running hard, and it was a fantastic save, I will tell you, by Nikhil in the occasion. Looks like it is going to be a boundary once the batsman going up and over towards the deep extra cover, and Nikhil running back and not really given up. Outstanding fielding performance from Nikhil, and Altaf Walpadi managed to get a couple of runs before the fielder to field the ball. Right arm over the wicket, Altaf, ball him, clean him up. Look at the celebration here. Look at the celebration here from Ashwit. This has been outstanding change of pace. This is the best weapon for any fast bowler. Seeing that batsman in aggressive frame of mind. Look at that one. The batsman early into the strokes. This is a slower leg cutter, I will tell you. Whenever the batsman in aggressive frame of mind, the bowler had to little bit think. And I think it's a clever thinking by Ashwit. Bowling a slower leg cutter, batsman early into the strokes, pays the penalty for, missed the line completely, and danger man departs of Deadly Boys Kankanadi. Altaf Walpadi is back into pavilion. Of course, the spectators, even the viewers, those who are watching a live telecast through Bedra Media in YouTube, might be a little bit disappointed to see the early dismissal of Altaf Walpadi. They wanted to get some entertainment from his bat, but Ashwit is not providing that opportunity. It's been outstanding that change of pace comes into play. Clever piece of bowling there by Ashwit. Absolutely good thinking. And danger man departs. So 2 for the loss of 1 wicket. Deadly Boys Kankanadi. The new batsman in is Zabir. Wait and see how Zabir will going to contribute from his bat. Facing Ashwit, the successful bowler. From the Venkatesh Bandari end, bowling right arm over the wicket, balls. This time improvisation just over the infield, going for the second, but seeing that Nikhil once again one of the outstanding fielder there in the short cover point region, not really giving opportunity for the batsman to come back for the second, and batsman have to settle for the single. So with that single score, Zabir is off the mark, and total score now moves on to 3 on the board for the loss of the big wicket of Altaf Walpadi. Altaf Walpadi, one of the most popular name in a present cricket in last 2 seasons. He's been outstanding from his batting and bowling, and he's back into pavilion. Now Ashwat is bowling from the far end. First time Izaz facing Ashwat. This time Izaz, as always, took his own time to settle down, rotating the strike, and he's picked up a single, seeing that he lost his partner very early. That's why it's responsible is to carry on the business.
need to stand tall other end and need to play a big innings for his team. 4 for the loss of 1 wicket. Ashwit balls down the leg stump. Zabir reaching for the delivery, but protection there in the deep backward square leg. They have to settle for the single. A slow over one once again there from Ashwit. Change of face. The batsman tried to hit that one because of that was a slower one. Zabir couldn't manage to get the timing proper. So managed to get the single down to deep backward square leg. 5 for the loss of 1 wicket here in over number first in progress. The first over of the power play. From the far end, Ashwit balls. Izaz going for the big drive on the offside region, but missed timing. So that ball went towards a deep long on. So good over there from Ashwit. Absolutely good over there for Friends Kuttar. Whenever bowling in the power play overs, it's not an easy to handle the pressure when you're having a two best batsmen in the middle, Izaz and Altaf Walfadi. I think Ashwit did a good job here for his team, picking up the danger man's wicket and just conceded 6 runs in that over. Altogether, the 6 for the loss of 1 wicket after that first over of the power play. Outstanding cricket tournament we are witnessing. Successful 2 days. After that is a day number 3 is going on here very successfully. And for that, I think it's going to be the great leadership is very important here. Tilak of young friend Urwa as dreaming of that Kudla Premier League 6 years back, and its dream comes true when it was season 1 Kudla Premier League is a grand success. After that they never look back, and of course even the president of young friends Urwa, Rohan, one the key architect of this KPL season 6, and of course always even Gautam Salian of young friends Urwa, and the big names always they need to have some great leadership, great leaders behind any success cricket tournament, and these 3 guys are done a good job for the success of the cricket tournament, along with Anif of Krishnapura and Anif of young friends Urwa, and then of course Ashraf Dawn. All are the backing up very well for the success of this cricket tournament. Meanwhile, the start of the over number 2 starts with the warm-up delivery by the bowler Rakshit is the bowler, the bowling from the commentary box end. He's getting bowling to the right-hander batsman Izaz. Short run up. Bowling away from us, balls. Lovely cricket there from Izaz. Making a little bit room to play the shot. No, exactly the mid-off and cover point. There is a huge gap. Sending that one right in the gap by making a little bit room to play the shot. He knows that Rakshit bowling incoming delivery. So confident by playing the shot, and he picks up a single score but moves on to 8 on the board for the loss of 1 wicket. Zabir back on strike now. Bowling Rakshit, little bit Rakshit bowling away from us with the short on a pass umpire Roland Pinto. Alright, over the wicket balls. Zabir went for the big expansive drive, missed the line completely, not too far. That ball from the stumps, off stump, just a 2-3 inches. That ball missed the stumps of Zabir, and he just survived from that delivery. He didn't got that much of turn in the relegation there for a bowler. Otherwise, there's going to be a chance of 1 wicket here, and there's no chance of any run at all. Zabir tried to get some runs because he knows that is the last over of the power play. He wanted to get some runs for Deddy Kankanadi, but Rakshit is not really allowing the batsman to freeze his arm. Again, identical mirror display of the previous one. The line is so good in the relegation. Zabir once again tried to play a similar stroke what he wanted to play in the previous delivery. Missed it completely. The wicketkeeper behind the stump did the rest, and there's no chance of any run at all. 8 for the loss of 1 wicket here in the over number 2 in progress. The quiet cricket is going on here. Quite understandable. Friends Kuttar has managed to put some pressure on the batsmen by bowling tidy line and length. Rakshit again bowling away from us. Right arm over the wicket to Zabir. Zabir went for the reverse sweep right in the gap, but not quite able to beat the infield in the relegation. Backward point fielder quickly moving towards his right and stopping some runs for his team, but not quite able to stop the single from these 2 batsmen. So with that single, scoreboard moves on to 9 on the board for the loss of 1 wicket. So far it's so good. I think today a little bit changes in Friends Kuttar playing 11. Now I'm just watching Mahesh is coming in, but quite unfortunate to see that I'm not watching Naveen, because he's a key player for the side of Prince Kuttar. I'm not seeing him in this playing 11. Naveen, who becomes the man of the match in the previous match, and now he's
Rakshit bowls it again now. One for the slog sweep shot. A chance of run out there. Misfield there by the fielder Dikshit. The golden opportunity is missed out there by the fielder. Might be a little bit urgency shown. Zabir is out of the crease for a long way when ball went towards the hands of square leg. But Dikshit couldn't manage to gather the ball. Missed it completely. And Zabir once again back. A 9 for the loss of 1 wicket. So far, it's a fantastic quiet over bowling by Rakshit. Last ball remaining. Just 3 runs conceded in that over. Rakshit, final time in this over. It's a lovely shot. Beautifully played that one. Down to deep square leg boundary for 4 runs. Delightful stroke. Nothing wrong with the line of the delivery, I will tell you. Look at that one replay. Line is outside the line of half time. And look at Izaz, how well he managed to drag that one from outside the line of half time. He know exactly if he able to middle that one. There is no one there in the deep backward square leg to save the boundary. Much required boundary came from the bat of Izaz in the final delivery of Rakshit. That's why so important for the bowler. Even in this small format of the games, if you bowl 5 good deliveries, need not to relax. Don't relax, because one big shot will definitely takes your all effort, and certainly looks like it's gone in vain. But still, the 7 runs over, not a big over, I will tell you. But getting that boundary might be it was a big year for Deadly, because they didn't got enough runs on the board. And that boundary will going to give some kind of oxygen here for the batsman. 13 for the loss of 1 wicket. 6.5 runs per over in the over number 2 is completed. Now third over is going to begin from the Venkatesh Bandarian. Fielding spreading out slowly here. After that power play, fielding restriction is off. So that straight away one fielder from the backward point going to the deep backward point. Then extra cover fielder going towards the deep extra cover. Bidon going to deep long on. Mid wicket going to deep mid wicket. And one fielder stationed at deep backward square leg for slog sweep shot. 13 for the loss of 1 wicket. No change in bowling from the Venkatesh Bandarian. Ashwit will go into bowl his second and last over of his quota. Right arm over the wicket to Zabir. Zabir went for the reverse sweep, but he managed to get the single. Didn't got that much of timing what he was looking for, but managed to rotate the strikes, very important. And scoreboard moves on to 14 for the loss of 1 wicket. Outstanding cricket is going on here. Very satisfaction here for the organizer that even on there's a weekdays, the crowds is so good in this 3 days of cricket. All around, we can see all around the ground, the spectators enjoying the game of cricket. Very decent and colorful spectators. And gone is gone. Beautifully bowled there by Ashwit. He is a master of that one. Absolutely magnificent delivery here from Izaz. Izaz still not believing that how he missed that ball. How he missed the ball. We can see in the replay as well, because Ashwit changing the face cleverly. Whenever he's changing the face, means whenever the bowling is slow leg cutter, he gets a little bit extra turn. When he gets the extra turn, batsman completely confusion. Thinking that is a normal leg cutter. That's why he's just committing himself onto the front foot to push the ball towards offside region. But he missed it completely from his bat, and is that ball defeating the defense of Izaz. And one more danger batsman is back into pavilion of Deadly Boys Kankanadi. 14 for the loss of 2 wicket. There is one more good news here for the spectators. I'm just talking about the spectators, very decent and very colorful spectators in usage, enjoying the game of cricket. But they will definitely going to get one opportunity here to watch their legend, their favorite players. I'm talking about the legend match, which is being held at 1 p.m. I think so, in Friday. And that match will be played between the legend players of Young Friends versus Mangalore Legends. So that it's going to be one more opportunity here for the cricket lovers to come and watch their favorite players in this UCG cricket ground. Meanwhile, the first delivery, next delivery of Ashwit. Batsman went for the reverse sweep. Wicketkeeper behind the stump, Santosh missed it. Umpire not missing here to signal as a bye. One more addition to total. Scoreboard moves on to 15 for the loss of 2 wicket.
Ashwit from the Venkatesh Mandarian. Zabir is a striker there in the middle for a long time. Slower one more wicket here for Ashwit. Change of pace is giving a lot of wickets here for Ashwit. This is the third time he's got a wicket in that similar fashion. Look at that one, batsman waiting and waiting. How much time you have to wait for the slow delivery? Just going for excited to see that it's going to be a short pitch delivery. Because of that ball is a slower one and a lot of turn in that delivery. Batsman missed out and picked up a wicket. So one more wicket is back into pavilion, 15 for the loss of 3 wicket. Just coming back to that legend match between legend players of Young Friends Urwa versus Mangalore legends. Santosh 11 versus Gangadhar. Gangadhar will go into captaining the Young Friends Urwa legends. Srikanth lead correction. Srikanth will go into lead that Mangalore 11 legends. And this is going to be a wonderful opportunity, I will tell you. Just like then the last year, Reliance Cricketers Jaipur organized that legendary cricket tournament. It was becoming a very popular, and still that the pictures of that's right in front of us, how wonderfully they are organized that cricket tournament and the legendary matches. So similarly here, I think it's going to be one more opportunity here for the cricket lovers to watch this two fantastic, two outstanding legendaries. They are leading their teams. Srikanth leading Mangalore 11 and Gangadhar of Young Friends Urwa, two tremendous all-rounders, and they will going to lead their teams. Next deliver Ashwit is growing his confidence and wicket after wicket. I think he's got all three wickets. All 3 wickets going into the account of Ashwit. Outstanding bowling performance, match-winning bowling performance there from Ashwit. 15 for the loss of 3 wickets. Sadiq, the very good striker of the ball. Sadiq tried to get some partnership going here. Very important here for the deadly boys. Kankanadi need to be a little bit of patience. Ashwit balls. Batsman drives an off-cutter in the relegation, and batsman just placing the ball between bowler and extra cover to pick the single. So one more fantastic over is comes in there from Ashwit. In that over he picked up 2 valuable wickets. Altogether I want to say his bowling figure, 2 overs no maiden, conceded 8 runs and picked up 3 valuable wickets. That was outstanding bowling figure for any bowler. The economy, look at that economy, 4 runs per hour, and in that 2 overs he bowled 1 hour in the power play. That's so important. And after bowling that power play overs and getting that kind of bowling figures, I will tell you that Friends Kutar has got one match-winning bowler in their bowling department. So 3 overs completed. It's 16 for the loss of 3 wickets, and wait and see how many runs they will going to score here. And in 3 overs, and before that over will go to commence. It's going to be one more time. I would like to invite my close friend, my long-time partner in commentary box, Mr. Gopi, to take over the microphone in our national language in the Please Come Gopi. Thank you. धन्यवाद सतीश. तो द इक्वल बैटल इज ना कंटिन्यूइंग, और जहां तक सवाल है इस वक्त रनों के लिए कुछ हद तक संघर्ष करते हुए बल्लेबाज डेडली कंकराड़ी के, और जहां तक एक बेहतर स्कोर खड़ा करने का सवाल है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी 40+ रन्स विल बी द कॉम्पिटिटिव टोटल इन दिस टाइप ऑफ ट्रैक इन दिस कंडीशन. और जहां तक सवाल है, चौथा ओवर शुरू होता हुआ रक्षित गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, और जहां तक सवाल है स्ट्राइक का, तो सादिक के इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार. ओवर की पहली गेंद लेकर रक्षित गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला, गेंद पहुंचे एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से, गेंद वाइड लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का. गेंद को इस वक्त स्कूप किया था और भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद एक्स्ट्रा कवर फील्डर के सिर के ऊपर से निकलते हुए जी तोड़ कोशिश जरूर की थी एक्स्ट्रा कवर के फील्डर ने, लेकिन आखिरकार गेंद को वो पकड़ नहीं पाया, और जब तक गेंद को बैकअप किया जाता वाइड लॉन्ग ऑफ पर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने की. साझेदारी पार्टनरशिप की सख्त जरूरत है.
डेडली कंकराड़ी को अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर की ओर बढ़ना है तो दाहिने हाथों पर द विकेट इस वक्त रक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए बेहतर गेंद थी। लेग स्टंप पर आती हुई गेंद विकेट से हटते हुए गेंद को स्क्वायर ऑफ द विकेट लॉफ्ट करना चाहता, चूंकि लेग पाई के रूप में ये रन उनके खाते में जुड़ चुका है और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 19 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर। 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट इन द ओवर नंबर 4 इन प्रोग्रेस। मैच इस वक्त चल रहा है फ्रेंड्स कुत्तार और डेडली कंकनाडी के बीच में, और जहां तक सवाल है इस वक्त खेल को कुछ क्षणों के लिए बल्लेबाज अंपायर ने रोक दिया है, और मैं समझता हूँ बल्ले का विस्तीर्ण इस वक्त जांचने की वजह से, या फिर बल्ला कुछ हद तक क्रॉस है, इस वक्त बेंड है। और जहां तक सवाल है इस बल्ले के आकार से असंतुष्ट अंपायर रोलैंड पिट, और निस्संदेह होनी भी चाहिए क्योंकि अंडरआर्म क्रिकेट में बिल्कुल सीधे तौर का बल्ला, बिल्कुल सीधा बल्ला इस्तेमाल किया जाता है, और यह बल्ला लगभग तीर के माफिक जो मुड़ा हुआ है, द बेंड लाइक अ बो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में। और यहाँ पर क्रिकेट के नियमानुसार, अंडरआर्म क्रिकेट के नियमानुसार ऐसे बल्ले से बल्लेबाजी करना निषिद्ध है, और अंडरआर्म क्रिकेट के नियम ये बताते हैं। तो जहाँ तक सवाल है बल्लेबाजी का, और अपना बल्ला बैट बदलने के बाद एक बार फिर से बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और लगभग उस बल्ले को हालांकि काला पेंट भी लगाया गया था, और निस्संदेह इससे उस बल्ले का जो टेढ़ापन है पूरा हमें दिखाई दे रहा था। ये गेंद इस बार गेंद पर प्रयत्न जरूर किया, और जहाँ तक सवाल है गेंद को वो लपक नहीं पाए, तो निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन प्रयत्न गले के फील्डर ने किया था, और आखिरकार दुर्भाग्यवशात गेंद को वो लपक नहीं पाए। 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट। आज का मैच नंबर 4 यहाँ पर खेला जाता हुआ, और कुल मिलाकर इस श्रृंखला का 18वां मैच यहाँ पर प्रगति पर, 19वां मैच कहना पड़ेगा यहाँ पर प्रगति पर। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, रक्षित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद चिप गया लॉन्ग ऑफ की दिशा में, और गेंद इस वक्त लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के अंदर लपक ली गई है। Has hit that one pretty hard but can't find the gap, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। और गेंद में रफ्तार थी लेकिन इतनी ज्यादा रफ्तार नहीं कि गेंद सीमा रेखा को पार कर सके, और लॉन्ग ऑफ फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची, प्लेसमेंट भी गलत था, और भुगतान यहां पर उन्हें करना पड़ा। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 यहां पर गिर चुका है 20 रनों के ऊपर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। और सादिक की पारी यहां पर समाप्त हो चुकी है। तो निस्संदेह यहाँ पर 20 रन बन चुके 4 विकेट के नुकसान पर, और हमारे करीबी दोस्त भूतपूर्व एक बेहतरीन खिलाड़ी बाबू बंगेरा जो कि हमारे साथ मौजूद है, जो कि गोरी यंग बॉयज़ के लिए प्रतिनिधित्व किया करते थे। और निस्संदेह जब 22 से 23 से 25 साल पहले, 24 से 25 साल पहले जब मैं मेरी कमेंट्री करियर जब मैं शुरुआत की थी, तब बाबू उस टाइम में बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक जाने जाते थे। खासकर कुछ ऐसी पारियां उन्होंने खेली है जो आज भी 25 साल के बाद मेरे दिलो दिमाग पर अभी भी छप चुके हैं। और निस्संदेह यहाँ पर वो हमारे साथ मौजूद है कमेंटेटर बॉक्स में, हम उनका हृदयपूर्वक स्वागत यहाँ पर करते हैं। और जहाँ तक सवाल है इस मैच का, तो इस मैच में इस वक्त संघर्ष जारी है। दाहिना हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार दाहिना हाथ ओवर द विकेट, गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था, इस वक्त शफल होते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस गेंद को फेंकी थी इस वक्त गेंदबाज ने, और इस गेंद की लाइन को पहचानते हुए शफल होते हुए गेंद को इस वक्त स्वीप कर दिया था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। 1 रन का इजाफा हो चुका है, 21 रन 4 विकेट के नुकसान पर। और गेंदबाज
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ खेला, इस वक्त बैकवर्ड थर्ड मैन की दिशा में गेंद जाती हुई और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने की। जस्ट प्ले दैट वन विद द ट्विस्टेड बैट एंड गेट्स दैट वन फॉर अ कपल एंड विद दैट कपल रन द स्कोरबोर्ड मूविंग अप टू 23 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स विद एवरेज ऑफ एग्जैक्टली 5.75 रन्स पर ओवर। 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर का खेल बाकी, जस्ट 2 ओवर्स नाउ रिमेनिंग इन द इनिंग्स। और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 ओवर्स में उनके बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं। तो आज का चौथा मैच यहां पर खेला जाता हुआ और उसके बाद स्ट्रेट अवे इस श्रृंखला का क्वार्टर फाइनल मैच, पहला क्वार्टर फाइनल मैच यहां पर होगा। तो इस मैच के बाद एक और मैच बाकी है, उसके बाद 2 क्वार्टर फाइनल मैचेस खेले जाएंगे। तो यहाँ पर गेंदबाजी शुरू करते हुए वेंकटेश भंडारी मुंबई एंड की ओर से जगदीश, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार हरीश, और फील्डिंग में कुछ हद तक जमावट इस वक्त करते हुए और बल्लेबाज इस वक्त तैयार फील्डिंग का मुआयना करने के बाद। दोपहर का वक्त 1:05 बज चुके हैं। निस्संदेह इस प्रखर धूप तले एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, गेंदबाज एक बार फिर से इस ओवर में पहली बार कहना पड़ेगा गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट, गेंद को खेला खूबसूरती के साथ इनटू द गैप, गेंद जाती हुई डीप कवर पॉइंट की दिशा में और इससे पहले की काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद गेंद को फील्ड करे फील्डर, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन इस बीच प्राप्त करेंगे। जस्ट प्ले दैट वन विद अ ट्विस्टेड बैट ओवर द कवर पॉइंट फील्डर साइड एंड गेट्स अ कपल रन फॉर दैट स्ट्रोक एंड दैट कपल रन इंक्रीजिंग द टोटल टू 25 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट। 25 रन बन चुके हैं 4 विकेट के नुकसान पर। 11 गेंदें अब बाकी उनके पारी में। गेंदबाज ये गेंद सफल होते हुए गेंद को उछाला है, लेकिन सीधे पहुंची गेंद बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में। पूरी तरह सफल हो चुके थे, तीनों स्टंप्स को छोड़कर ऑफसाइड पर आ चुके थे और पूरी तरह घूमकर इस स्ट्रोक को खेला था, लेकिन प्लेसमेंट सही नहीं और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के हाथों में गेंद पहुंची। और जब तक गेंद उनके हाथों पे पहुंचे, फील्डर बिल्कुल तैयार थे और उन्होंने दोनों हाथों से गेंद को दबोच लिया। 25 रन 5 विकेट के नुकसान पर। निस्संदेह टेस्टिंग टाइम continuing here for the batsmen of Deadly Boys now and a good piece of bowling performance continuing here from the bowlers of Prince Kudla। और जहां तक सवाल है बल्लेबाजी का, तो शमशीर का आगमन यहां पर हो चुका है। ಅಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಯಾರಾದರೂ ಇಬ್ಬರು ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆ ಕೊಠಡಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। यंग फ्रेंड्स ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು वालंटियर्स। तो इस बार बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद और जहां तक रनों का सवाल है, रन इस वक्त नहीं मिलेगा। बेहतर गेंद थी इस वक्त और गेंदबाज इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद अच्छी गेंद थी, इस वक्त बैकफुट पर गए, गेंद को हल्के से पुश कर दिया शॉर्ट विकेट पर और इससे पहले की गेंद को वहां पर फीड किया जाता। बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 26 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला जारी रखते हुए गेंदबाज जगदीश और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद रिवर्स शॉट खेलना चाहा, स्टंप्सों पर टकराई और इस तरह से एक और विकेट गिर चुका है। 6th विकेट डाउन फॉर डेडली कंकनाडी। और एक बेहतर गेंद पर रिवर्स शॉट खेलना चाहा था, गेंद टिप्पा खाने के बाद नीचे लेते हुए और सीधे जा टकराए, बल्ले को वंचित करने के बाद मिड और लेग स्टंप पर गिल्लिया बिल्स ऑफ होते हुए और इसी के साथ ये 6ठा विकेट गिर चुका है। 26-46 नाउ।
ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು. ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್ ಗೇಮ್. And now the last ball remaining in this over. जगदीश नए बल्लेबाज सफ़ीक का आगमन यहाँ पर हो चुका है और जगदीश इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद बेहतर गेंद थी. विकेट कीपर चुके शॉट थर्ड मैन पर थ्रो पहुंचा, लेकिन इससे पहले कि थ्रो पहुंचे बल्लेबाज मैं समझता हूं क्रीज पर पहुंच चुके थे और इस बीच एक रन का इजाफा यहां पर हो चुका. 27 रन 6 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति और अंतिम ओवर का खेल अब यहां पर बाकी. Last over remaining in their innings. So विश्वास इस वक्त काफी विश्वास के साथ गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ डेडली कंकनाडी की पारी में फील्डिंग में जमावट यहां पर चलते हुए और ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त विश्वास तैयार. शफीक सामना करते हुए. सिर्फ 4 विकेट सुरक्षित इस वक्त डेडली कंकनाडी के लिए और कुल मिलाकर 6 गेंद उनकी पारी में अभी भी बाकी. पहली गेंद लेकर विश्वास तैयार शफीक के लिए. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए. बेहतर गेंद उछाला, नॉट क्वाइट मिड विकेट. मिड ऑन पर गेंद को फील्ड कर लिया गया. थोड़ी सी मिसफील्ड और बल्लेबाज इस भी दूसरा रन पूर्ण कर चुके हैं. तो ठीक तरह से गेंद को फील्ड नहीं कर पाए सिली डाउन के फील्डर. फलस्वरूप बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन पूर्ण करने का और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 29 रनों पर 6 विकेट के नुकसान पर. 29 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स इन द ओवर नंबर 6 स्टार्टेड जस्ट शॉर्ट व्हाइल अगो. विश्वास शमशीर के लिए अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार. दाहिने हाथ ऊपर द विकेट. यह गेंद चेक किया स्क्वायर ऑफ द विकेट वाइड स्लॉन्ग ऑफ पर, लेकिन प्राप्त करते हुए वहां पर फील्डर को 7वां विकेट यहां पर गिर चुका है और गेंद को उछालना चाहता वाइड स्लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और स्ट्रोक्स में ज्यादा दम नहीं और वाइड स्लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की. अपनी बाईं ओर जाते हुए गेंद पर लब का 2 से 3 कदम और आखिरकार यह विकेट यहां पर गिर चुका है. विकेट नंबर 7 29 for 7. ಟೋರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಹಾಳೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯವು ಈ ತಂಡಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ಲೀಸ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್. और जहाँ तक सवाल है 4 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी. नए बल्लेबाज इस वक्त नॉन स्ट्राइक रन पर मौजूद शफीक इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. विश्वास की गेंदों का दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह बात स्क्वायर ऑफ द विकेट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव कर दिया है खूबसूरती के साथ और गेंद जब तक थोड़ा सा दौड़ लगाने के बाद एक्स्ट्रा कवर सीमा नहीं, गेंद सीमा रेखा को पार कर चुकी है 4 रनों के लिए. देखते हैं यह किस तरीके से हुआ है. देखिए स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को उछाला था इस वक्त और गेंद पहुंची इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर और जहां तक सवाल है वहां पर दौड़ लगाते हुए फील्डर गेंद तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन आखिरी मौके पर नहीं गेंद को ढकेल पाए सीमा रेखा के अंदर और
ये प्रयत्न उनका व्यर्थ होता हुआ और गेंद सीधे सीमा रेखा के सीढ़ियों पर टकराते हुए डीप कवर पॉइंट पर 4 रनों के लिए। तो इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 33 रनों पर। बेहतरीन स्ट्रोक इस वक्त शमशीर के बल्ले से लगता हुआ और विश्वास एक बार फिर से तैयार। दाहिने हाथ ऊपर तक विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर रहा, ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर रहा इनफैक्ट, और वाइड का इशारा। 3 गेंदें अभी भी बाकी उनकी पारी में। विश्वास ड्राइव किया स्ट्राइक टू द फील्डर एट कवर पॉइंट एंड वन मोर विकेट फॉलन। Placement was too wrong and he paid the penalty for that. 34 for 8 and now just 2 balls remaining in their innings. तो डेंजिल का आगमन यहां पर हो चुका है एज ए नंबर 10 बैट्समैन फॉर डेडली कंकनाडी और वो इस वक्त सामना करेंगे गेंदबाज विश्वास की गेंदों का। सिर्फ 2 गेंदें अब उनकी पारी में बाकी और विश्वास फील्डिंग में इस वक्त जमावट करते हुए और तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज डेंजिल के लिए इस ओवर की 5वीं गेंद। ये गेंद हल्के से गेंद को स्वीप कर दिया डेलिकेटली स्क्वायर शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 35 द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप। अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज तैयार। विश्वास जबकि स्ट्राइक इस वक्त है इम्तियाज के पास। पारी की अंतिम गेंद दाहिने हाथों पर तो विकेट गेंदबाजी करते हुए good one, absolutely terrific one, much straighter line, extra quicker and went into the hands of wicketkeeper and with this delivery the innings is up for Deadly Kankaradi. They finished with 35 for the loss of 8 wickets in the stipulated 6 overs and now they set a victory target of 36 for Friends Kuttar in 6 overs, exactly 6 runs per over the required run rate for them at this situation. With the help of 10 wickets they have to score for victory, 36 runs in 6 overs and their inning starts within just a short while. Till then we are taking a short break and we'll be back right after the short break, but meantime attackers Kudroli will take over Topotoskana in the next match, and because of that I request all the players of both teams to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. And the innings of Friends Kuttar will going to begin within just short while and till then we are taking a short break और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे मेरे काबिल दोस्त जनाब अब्दुल समद के साथ राज्य भाषा कन्नड़ में, जब फ्रेंड्स कुत्तार की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।
ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 36 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ರೂಪು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿಶೇಷ ಅಂದರೆ ಕೇವಲ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳಿದ್ದ ಈ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ 6 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಯಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆಯ ಫಲದೊಂದಿಗೆ 35ರ ಮುಂದೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡವನ್ನು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಮ್ಮ ಅದೇ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರೆ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ ಈ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಭರಿತ ಪಂದ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಎಡಗೈ ದಾಂಡಿಗ ನಿಖಿಲ್, ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್ ತಂಡದಿಂದ ನಿಖಿಲ್. ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೂಟ ಉರುಳಿದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಎಸೆತ, ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ಎಸೆತ, ನೇರ ಗೂಟವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದೆ. ನಿಖಿಲ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಣ್ಣ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಷೀಣಿಸಿದರು. ಕಾರಣ ಅವರ ಆಟ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತದೆ. ನಾವು ಈ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಹಾಗೆ ನಿಖಿಲ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ, ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಭಾಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲರು. ಆದರೆ 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಖಿಲ್ ಯಾವುದೇ ರನ್ನನ್ನು ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಶಕ್ತರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರ್. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಶುಕ್ರವಾರ ದಿವಸ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ KPL ಸೀಸನ್ 6ರಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಈ ಪರಿಸರದ ದಿಗ್ಗಜರ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಆ ಹಿರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಒಂದು ಆಟದ ನೆನಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬಯಸ್ತೀವಿ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ 11 ಹಾಗೂ ಮಂಗಳೂರು 11 ಎಂಬ ಒಂದು ದಿಗ್ಗಜರ ಸಮರ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಗಂಗಾಧರ್ ಅವರು ಮಾಡಿದರೆ, ಆ ಮಂಗಳೂರು 11 ತಂಡದ ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅವರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೂ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಕಾದಾಟ, ಹಿರಿಯರ ಆ ಕಾದಾಟವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಲೆಗ್ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನವೀನ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಸಂತೋಷ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿಯ ಆಟಗಾರ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದು 36 ಮಾತ್ರ. 35 ಮಾಡಿದ್ದು 36ನ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗ ಸಂತೋಷ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಕಾತರ ಇದೆ. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಸಂತೋಷದಿಂದ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಾ 2 ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ನಿಖಿಲ್ ರವರ ವಿಕೆಟನ್ನು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ತದನಂತರ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ತಂಡ, ಸಮಯ ಪರಿಪಾಲನೆಯ ತಂಡ, ಸಂಯಮದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಆಧರಿಸುವ, ಈ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ತಂಡವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಆ ಸದಸ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ತಂಡ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಗಾರ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಆಟಗಾರ ಚಮ್ಮು
ದಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಹಸನ್ಮುಖಿ ಆಟಗಾರ ಈ ಚಮ್ಮು ಈ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಳ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು, ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಚಮ್ಮೂರವರಿಗೆ. 5 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಂಡ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿನ್ನೆಯ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಚಮ್ಮು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ರನ್ನಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಖಿಲ್ ರವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭರವಸೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತದನಂತರದ 4 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 5 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಎಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಕತಾಳೀಯ. 5 ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. 1 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 6 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ. ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಜಬ್ಬಾರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೊಗಸು ನೀಡುವವರು, ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವವರು. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವವರು ಜಬ್ಬಾರ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಡಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಂಡಾರಿ ಆ ತುದಿಯಿಂದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಭಂಡಾರಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರ ನಿಲುವು ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಂಘಟಕರಿಗಿಂದ ಬೆರೆತು ಅರಿತು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಓರ್ವ ಭಾಗಿದಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ. ಅವರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅವರ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿ ಇದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು +1. 2 ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಇಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲೇಬೇಕು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು. ಕಾರಣ ಮಾಡಿದ್ದು 35 ಮಾತ್ರ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪಂದ್ಯ. ನಿನ್ನೆಯ ದಿನ ಇಡೀ ದಿನ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಸವಿನೆನಪು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲೇಬೇಕು. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ರವರು ಔಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಎಸೆತ ಬರುವಾಗಲೇ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆ ದಂಡನ್ನು ಅಟ್ಟಿದ್ರು. ಆದರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ್ ರವರ ನಿರ್ಗಮನ. ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 04 ಬನಿಯಾನ್ದಾರ ರವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 8ರಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಜಬ್ಬಾರ್ ಎಸೆದ ಒಂದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಮೇಲೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 35 ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೇವಲ 2 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಸೆದಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೇ 35 ರನ್ನಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಶಕ್ತರಾಗಿತ್ತು ಅದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಮಹೇಶ್ ರವರಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಚಮ್ಮೂರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಮ್ಮು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗುತ್ತೆ
ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕಾದ ಅಂಶ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಬ್ಬಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಚಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ 10. ಈ ಓವರಿನ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಜಬ್ಬಾರ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತುದಿಯಿಂದ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಹೇಶ್ ಈ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ, ನೇರ ಹೊಡೆತ, ಸೊಗಸಾಗಿ ಮನೋಹರವಾಗಿ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡ್ರಿಯನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ. ಎಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಕ್ರೀಸನ್ನು ಆವರಿಸಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಬೆವರಿಳಿಸಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟಗಾರ, ಮಹೋನ್ನತ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯುವ ಆಟಗಾರ, ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಭರವಸೆ ಕಲ್ಪಿಸ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಆಟದ ವೈಖರಿ. ಜಬ್ಬಾರ್ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಂಡನೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2ನೇ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯ, 15 ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿದೆ. 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ, ಆಕರ್ಷಣೆ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ದಾಳಿ, ಆಟಗಾರರನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂಥ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ತಂಡ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಡ್ಡ ಎಸೆತ ಮತ್ತು ನಿರಾಯಾಸವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಇದು ಮುಂದುವರಿದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟ್ರೋಫಿ ಇದು. ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು 3ನೇ ದಿವಸ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಮಾಡಿದ ಸಾಧನೆ ಅಪಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಾಡುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ. ಇದು ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಎಸೆದ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಕಳೆದ ಓವರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಈ ಬಾರಿ ಮಹೇಶ್ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಇಜಾಜ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಮಹೇಶ್ರವರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಮೈ ನವಿರೇಳಿಸುವಂಥ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ 7. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 16, 2 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಚಮ್ಮು ಈ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ರವರ ಓವರಿನ 3ನೇ ಎಸೆತ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಸಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಸೆತ. 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ. 24ರ ಮುಂದೆ 21 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್, ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ವರ್ಣರಂಜಿತವಾದ ದಾಳಿ. ಆದರೆ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿ ಬಂದಿದೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 4ರ ಮುಂದೆ 2 ಬಂದಿದೆ. ಮಹೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಹೇಶ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಸೊಗಸಿನ ಕಡಲಲ್ಲಿ ತೇಲಿಸಿದ್ರು ಮಹೇಶ್. ಇಲ್ಲಿ 5ನೇ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು ದಂಡನ್ನ. ಬಲವಾದ ಮನವಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್. ಇದು ಇಜಾಜ್ರವರ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಇದೊಂದು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟ. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಟ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮರೆತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊಗಸಾದ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಿನ ಚಾಣಾಕ್ಷ ರೀತಿಯ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾಜ್ರವರಿಂದ ನೋಡಿ. ಗೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಜಾಜ್ ತಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲ್ಲ ಕಾಲಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದು ವಿಕೆಟಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ
ಹೌದು, ಸೊಗಸಾದ ನೋಟ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮೂಲಕ. ಇಜಾದ್ರವರ ಆ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಆಟ. ಇಜಾದ್ ನಿಜವಾಗಿ ಓರ್ವ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ರು ಹಿಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊಗಸಾದ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಜಾದ್ರವರಿಂದ. ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಕುತೂಹಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಹೇಶ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ, ಸಂಘಟಿತ ರೂಪದ ದಾಳಿ, ಕರಾರುವಕ್ಕಾದ ದಾಳಿ, ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ಇಮ್ತಿಯಾಜ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಜಾದ್ರವರ ಆ ರನ್ಔಟ್ ಅಂತೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸೊಗಸಾದ ದಾಳಿ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 17 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ. 19 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬನ್ನಿ ಸತೀಶ್ ರವರೇ, ಬಹಳ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಡೆಡ್ಲಿ ಕಂಕನಾಡಿ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ 18ರ ಮುಂದೆ 17 ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 18ರ ಮುಂದೆ 19 ಬಂದಿದೆ. ಎರಡೂ ತಂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಹೋರಾಟಗಳ ಮುಂದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಿಬ್ಬೆರಗಾಗಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮೊಳಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So thank you very much, Janab Abdul Samad Katipalla. Certainly the match is going to be very interesting. The way that the boys of Deadly Kankanadi did deadly performance in the bowling performance, especially the work of Izaz in the previous run out. It's outstanding footwork from Izaz to get that wicket in the former run out. This time helicopter shot comes into play, hoisting it over to deep long on, but protection there in the deep long on. So batsmen have to settle for the single. 18 for the loss of 3 wicket. Each and every ball required run here on outs for friends Kuttar. Might be there thinking about the service of Naveen. Naveen is not playing in this playing 11 of friends Kuttar, and certainly I think they might be thinking about in this situation Naveen is the best batsman to handle the pressure. Lovely shot. This time reverse sweep comes into play. Ball running down to deep back boundary for 4 runs, and that boundary certainly will going to take the match away from the opposition. This has been a great stroke, I will tell you. Under pressure situation he played that one, and even he surprised the fielding department as well. Unbelievable reverse stroke comes into play. Even the fielder tried to chase that one, but at last the ball winning the race against that the fielder. And important boundary came from the bat of the right-hander batsman Chammu. Chammu, everybody knows that is the name, very popular in Kasaragod district. One who definitely going to be has got a lot of fans for his batting. This time ball have cleaned him up. Chammu is gone after play that, and delightful reverse stroke. He wanted to play one more stroke. This time bowler is too clever. Jabbar bowled a slow over one, and Chammu wanted to play the reverse sweep in the negation. Missed it completely. Then ball hits the stump, and Chammu is back onto pavilion. 22 for the loss of 4 wicket. So coming back to the bowling figure of the opening bowler Imtiaz, as he was a man in form in the bowling in the previous match as well. Yesterday he's bowled fantastic 2 overs. Here also he's continuing his form in this match. 2 overs, no more than 5 runs, and picked up 1 valuable wicket. But look at this bowling economy, 2.5 runs per over. It's been outstanding bowling figure, and because of that bowling figure, I think Deadly boys Kankanadi just started to dream about the victory. But dream, I think if you wanted to achieve that dream, if you wanted to catch that dream, they need to wake up. In the sense, they need to pick another 1 or 2 wickets, and a lovely delivery. Look at that wicket keeper behind the stump. Ball is down the leg stump. I think umpire rightly so, Shira, seeing that it was a ball which is going further away from the right-handed batsman. But Izaz has been outstanding behind the stump. In a fraction, he completes the job, but not quite able to get the result in his favour. But wide signal by umpire. With the addition of that wide, scoreboard moves on to
23 on the board for the loss of 4 wickets. Only the wickets, I think, Deadly Boys Kankanadi has got opportunity to back into this game. Jabbar balls. Dikshit this time waiting for the slow delivery there from Jabbar. The variation in the negation, change of phase. But Dikshit this time has got all the time in the world to see that slowness of the delivery, because that ball is coming all along the carpet. When the ball is coming all along the carpet, batsman can judge the slowness of the ball very easily. This time experiment, absolutely experiment is too much. It's a too much experiment from the bowler Jabbar. That's why that ball is going down the leg stump further away, and scoreboard moves on to 25 for the loss of 4 wickets. Tried to bring the ball around the legs of the batsman, trying for the leg cutter. This time off cutter, quicker one, chance of run out in the strikers end. Direct hit wicket in dedication. Ball missed the stump. Again they're going for the extra run in the form of overthrow. Outstanding running between the wicket. Vishwa and Dhanush are the two batsmen, are runs like a deer in the middle of the pitch. They went for the risky single. The fielder Zabir missed the stumps, and once they got one more opportunity to go for the another action. Ball him, clean him up. One more wicket is back into pavilion now for Friends Kudla. The match is not yet over. Match is not yet over here. Deadly Kankanadi are really not given of the match here. Just like I'm mentioning about, if the Deadly wanted to back in this game, some deadly performance required from their bowling. And Jabbar in dedication picking up a wickets here. 5th wicket of Friends Kudla is back into pavilion. 27 for the loss of 5 wicket. 4 overs completed. Now 2 overs remaining. Out of 2 overs they have to get another 9 runs to win this match. 12 balls, 9 runs required for the victory. Going to be anybody's game. Of course, the equation suddenly Friends Kudla looks like they are got a more opportunity than Deadly. But as seeing that the bowling performance of the Deadly Kankanadi, even that 9 runs, I think Friends Kudla have to work hard for that 9 runs in 12 balls, because they got lost to 5 wickets. If 1 wicket in this over in beginning, I think it's going to be a more interesting match. So bowler Shafiq, ball, lovely shot, beautifully played that one, but say to the hands of extra cover. What we are talking about the wicket here, I thought it's safely played towards the deep extra cover, but I think the fielder there in the deep extra cover making no mistake at all. Dhanush is back into pavilion. Friends Kudla have lost their 6th wicket. 27 for the loss of 6. This is a cricket, Gopi. Ye hai cricket. Abdul Rahman Bekur, one of the Hindi commentator from Kasaragod district, when he was having a mic in his hand, whenever that kind of situation, he will always pronounce that ye hai cricket. Ye hai cricket. Absolutely, this is a cricket. You cannot underestimate the cricket here. The Friends Kudla, after getting such a good position, they are little bit looks like underestimating it. You cannot underestimate cricket. Shafiq again now, looking for one more wicket here. Bowls, different bowling action. This time batsman so easily Vishwas, because that ball is in the fuller length delivery of Ali. Batsman quite easily finds the gap. Vishwas picked up a single. 28 for the loss of 6 wicket. Table correction, Tyagraj is the batsman. He's got a single then. The Ashwit is facing next delivery. This time a lovely cricket, absolutely good cricket there from Ashwit, intelligent cricket. Seeing that Shafiq is bowling with the flighted deliveries, so easily it's a little bit shuffled across the lineup, really bringing his bat, closing the face of his bat, and giving the direction towards a square-like region for a single. With the single, scoreboard moves on to 29 for the loss of 6 wickets. 7 required for the victory. Shafiq
Balls to Tyagaraj, full toss delivery, juicy full toss outside the run of half time. This is a situation, under pressure situation, even you are getting a full toss because of that little bit pressure situation. Even Tyagaraj, very good striker of the ball, just missing the opportunity to throw his bat, mistiming it and missed the opportunity as well. Shafiq bowls up. Oh, that was a big mistake. That was a big mistake there from Shafiq because the batsman little bit under pressure and he bowls a wide, so that they're very close to the victory mark. 6 required for the victory for Friends Kutar against Deadly Boys Kankanadi. Shafiq searching for the wicket, searching for the dotted delivery. Away from us, right now over wicket bowls, beautifully driven down to deep. Short conversion, going to be a chance here for the run out, but ball is just missed the stump, but umpire just warning. The bowler Shafiq is coming in the middle of the pitch. Look at it in the screen, big screen. Roland Pintos are always the very strict. You know exactly the fielder is coming right in front of him, so that warning has been given to the bowler Shafiq not to continue that mistakes in the remaining deliveries. Now equation 5 to get 7 deliveries remaining. This time, Ashwit so good in across the line of the delivery. Again, they're looking for the second, but they doesn't want to take any risk because losing one more wicket in the form of run out may be a little bit under pressure situation. That's why Ashwit is not interested here for the second run. They completed a single. So now last over remaining in the innings of Friends Kutar. They have to get another 4 runs to win this match. The matches looks to be very interesting, and if Deadly Kankanadi, the boys, if they wanted to back into this game, they need to have one good bowler who can bowl economically, otherwise one who can get the fix the wickets, because they lost the 6 wickets the opposition side. And just coming back to the Friends Kutar, I think Friends Kutar not really bothered about that 4 runs. They got 4 wickets in hand. Just seeing that Ashwit and Tyagaraj, they are not really taking that much of pressure in their mind, because mind game is so important. The mind is always your good friend when you are going to control that your mind. At the same time, the same mind definitely going to be your enemy if mind started to control you. That's a very important in the under pressure situation, the mind game always, because if how much you are technically very sound, that will not going to be counted whenever the under pressure situation. Only one thing is counting, that is how well you manage to handle the pressure situation, even it for the bowler or for the batsman or for the fieldsman as well. So from the far end, the final over going to start here. 4 runs required for the victory. Ashwit facing from the Venkatesh Bandari end. Leg spinner introduced, starts with the wide. This is not a good start for the final over. The pressure is coming down straight away from Ashwit, because it's 3 to get and 6 deliveries. The magical bowling required here for the bowler. Bowling, leg spin bowler bowls. This time, chance of catch that, and fielder missed it, and they're going for the second run. Well, they're coming for the third as well. Yes, it is. That's it. Enough. That's it enough for Kutar friends to win the match. And at last, it was a comprehensive victory in the end. They won the match by 4 wickets. Once it looks like this match is going to be a nail-biting finish. But I think the boundary which came from the bat of Chammu, which released the pressure from the Friends Kutar, because that boundaries came in a very, very crucial situation of the match. And now I think it's going to be a judgment of the man of the match. Who will going to be the man of the match? I think not a big issue here to choose who is going to be the man of the match. I think the one who dismantled the batting department of Deadly Kankanadi, at the same time, when the difficult condition is got a bat in his hand, handling the pressure very well, and it's none other than Ashwit of Friends Kutar, who judged as man of the match for his outstanding bowling figure of 2 overs.
for his outstanding bowling performance of 2 overs, no maiden, 5 runs, 8 runs, and he picked up 3 valuable wickets, economy rate of 4, and he scored a valuable 5 runs unbeaten. And that man of the match award in this presentation ceremony, and I think it's Tilak of Young Friends Urwa will going to present this man of the match award to Ashwit for his excellent performance. And we can see in our screen monitor Tilak, one who is the big architect of this Kudla Premier League of Young Friends Urwa, who is presenting this award of man of the match for Ashwit for his wonderful all-round performance. Congratulations, Ashwit. Thank you very much, Tilak. And now it's going to be one more good match is coming up here. Attackers Kudroli looks like they're in a little bit attacking mode, wearing their very attractive the uniforms. That was a white color, always going to the symbol of discipline. And might be here is a friendly atmosphere here. The happy face we can see in commentary box. The big supporter of Friends Kuttar, my friend, college mate, Mr. Ganesh, is here in commentary box. I request Suraj of Vijayalakshmi Cricketers. So before that match will going to commence, the quarter final of this prestigious Kudla Premier League season 6 will be start between YFC Krishnanagar versus Attackers Kudroli. And little bit correction, Attackers Kudroli versus Torpedoes Khana, the quarter final match. And toss is which is won by Torpedoes Khana, and they elected to field first against Attackers Kudroli. So one more good match is coming up, and for that I would like to once again welcome Gopi for the further explanation of the match in our national language, Hindi.
Right, the match starts. Torpedoes Khana will take over attack is Kudroli in the match number 5 of the day, and that match is now starts with Rija shot, starting in fact right in front of you. And the first ball of the match is now coming up. So the toss winner is Torpedoes Khana, and they elected to field. And because of that, the openers of attackers Kudroli are at the crease. So the first ball of the match is now coming up from the hands of Rilwan to the right-handed batsman Jawad, and now the non-striker batsman is Shafi, and the first ball of the match is now coming up. Right arm round the wicket. ये गेंद अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आते हुए गेंद को खेलना चाहा, गेंद पहुंची शॉट मिड विकेट की दिशा में, और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का, और इस एक रन के साथ रनों का सिलसिला यहां पर शुरू हो चुका है, और गेंदबाज के पैरों पर मेरे हिसाब से कुछ हद तक चोट आ चुकी है। और जहाँ तक सवाल है इलाज के लिए मरहम पट्टी का, फर्स्ट एड बॉक्स हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। ऑर्गेनाइजर या कमेंटेटर बॉक्स में चाहिए तो खिलाड़ी फर्स्ट एड बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ मरहम पट्टी अगर करनी हो So all first aid facility will available on commentator box। और जहाँ तक सवाल है इस वक्त लगभग अपने आप को खुद को सही पाते हुए फील्डर कंप्लीट 100% नॉट फिट बट ही इज ओके, और अपनी अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार रिलवान गेंदबाज। तो इस वक्त कुछ हद तक इलाज करवाने के बाद स्प्रे लगाने के बाद इस वक्त लगभग ठीक ठाक गेंदबाज रिलवान अपने ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए यह गेंद अच्छी गेंद थी, बेहतर गेंद थी। इस वक्त गेंद पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, आखिरी मौके पर आगे की ओर आकर गेंद को फील्ड किया था विकेट कीपर ने, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। एक रन बिना किसी नुकसान के पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। निस्संदेह एक ठीक शुरुआत की इस वक्त जरूरत अटैकर्स कुद्रोली को। ये गेंद इस बार टॉप एज, कोई फील्डर वहां पर नहीं, गली की दिशा में गेंद पहुंची, और इससे पहले की गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका एक रन प्राप्त करने का। 2 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका, 2 विदाउट लॉस इन द फर्स्ट ओवर। एंड गेंदबाज रिलवान इस वक्त तैयार, और स्ट्राइक लेते हुए जवाद। तो जवाद रिलवान की गेंदों का सामना करते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट। ये गेंद अच्छी गेंद, एक्स्ट्रा क्विकर गेंद, ऑफ स्टंप से बाहर की ओर निकलती हुई अपील हुई, इस वक्त नकार दिया अंपायर ने। सही तरीके से एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है, 3 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुँच चुका है बिना किसी नुकसान से। और जहाँ तक सवाल है अगली गेंद का, तो गेंदबाज अपने अगली गेंद लेकर तैयार।
दाहिने हाथ राउंड द विकेट, ये गेंद उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, एक रन पहुंची, एक रन मिलेगा स्क्वायर लेग पर जब तक फील्ड हो, और एक रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर बिना किसी नुकसान के। बेहतर ओवर यहाँ पर प्रगति पर गेंदबाज रिलवान का, और जहाँ तक अगली गेंद का सवाल है इस वक्त वो अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार। दाहिने हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, गेंद को मोड़ना चाहा, परिवर्तन के तौर पर कुछ हद तक धीमी गेंद, तेज तरीके से रन के लिए दौड़ पड़े, एक रन इस बीच पूर्ण हो चुका है 22 के रूप में, और इस एक रन के साथ एक बेहतर ओवर की समाप्ति हो चुकी है रिलवान की, और 5 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद बना चुका है अटैकर्स कुदरोली टोर्पेडोज खाना के खिलाफ इस मैच नंबर, आज के इस मैच नंबर 5 में केपीएल एडिशन 6 2021 के अंतर्गत, और निस्संदेह एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, और इस श्रृंखला का आज का तीसरा दिन का 5वां मैच यहां पर खेला जाता हुआ केपीएल कुडला प्रीमियर लीग एडिशन 6 2021 का शानदार तरीके से आयोजन किया। यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड और फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड ने अपने 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ देयर सिल्वर जुबली 25 दे आर ऑर्गेनाइजिंग दिस फैंटास्टिक टूर्नामेंट, फेस्टिवल ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट का त्योहार कहा जाएगा, जो कि यहाँ पर प्रगति पर, और जहाँ तक सवाल है गेंदबाजी का, वेंकटेश भंडारी एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त शुरू करते हुए, तौसीफ इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार, जवाद इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और तौसीफ ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। दाहिने हाथ के बल्लेबाज जवाद के लिए, ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, ठीक तरह से खेल नहीं पाए, और गेंद बैक टू द बॉलर की दिशा में पहुंची, और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला, स्कोर रुक चुका है 5 रन बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद लेग स्टंप से बाहर की ओर निकलते हुए और रन के लिए दौड़ पड़े, यशस्वीतम 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। वाइड का भी इशारा यहाँ पर हो चुका है, वाइड के रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त जरूरत है अटैकर्स कुदरोली को, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर यहाँ पर खड़ा करना है तो। और तौसीफ गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद इस बार धीमी गेंद, फ्लाइटेड गेंद को खेला जरूर है लेकिन मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, और पॉइंट पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 1 रन का इजाफा हो चुका है। 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 8 रनों पर बिना किसी नुकसान के। रन से ज़्यादातर सिंगल्स के रूप में बनते हुए, और जहां तक सवाल है विकेटों पर टिकने का, तो विकेटों पर टिकने की पूरी कोशिश ये दोनों बल्लेबाज करते हुए, ये गेंद उछालना चाहा, प्लम्ब इन फ्रंट घोषित, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 1 गिर चुका है। गेंद मेरे ख्याल से उनके बैक लेग पर टकराई थी, लाइन पर टिप्पा खाकर मिड स्टंप को कंसंट्रेट केंद्रीकृत कर कराते हुए, और अंपायर रोलैंड पिंटो को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई उन्हें आउट घोषित करने में। पहला विकेट गिर चुका है जवाद के रूप में, और 8 रनों पर पहला विकेट खो चुका है अटैकर्स कुदरोली। इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर, सेकंड इन प्रोग्रेस फॉर अटैकर्स कुदरोली। दोपहर का वक्त, कुल मिलाकर ऐसा कहना पड़ेगा क्रिकेट के लिए पर्याप्त वातावरण इस मैदान पर छा चुका है। बिल्कुल प्रखर धूप मैदान पर छा चुकी है, सूरज इस वक्त नीलाकाश तले अपने किरणों को मैदान पर फैलाता हुआ, गर्मी की तीव्रता इस बढ़ते हुए वक्त के साथ साथ यहाँ पर बढ़ती नजर आती हुई, और इस बढ़ती हुई गर्मी की तीव्रता तले एक बेहतरीन क्रिकेट श्रृंखला, एक शानदार प्रगति यहाँ पर करते हुए केपीएल 2021 एडिशन 6 के नाम पर, और इस वक्त निज़ाम का आगमन हो चुका है नए बल्लेबाज के रूप में। तौसीफ गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए अगली गेंद, ये गेंद स्वीप करना चाहा आखिरी मौके पर, और इस बीच कुछ ज़्यादा हद तक लेग स्टंप से बाहर की ओर नहीं निकल रही थी। सही गेंद घोषित अंपायर द्वारा, सही निर्णय, स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, दूसरा पावर प्ले ओवर यहाँ पर जारी। तौसीफ एक बार फिर से तैयार, ये गेंद बेहतर गेंद थी, इस बार गेंद लगभग सीधे स्टंप से ऊपर टकराई है, या फिर विकेट कीपर के हाथों से लगकर
स्टंप्सों पर टकराई, ये देखने वाली बात है, लेकिन मेरे ख्याल से गेंद सीधे स्टंप्सों पर नहीं टकराई थी और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित यहाँ पर स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। तौसीफ एक बार फिर से तैयार नमाज के लिए, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद ऑफ स्टंप पर आती हुई और बेहतर गेंद थी और इसी के साथ एक बेहतरीन ओवर की समाप्ति। वन मोर गुड ओवर इन Torpedoes Kana's point of view came to an end, and 2 overs after 2 overs, attackers Kudla are now still searching for the right track. 8 runs they scored for losing a single wicket after completion of 2 overs, and still in overall calculation it's going to be 4 overs remaining in the innings. 4 over का खेल अभी भी बाकी और देखना यह है कि इन बचे हुए 4 ओवर्स में अटैक कर रहा कुद्रोली के बल्लेबाज अपने बचे हुए 9 विकेटों की मदद से और कितने रन यहाँ पर बटोर पाते हैं। So next match will be played between Friends Kuttar versus Fast Tech Warriors. Will be the first quarterfinal of this competition. Friends Kuttar will take over Fast Tech Warriors, and because of that, I request the both teams players to please report to the stage immediately to make a sign in the official chart. और निस्संदेह बहुत ही एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर, जैसा कि आमतौर पर मेरे दोस्त सतीश कहा करते हैं, हमारे साथ इस श्रृंखला के मुख्य सूत्रधार द एंकर ऑफ दिस टूर्नामेंट श्रीमान तिलक गुरु हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कमेंटेटर बॉक्स में। हम निस्संदेह यहाँ पर उनका शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें इस श्रृंखला का हिस्सा बनने का मौका यहाँ पर प्रदान किया, बी अ पार्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। और यहाँ पर एक बेहतरीन मैच प्रगति पर और उस बेहतरीन मैच का मुआयना करते हुए श्रीमान तिलक गुरु जो कि इस श्रृंखला के पिल्लर माने जाते हैं, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद एक्स्ट्रा पेस के साथ ये गेंद पहुंची थी विकेट कीपर के हाथों में और इस बीच रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। बेहतरीन गेंदबाजी का सिलसिला इस वक्त जारी रखते हुए टॉर्पेडोज काना के गेंदबाज और इस वक्त अटैकर्स कुद्रोली के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बढ़ता हुआ हर गेंद के साथ और जहां तक करारे स्ट्रोक्स का सवाल है, चौके और छक्कों का, तो कोशिश रन से बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। यह गेंद बेहतर गेंद थी, अपील, लेकिन आखिरी मौके पर सोच विचार करते हुए घोषित किया यहाँ पर प्लम्ब इन फ्रंट और दूसरा विकेट यहाँ पर गिर चुका है 8 रनों के योग पर। तो विकेटों के ऊपर विकेट गिरते हुए इस वक्त और परेशानियां हर विकेट के साथ बढ़ते हुए अटैकर्स कुद्रोली के ऊपर। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे एक और मुख्य अतिथि श्रीमान भरत बिरवेर कुडला हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है और हम उनका तह दिल से राइट फ्रॉम द हार्ट यहाँ पर स्वागत करते हैं। यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड कुडला प्रीमियर लीग सर्व संगठक और सर्व क्रीडा प्रेमियों की ओर से आपका ऋतुपूर्वक स्वागत है श्रीमान भरत बिरवेर कुडला। तो इस वक्त वो आसीन मैच का मुआयना करते हुए और मैच इस वक्त आगे बढ़ता हुआ 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर बन चुके हैं। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। थर्ड ओवर इन प्रोग्रेस, इट्स 8 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। 2 गेंदें अभी भी बाकी। अफरीद नए बल्लेबाज का आगमन इस वक्त हो चुका है और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए अफरीद के लिए। ಅಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಸೀಮಾ ರೇಖೆ ಒಳಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ। ಅಲ್ಲಿ क्वाइट रिलैक्स्ड पर्सन आई थिंक सो। इस बार गेंद को खेलना चाहा और जहां तक का सवाल है रनों का, तो रन इस वक्त मिलेगा 1 और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। और तीसरा ओवर यहां पर प्रगति पर। तो अंतिम गेंद इस ओवर की लेकर तैयार गेंदबाज
रिलवान गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप करना चाहा, चूंकि बेहतरीन तरीके की विकेट कीपिंग और यहां पर ये विकेट गिर चुका है. एब्सोल्युटली इंटेलिजेंट पीस ऑफ विकेट कीपिंग मेड बाय विकेट पर. जैसे ही स्ट्रोक्स को खेलने के बाद चूके थे बल्लेबाज, क्रीज से बाहर निकल चुके थे और इसे देखते हुए विकेट कीपर ने तेजी के साथ विकेट यहां पर चटका दिए और इसी के साथ ये तीसरा विकेट गिर चुका. 3 ओवर की समाप्ति, हाफ द वे मार्क. स्टिल the problems are continuing for the batsmen of attackers Kudla. They managed to score only 9 runs on the board for losing 3 top orders wicket and still they are searching for the right track. और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, मेरे अजीज दोस्त जनाब अब्दुल समद को राज्य भाषा कन्नड़ में अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आगे का अखोदिकाल सुनाने के लिए. आइए जनाब अब्दुल समद, धन्यवाद, थैंक यू. ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. ಈ ದಿನದ 4ನೇ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅವರ ಆ ತಂಡದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 9 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು 3 ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ವಿಕೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಬಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಈ 18 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 1 ಮಾತ್ರ ಇತರ ರನ್ಗಳ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರನ್ ಬಂದಿದೆ. 4ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಸೆಗಾರ ಅನಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು, ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ. ಚೆಂಡು ಆಟಗಾರನನ್ನು ವಂಚಿಸಿ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರನ್ನು ವಂಚಿಸಿ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10ಕ್ಕೆ ಏರ್ತಾ ಇದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. 2 ಅಂಕೆ 10 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಹಾಗೂ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಈ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ, ಇನ್ನೋರ್ವ ಸೂರಜ್ ಇಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಅನಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಅಫ್ತಾಬ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಇಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೈದಾನದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಈಗ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರಿಂದ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಆದರೆ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯದೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ್ರೂ ಆ ಬೆಲ್ಸ್ ಇನ್ನು ಆ ವಿಕೆಟಿನಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಜಾರಲಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸುಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೇರ ಏಟು ಸ್ಪರ್ಶ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ವಿಕೆಟಿಗೆ, ಆದರೂ ಬೆಲ್ಸ್ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಂತಿರೋದು ಒಂದು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂಶ ಇಲ್ಲಿ ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. 12 ಬಂದಿದೆ, 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಅನಿಲ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೊಳ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಫ್ತಾಬ್. ಈ ಬಾರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ದಂಡನೆ ಅಫ್ತಾಬ್. NFC ಅಂಗರಗುಂಡಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡುವ ಈ ಯುವಕ ಇಂದು ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋದರು. ನಿನ್ನೆಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಾಫಿ ಈ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಪರವಾಗಿ ಆಡಿ 2 ಸಿಕ್ಸರಿನೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆದಿದ್ದರು ಶಾಫಿ. ಇಂದು ಶಾಫಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಫ್ತಾಬ್ರವರ ಆಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅನಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತುದಿಯಿಂದ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಅನಿಲ್ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. ಇದೇ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ಎಸೆತಗಳಿಂದ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಕರ್ಷಕ ನಿಲುವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದರು. 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 7 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನಿಲ್ 7 ರನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ತನ್ನ
3 ವಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಅನಿಲ್, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೇರ ಗುರಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಈ ದಿನ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇದೆ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರು, ಸಹಕರಿಸುವವರು, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವವರು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಹಿಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಓರ್ವ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರನಾಗಿ ಸಲೀಂ, ಅವರ ಸಹೋದರ ಉಮರ್ ಶಮೀಮ್, ಶರೀಫ್ ಕೊಪ್ಪರ್ಪಾಡಿ, ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಶೀರ್, ಮಕ್ಸೂದ್ ಇವರಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಆಟಗಾರರು ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಈ ಹಿಂದಿನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ನೆನಪು ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಕಾಣ. ಈ ಕೋವಿಡ್-19 ಎನ್ನುವ ಪೆಡುಂಬೂತದ ಮುಂಚೆ ಆ ಇಡೀ ಮೈದಾನ ಕತ್ತಲಿಂದ ಆವರಿಸಿರುವಾಗ ಈ ಪಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಆ ನೆನಪು, ಆ ಆಟ, ಆ ಛಲ, ಆ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿತೋ ಮತ್ತೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು KFC ತಂಡದ ಎದುರು ಫೈನಲ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನವಾಗಿತ್ತು ಈ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಎಸೆತ ಬಹಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಫ್ತಾಬ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡಿಗೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ, ಬಹಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ ಇದು. ಚೆಂಡು ನೇರ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟ, 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಇದು 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಓಟ, ಇದು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ, ಇದು ಮಿಂಚಿನ ಓಟ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ನಿಲುವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸ್ತದೆ ಅನ್ನುವ ಆ ನಿಖರತೆಯ ಓಟ ಇದು. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ 2 ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾ 17 ರನ್ನಿನಲ್ಲಿದೆ. 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತೌಸೀಫ್ ಮತ್ತೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡದ ಉತ್ಸಾಹಿ ಚಿಲುಮೆ ಈ ತೌಸೀಫ್. ಈಗ ವೀಕ್ಷಕರ ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದ್ರು. ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಟಗಾರ ಜಾಫರ್ ರವರಿಗೆ. ಜಾಫರ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 3, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಫ್ತಾಬ್ ರವರಿಗೆ ತೌಸೀಫ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಬಾಣಂಗಳದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಫ್ತಾಬ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದಾಗಿತ್ತು ತೌಸೀಫ್. ಹೊಡೆತದ ಭಂಗಿಯು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಹಂಗಮ ನೋಟವನ್ನು ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ 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 ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚಿನೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 10 ನಂಬರ್ ಬನಿಯಾನದಾರ 5 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 18. ಇದು 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮಿಸಿ ಸರ್, 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ತೌಸೀಫ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯವಾಗಿದ್ದು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಬಹಳ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಚೆಂಡೆಸೀತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್. ಕೇವಲ 19 ರನ್ನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ಅದೇ ರಾಗ, ಅದೇ ಹಾಡು, ಅದೇ ತಾಳ. ಇಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ತಾಳ ಬದಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ತಂಡ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಡುವ ತಂಡ. ಇದು ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ಪಂದ್ಯವಾದರೂ ಆ ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖ ತಾಪಮಾನ ಇದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದ ತಂಡ ಅದು ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ತೌಸೀಫ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ತೌಸೀಫ್ ಅವರು ಸಮಗ್ರ ಎಸೆಗಾರ. ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಧೃತಿ ಕೆಡದೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನೀಡುವ ಎಸೆತಗಾರ ತೌಸೀಫ್. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ತೌಸೀಫ್ ಹೊಸ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಚೆಂಡನ್ನ ದಂಡನ್ನ ಒತ್ತಿದ್ರು. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಹಿಡಿತ ಎಸೆತ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನಿಂದ. ಇದು 5ನೇ ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 22ರಲ್ಲಿದೆ. 5 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನನ್ನಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ತಂಡ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾನೆ ಅಕ್ರಮ್, ಆ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಟಗಾರ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಕೆಟ್ ಓಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ತಲ್ಲೀನ ಅಕ್ರಮ್, ಭಾಳ ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರನ್ನನ್ನು ಪೇರಿಸುವವರು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಸಮಾಲೋಚಿಸಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 10 ರನ್ನುಗಳು ಅಂದರೆ 32 ರನ್ನುಗಳು 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕರ, ಒಂದು ಗೌರವಾನ್ವಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಹುದು ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಸಾಧ್ಯವೋ? ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಎಸೆತಗಾರ ಅಸ್ವದ್ ಎಸೆಯುವ ಆ 6 ಎಸೆತಗಳ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ 10 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ನಮಗಿದ್ರೆ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಇಂದು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವ ಆ ದಿಗ್ಗಜರು ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರ ಲೆಗ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು, ಇದು ಕೊಡುಗೆ, ಇದು ಬಹುಮಾನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಸ್ವದ್ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಎಸೆಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು 22. ಇದು ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾರೆ ಅಸ್ವದ್, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಬಂದಿದೆ ಈಗ 25 ರನ್ನುಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. 25. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಅಸ್ವದ್ರವರಿಂದ. ಕುಳಾಯಿ ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಆಟಗಾರ ಈ ಅಸ್ವದ್ ಈಗ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಚಿಕ್ಕದು, ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಭೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅಸ್ವದ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಕರಾರುವಕ್ಕಾಗಿ ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಲೆಂತ್ ಎರಡನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಅಸ್ವದ್ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 25 ಬಂದಿದೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವದ್. ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಚೇತನ, ಇದು ಓರ್ವ ತಂಡದ ಚೇತನ. ಯಾಕಂದರೆ ನೋ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಕೂಡ. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಕೊಡುಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ವರ, ಮತ್ತೊಂದು ಬಹುಮಾನ ಇದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್ ರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸುವ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನಂತೂ ಜಿಂಕೆಯಂತೆ ಜಿಗಿದು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಆಟಗಾರ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಚೇತನ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡೆಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆಟಗಾರ ಜಾಫರ್ ಈ ಫ್ರೀ ಹಿಟ್ಟಿನ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೋ, ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಯಾಕಂದರೆ 27 ಮಾತ್ರ ತಂಡದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಎಸೆಗಾರ ಮತ್ತೆ ಅಸ್ವದ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಇದು ಅಸ್ವದ್. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2 ಓಟವು ಕೋಡಿ, 2 ಓಟವು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ ಈ 2 ಆಟಗಾರರಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಫರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸುಹೈಲ್. ಜಾಫರ್ ಹಾಗೂ ಸುಹೈಲ್ ರವರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇದೆ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ, ಜಿಂಕೆಯ ಜಿಗಿತ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅಸ್ವದ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಅದನ್ನು ವೈಡ್ ಬಾಲ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ವದ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕೊನೆಯ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 9 ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ಕೇವಲ
3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 9 ಬಂದಿದೆ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗಂತೂ ಹೊರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಸ್ವದ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಚುಕ್ಕಿ ಚೆಂಡು. ಮತ್ತೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ. ಓರ್ವ ಸುಭದ್ರ ತೀರ್ಪುಗಾರ, 35 ವರ್ಷದ ಇತಿಹಾಸವುಳ್ಳಂಥ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ, ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಗ್ರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವಂಥ ಓರ್ವ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಹೈಲ್ ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಆಟಗಾರ ಜಾಫರ್ ರನ್ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 31 ಬಂದಿದೆ, 6 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ಕೊನೆಯ 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ 1 ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಇದೆ. 12 ನಂಬರ್ ಜರ್ಸಿ ಬನಿಯಾನದಾರ ಕ್ರೀಸಿಗಿಳಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಕುದ್ರೋಳಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. 9 ಬಂದಿದೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 9 ಬಂದಿದೆ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಗೌರವ. ಉಸಿರನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಆ ತರುಣರಿಗೆ ಉಸಿರು ಸಮಾಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಂತೂ ಒಂದು ಬೌಂಡರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ವದ್ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಆಟ. ಒಂಟಿ ಅವಳಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ 33 ಬಂದಿದೆ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 34ರ ಸವಾಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಈ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವ ಹಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಇನ್ನು 6 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಬಿಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಅಟ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಕುದ್ರೋಳಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅವರ ಹಿರಿಯ ಆಟಗಾರರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕಿದೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ತಮ್ಮ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್. So thank you very much, Janab Abdul Samad Khatipalla, and outstanding bowling performance from Tarpados Khana, just justifying the decision of their captain after winning the toss, elected to field first. After that, I think just like my friend Samad Khatipalla is just mentioning about Tarpados Khana having some great fillers behind them, and Salim of Tarpados Khana, one who really the architect and one of the most the popular name in Tarpados Khana, the former cricketer as well, is just giving guidance for the young players for the side of Tarpados Khana and leading from the front and having his suggestion. Certainly Tarpados Khana looks to be the team they wanted to become the finalist of this cricket tournament, but attackers Kudrodi. And just like their name is attackers, they need to have some attacking bowling performance if they wanted to win the match, because they knows that they are not quite able to perform from the bat, didn't got enough runs on the board. But if bowls well and fields well, they can give some polish off for the batsmen of Tarpados Khana.
For that, I think just like I mentioned about some attacking bowling is required here from the attackers Kudroli, and wait and see how the boys of Kudroli going to attack here of the batsmen of Torpedoes Khana. A friendly atmosphere out here in commentary box, just like my friend Gopish mentioning about the architect of this cricket tournament, Tilak, enjoying this match, watching in a commentary box along with his friend Bharat of Birber Kudla and other some dignitaries out here in this commentary box. It's always going to be a very good atmosphere, especially in a commentary box. It was good. It's got a very good view. You will never get anywhere when you are watching the cricket tournaments. When you are sitting in a commentary box in height, the first floor, it's going to be something special, and that's why it's always going to be the fantastic view of this cricket ground whenever watching the cricket tournament in this pavilion of UCG cricket ground. Thanks to UFCA, Urwa Friends Cultural Association, the providing such a fantastic facilities here, and on behalf of all the cricket lovers, once again we would like to give a special thanks to all the administration of this time first ball itself. Akram, just like his name, is just started to open up. This is not the line you need to bowl to the batsman like Akram, and it's just like this name. When I want to remember the Wasim Akram, the former cricketer of Pakistan, the attacking left-hand batsman, just like that. Akram of Torpedoes Khana, always enjoying the game of cricket when he was in when he was in bowling, when he was in field, and just ball dipping down the leg stump and batsman taking a full advantage of that one. Right arm over the wicket, balls far away outside the line of off stump. Wide call by umpire. Straight away the bowler started to feel the pressure, saying that the one attacking mode of Akram. The previous match also Akram played some attacking batting in the power play overs. This time again in the other end, just up and over to the deep extra cover boundary for 4 runs. Even the fielder chasing that one, but ball once again winning the race against that fielder. Absolutely is in a tremendous touch. The one delivery which is down the leg and batsman frees his arm. Next one is a little bit outside the line of half time with his offer to the batsman, and he didn't have ample pace in his bowling and didn't got adequate field for that, and he fails the penalty for that. 2 boundaries in that over, and scoreboard is jumped into 9 on the board without loss of any wicket. 7 balls, that was a good delivery. That was the line you need to bowl in the first delivery itself, because that line definitely going to be very handy when you are bowling in the power play overs, when you are bowling against the strength of Akram. Sawan bowling away from us with the short run up. Right arm over the wicket, passes umpire Suraj of Vijay Lakshmi cricketers. This time again, one more big shot. This time, exquisite timing. This is an exquisite timing and imperious lofted extra cover drive coming from the blade of Akram. Look at that one in replay, stretching his front foot. If any youngster watching how to play in the power play overs, this is a one perfect example. Just using that the fielding restriction quite well by Akram, saying that there is no protection in the deep extra cover. Lofted that one, delightful stroke, and score jumped into 13 on the board. Again, a wrong line down the leg stump. Lucky that batsman didn't got enough bat onto that. Otherwise, Akram can dispatch that one out of the park. But he's just a little bit bad in the negation. So one more single is added to total scoreboard, moves on to 14 on the board without loss of any wicket. The flying start here for Torpedoes Khana. 5th time in this over. Sawan bowling round the wicket to the left hand batsman. Down the leg stump going further away so that it's going to be a wide. Jalal, one more attacking batsman for Torpedoes Khana. The very good combination of 2 attacking batsmen, left and right combination. This time appeal for leg before wicket. Going down the leg stump, like by call by umpire. One more addition to total. With the addition of that single, scoreboard moves on to 16 on the board without loss of any wicket here in over number first completed, and almost looks like Torpedoes Khana, they wanted to finish it off quickly,
because attackers, I just mentioned the attackers Kudroli, they need to attack some wickets in the first over, but this is something different is happened in the middle. The batsmen are attacking the bowlers, especially the Akram got three fantastic boundaries, one towards the deep mid wicket, two towards the deep extra cover region. One is most glorious stroke came from the bat of Akram, and score is 16 without loss of any wicket here in over number first completed. Another 18 more runs required for the victory. In my left, along with Gopi, we are having our close friend, one more close friend, the legend cricketer, the Babu of Gori Young Boys, just enjoying the game of cricket, not only this tournament, but whenever there's a very good tournament is here in Urwa cricket ground. He is one of the best spectators as well. And the legendary cricketer, the Babu, just watching the youngsters, and he want to see how the attackers will going to bounce back. And here is from the Venkatesh Mandarian. This time a big wide. The batsman seeing the line of the delivery. And Jalal, nothing much to do with the delivery, left that one rightly, so wicketkeeper missed it. And batsman cross off for another run. 1+1, 2 more to the total, 18 on the board, without loss of any wicket in the over number second in progress. Sahid Afridi is the bowler. One more run added to total, 19 on the board. Sahid Afridi and Boom Boom Afrid, the former Pakistan, the batsman, attacking batsman, the name. Down the leg stump, quite nicely flicks that on off his legs down, sink down to fine leg for a single. Scoreboard moves on to 20 on the board. Another 14 more runs required for the victory. Meanwhile, I request the two teams captain, please go for toss immediately for the next match. Looks like it's a fast tech Warriors takes on a Friends Kuttar for the next match. Sahid Afrid. This time lovely execution there from Izaz Lirbikas Jalal to pick the single down to short square leg region. In the middle of the deep square leg and short square leg, the fielder able to collect that one, and batsman got ample time to collect one more single. 22 on the board. Another 12 more runs required for the victory for Tarpodos Khana. And Sahid Afridi from the Venkatesh Mandarian. Right now over the wicket balls. This time again Akram. No, exactly, no need to panic at all. After getting 3 boundaries, he quickly realizing that after getting that 3 boundaries, I think no need to panic at all. They wanted to finish off things without losing a wicket. 23 already on the board. Now 11 more runs required for the victory. Sahid Afridi balls. This time again Jalal going against the line, that is trying to hit the ball towards the onside region, but a slower one there from Sahid down at outside the line of off stump, so batsman completely missed out and there is no chance of any run at all. Sahid bowling from the Venkatesh Bandarian, balls big wide, one more addition, 24 on the board. The bowlers of attackers Kudroli is really struggling in this match. Attackers Kudroli actually they played very well against Jigarmine Mangalore yesterday, and they played against SS Chocobito as well very well. But today the performance is not really up to the mark. One more single. 25 comes up here for Tarpados Khana. 25 without loss of one wicket. Just a 2 second over in progress. They wanted to finish the match as quick as possible. 9 to get. Now one fielder from cover point region coming back to the back point region. Deep back point coming towards the deep cover region, cover point. Short mid off, short extra cover. Balls, one more wide. The problem continues here for Sahid Afridi. Scoreboard moves on to 26 now. Just 8 more runs required for the victory. Just 8 more runs. Akram back on strike. Facing Afridi. Slower one. Appeal for leg before wicket. Umpire says it's it's going to miss the off stump because of that leg cutter ball by Afridi. So
One more big over is completed here, and they're cruising towards a victory. Torpedoes Ghana 27 they got without loss of any wicket. Now just 7 more runs required for the victory, and they have got another 4 overs to spare. 4 overs they have to get 7 runs. Looks like it's just a formalities left in this game, unless attackers could really any bowler have able to pick some wickets. The magical bowling is required to back into this game. Otherwise, I think Torpedoes Ghana they will going to definitely going to win the match quite easily. And both the batsmen are so composed in this 2 overs, and bowlers of attackers not able to give any kind of trouble for the batsman. This time Akram tried to push that one towards a cow point region, weekend area, but because of that extra turn and extra bounce, he just managed to push that one mid-off region, and there is no chance of any run. Again, bowler bowls. Akram went for the big shot, not quite getting a hold of that strokes properly. Ball went towards a short to mid-wicket region with the addition of that single scoreboard moves on to 28 on the board. Now 6 more runs required for the victory. Just one big hit can 1 6 definitely going to be for Torpedoes Ghana is enough for winning this match. Nizam bounced Jalal, appeal for leg before wicket. Umpire Suraj not convinced. Ball is going down the leg stump because he's bowling wide off the crease. So that one more addition to total scoreboard 29 on the board. Now 5 more runs required for the victory. Nizam bowls. Akram went for the big shot. Tried to play the reverse sweep, missed it completely. And the wicketkeeper half-hearted shot for the caught behind, and rightly so. Umpire just denying the appeal from the bowler and the wicketkeeper. This time that was a mighty stroke. That will going out of the park. Definitely that will going to go out of the park. One of the biggest sixer of this. And Akram finished the match in a style with a huge 6 going out of the ground. And meanwhile now it's a time to announce a man of the match. And man of the match award, Bharat of Kudla will going to present this man of the match winner. And wait to see who will going to be the man of the match here. So man of the match goes to the quick fire 24 runs coming from the blade of Akram. And Akram was judged as the man of the match, and I request Akram of Torpedoes Ghana, please come and collect your man of the match from our chief guest Bharat of Kudla will going to present this man of the match award to Akram for his excellent and entertainment innings coming from the bat of Akram. And now is Bharat presenting a cap to Akram, and he deserves this man of the match. Thank you very much. Congratulations Akram, and thank you very much Bharat for coming here and spending your important time in this Kudla Premier League Season 6. And that's it from the presentation ceremony. And now we are coming back to the another quarter final. Friends Kutar takes on Fast Tech Warriors. YFC Krishnanagarla.
So happy faces here for Torpedoes Khana, comprehensive victory here, and we can see that was happy faces of Torpedoes Khana and some of the legend players. Salim must be pleased with the performance, and even his brother Shamim might be happy man, and at the same time we can see some faces. Bashir is there, and Sharif, Maqsood, all Usman as well, and they were happy to see this team is winning very comprehensively, and thank you very much all the supporters of Torpedoes Khana and legend player of Torpedoes Khana to coming here, and hard luck attackers Kudroli, and thank you very much for you as well for taking part in this cricket tournament. On behalf of organizer, we would like to give special thanks to attackers Kudroli by coming here and taking part in this cricket tournament and performing here. The better luck for the next time. So now big match. Friends Kuttar will going to take the challenge of the Warriors of Fast Tech. And the Fast Tech Warriors, they really played like warriors in the last 3 matches. They came into semi-final, quarter-final, and even Friends Kuttar as well. They played a very good game of cricket and they came into the quarter-final of this prestigious cricket tournament. And we are hoping some good match here between these two. And wait and see who will going to become the semi-finalist of this the Group A. That was a local team, and for that, before that match will go into commence, it's time to ask Gopi to take over the microphone after that lunch break. Welcome, Gopi. धन्यवाद सतीश. तो the first quarterfinal match of this tournament, KPL 2021 edition 6 is now coming up. Fast Tech Warriors will face Friends Kuttar, and news is here from the center that the skipper of Friends Kuttar, after won the toss, he elected to field first, and because of that, the openers of Fast Tech Warriors at the crease are Ashraf and Imran, and the bowler is Ashwit. He is now bowling to bowl the first delivery of the match. तो इस तरह से पहला क्वार्टर फाइनल मैच इस श्रृंखला का शुरू होने जा रहा है, और जहां तक सवाल है स्ट्राइकर एंड का, तो अशरफ इस वक्त स्ट्राइक लेते हुए, अश्वित गेंदबाज इमरान माफ कीजिए स्ट्राइक लेते हुए, अशरफ नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, और गेंदबाज अश्वित वेंकटेश भंडारी मुंबई एड की ओर से पहली गेंद लेकर तैयार। धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है मैदान से, सूरज जब बादलों की आड़ में इस वक्त छिप चुका है, लेकिन क्रिकेट के लिए एक पर्याप्त वातावरण यहाँ पर मौजूद। पहली गेंद फुल टॉस, गेंद को हल्के से स्वीप कर दिया, गेंद पहुंची इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर और शॉर्ट मिड विकेट के दरमियान, जहाँ पर गेंद को फील्ड कर लिया गया, और इस बीच 1 रन का इजाफा यहाँ पर जो हो चुका है, 1 रन 90 रन से नुकसान के सेमीफाइनलिस्ट इस श्रृंखला के पहले सेमीफाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के संघर्ष यहाँ पर शुरू हो चुका है। फर्स्ट टेक वॉरियर्स और फ्रेंड्स कुत्तार के बीच दोनों संतुलित टीमें, और जहाँ तक विजय की संभावनीयता का सवाल है, मैं समझता हूँ इट्स गोइंग टू बी 50-50 एट दिस सिचुएशन। और गेंदबाज अश्वित इस वक्त गेंदबाजी एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट, इस बार अशरफ के लिए ये गेंद हल्के से गेंद को पैडल स्वीप कर दिया, स्टंप्स को कवर करने के बाद, और आखिरी मौके पर जब तक शॉर्ट फाइन लेग पर गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 2 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के, जबकि उनकी पारी का पहला ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है। दोपहर के 2:50 यहाँ पर बच चुके हैं। इस मैच के बाद 2 मैचेस और खेले जाएंगे, द्वितीय क्वार्टर फाइनल और ए पूल का पहला सेमीफाइनल मैच, और आज शाम को पता चलेगा कि कौन सी टीम पहले फाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश कर चुकी है फाइनल में। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाला, बैकवर्ड स्कोर लेग सीमा रेखा से अंदर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन तरीके से गेंद को इस वक्त निकाल दिया था बल्लेबाज ने स्वीप करते हुए, और काफी लंबा दौड़ लगाने के बाद एक बेहतरीन फील्डिंग के जरिए गेंद को जब तक फील्ड किया जाता,
2 रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और इन 2 रनों के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 4 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 4 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। और इमरान इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए इमरान बल्लेबाजी करते हैं, माफ़ कीजिए, और ये गेंद इस वक्त ऑफ स्टंप से बाहर, नो बॉल का इशारा और नो बॉल के इस रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 5 रनों पर। अश्वित गेंदबाजी इस वक्त करते हुए फ्री हिट का इशारा इस वक्त हो चुका है। केवल 2 मात्र खिलाड़ी 20 गज के दायरे के बाहर तैनात। और अगली गेंद के लिए तैयार। फील्डिंग में कुछ हद तक का जमावट यहां पर चलती हुई, तो कुल मिलाकर आज का ये छठा मैच यहां पर शुरू हो चुका है पहले क्वार्टर फाइनल के तौर पर। और अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद स्वीप किया इस वक्त, नॉट क्वाइट मिड विकेट, गेंद पहुंची शॉर्ट मिड विकेट पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। 6 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, फास्ट ट्रैक वॉरियर्स को एक बेहतर शुरुआत की यहाँ पर ज़रूरत, अगर उन्हें एक बेहतर स्कोर फ्रेंड्स कुत्तार के सामने खड़ा करना है तो। और इस बीच अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद उछालना चाहा, गेंद पहुंची इस वक्त गली की दिशा में। 1 रन का इजाफा हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। 7 विदाउट लॉस एट द स्टार्ट ऑफ द सेकंड ओवर। इनफैक्ट धूप एक बार फिर से मैदान पर प्रकट हो चुकी है। सूरज जब बादलों की आड़ से निकलकर अपने प्रखर किरणों को मैदान पर फैलाता हूँ। और इस बीच अश्वित गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, रिवर्स शॉट खूबसूरती के साथ गली की दिशा में, नॉट मोर देन अ सिंगल, एंड द स्कोर बोर्ड इज नाउ मूविंग अप टू 8 नाउ विद दैट सिंगल एंड द फर्स्ट ओवर हैज बीन केम टू एन एंड। तो पहले ओवर के बाद 8 रन बन चुके हैं बिना किसी नुकसान के। 8 विदाउट लॉस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट ओवर। फास्ट ट्रैक वॉरियर्स मेड अ स्टेडी स्टार्ट एंड नाउ इन ओवरऑल कैलकुलेशन इट्स गोइंग टू बी 5 overs remaining in their innings. तो दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ होता हुआ और गेंदबाज रक्षित इस वक्त दूसरा ओवर प्रारंभ करते हुए और इस बीच सामना करने के लिए तैयार इमरान। तो रक्षित नई ओवर की पहली गेंद, फील्डिंग में जमावट करते हुए ओवर की पहली गेंद लेकर इस वक्त तैयार दाहिने हाथ के बल्लेबाज इमरान इस वक्त सामना करते हुए रक्षित की गेंदों का। ये गेंद हल्के से गेंद को स्टीयर करना चाहा, गेंद पहुंची शॉर्ट थर्ड मैन पर, रन से स्पीड बल्लेबाज को नहीं मिला और बिल्कुल बेहतर गेंद थी अलोंग द कार्पेट, बिल्कुल ज़मीन के सहारे आती हुई और गेंद को खेलने के प्रयास में चूंकि शॉर्ट थर्ड मैन पर गेंद फील्ड कर ली गई, रन से बल्लेबाज को नहीं मिला। स्कोर रुक चुका है 8 रनों पर, जबकि दूसरा ओवर उनकी पारी का यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और गेंदबाज रक्षित एक बार फिर से तैयार दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। ये गेंद ऑन साइड पर स्वीप करना चाहा, नॉट क्वाइट मिड विकेट, 1 रन मिलेगा। शॉर्ट मिड विकेट और शॉर्ट स्क्वायर के दरमियान जब तक गेंद को फील्ड किया जाता 20 गज के दायरे के अंदर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। रन्स सिंगल्स के रूप में अभी भी बनते हुए
और निश्चित रूप से अपने टीम के रन की गति को बढ़ाना है तो फास्ट टेक वॉरियर्स के बल्लेबाजों को कुछ करारे स्ट्रोक्स चौके और छक्के के रूप में लगाने होंगे और उनकी पूरी कोशिश यहाँ पर करते हुए फास्ट टेक वॉरियर्स के बल्लेबाज दाहिने हाथ ओवर द विकेट रक्षित। ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद थी, गेंद सीधे टकरा चुकी है लेग स्टंप पर, थोड़े से सफल होते हुए गेंद को साइड पर उछालना चाहता, गलत लाइन पर खेल गए और गेंद उनके बल्ले को वंचित करती हुई बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ लेग स्टंप पर जा टकराई, गिल्ली बिल ऑफ होता हुआ और इसी के साथ यह पहला विकेट यहां पर गिर चुका है। अशरफ की पारी समाप्त, 9 रनों पर पहला विकेट गिर चुका है। इट्स 9 for 1। तो इस वक्त नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, तंजीम नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर मौजूद और वो इस वक्त सामना करेंगे रक्षित की गेंदों का। जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूँ, एक साझेदारी पार्टनरशिप की इस वक्त सख्त ज़रूरत है फास्ट टेक वॉरियर्स का। 9 रनों के योग पर वो अपना पहला विकेट यहाँ पर खो चुका है और गेंदबाज रक्षित इस वक्त एक बेहतर लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद चिपकी है, इस वक्त एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद जाती हुई वाइड लॉन्ग ऑफ पर, जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 2 अंकों पर, यानी 10 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर रक्षित एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए और इस बीच इमरान स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट क्रीज के कोने से गेंदबाजी करते हुए स्वीप किया इस वक्त शॉर्ट स्क्वायर लेग की दिशा में और मिसफील्ड इस बीच बैकअप होता हुआ, लेकिन दूसरा रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। गेंद को फील्ड करने के हड़बड़ाहट में गेंद से उन्होंने अपनी नजरें हटा ली थी और गेंद जब तक बैकअप हुई थी स्क्वायर लेग पर बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। इस 1 रन के साथ 11 रनों पर स्कोरबोर्ड पहुंच चुका है बिना किसी नुकसान के। 11 for the loss of 1 wicket in the over number 2 in progress। रक्षित दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद एक्स्ट्रा क्विकर, बेहतरीन स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ की दिशा में, वहां पर मैं समझता हूं फील्डर मौजूद होंगे, बेहतर थ्रो स्टंप्सों पर और 1 रन के साथ दोनों बल्लेबाज संतुष्ट। 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की समाप्ति के बाद और मैं समझता हूं इन 2 पावर प्ले ओवर में बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन फ्रेंड्स कुत्तार के गेंदबाजों ने दिया। सिर्फ 12 रन उन्होंने इन बचे हुए 2 पावर प्ले ओवर्स में प्रदान किए और 1 विकेट भी उन्होंने प्राप्त किया। तो 2 ओवर के बाद 12 रन बन चुके हैं और 4 ओवर का खेल यहाँ पर बाकी और देखना है कि इन बचे हुए 4 ओवर में फास्ट टेक वॉरियर्स अपने टीम की रन की संख्या को किस बुलंदी के पर्वत पर ले जा पाते हैं। और गेंदबाज जगदीश इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए तंजीम स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। तीसरा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ क्वाइट क्रिकेट हमें यहां पर देखने को मिल रहा है। फास्ट टेक वॉरियर्स के बारे में करारे स्ट्रोक्स चौके और छक्के का जो दर्शक इस वक्त इंतजार कर रहे हैं वो छक्का या चौका इस पारी में नहीं लगा है अब तक फास्ट टेक वॉरियर्स की पारी में। हालांकि कोशिश जरूर जारी है बल्लेबाजों द्वारा करारे स्ट्रोक्स लगाने की, लेकिन सफलता अब तक उनके पक्ष में नहीं आई है और एक बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए गेंदबाज फ्रेंड्स कुत्तार के और 2 ओवर के खेल के पश्चात फील्डिंग के प्रतिबंध यहां पर हट चुके हैं। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्डर जो कि मैदान पर इस वक्त छा चुके हैं। तीसरा ओवर प्रारंभ होता हुआ गेंदबाज वेंकटेश भंडारी एंड की ओर से जगदीश गेंदबाजी यहां पर शुरू करते हुए और स्ट्राइक इस वक्त लेते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज तंजीम।
बेहतर गेंद, गेंद को ड्राइव किया इस वक्त फुल टॉस गेंद थी, फील्डर काफी पीछे तैनात, एक रन मिलेगा, थ्रो पहुंचा स्टम्पसन पर और आखिरकार बल्लेबाज एक रन के साथ संतुष्ट 13 एक विकेट के नुकसान पर। कम से कम 40 का आंकड़ा, एटलीस्ट दे हैव टू क्रॉस द मार्क ऑफ 40, 40 का आंकड़ा कम से कम प्राप्त उन्हें पार करना होगा। तो इस बार दिस इज एन गॉन, नो इनफैक्ट इट जस्ट पुश दैट वन इनसाइड द फेंस। तो बेहतरीन फील्डिंग वहां पर और गेंद को जिस तरीके से उछाला था, मैं इस वक्त देखना चाहता हूं मॉनिटर पर कि किस तरह से इस गेंद को ढकेला गया था सीमा रेखा के अंदर। गेंद को इस वक्त खूबसूरती के साथ पुल किया गया था और आखिरकार बेहतरीन तरीके से जैसे ही गेंद को सीमा रेखा को पार करे, गेंद को छलांग लगाते हुए अंदर की ओर ढकेल दिया फील्डर ने। बेहतर फील्डिंग और इस बेहतर फील्डिंग की बदौलत 2 रन मात्र बल्लेबाज को प्राप्त होते हुए ये गेंद इस बार रिवर्स शॉट, गेंद को खेला, गेंद इस वक्त शॉट थर्ड मैन फील्डर के हाथों में और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। रिवर्स शॉट खेलने का प्रयास, गेट सम एक्स्ट्रा बाउंस, गॉडी स्टॉपेज and finally brilliantly taken by the fielder just inside the 20-yard circle। महेश फील्डर थे और इसी के साथ ये दूसरा विकेट यहां पर गिर चुका है फास्ट टेक वॉरियर्स का। इट्स 15 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। निस्संदेह है इस वक्त एक लंबी साझेदारी की सख्त जरूरत है फास्ट टेक वॉरियर्स को, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं। और यहां पर फ्रेंड्स कुत्ता के गेंदबाजों का शिकंजा इस वक्त काफी हद तक मजबूत होता हुआ। सलीम का आगमन यहां पर हो चुका है और वो इस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पर मौजूद, जबकि तंजीम इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार और गेंदबाज जगदीश गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट 5 से 6 बार जमीन पर गेंद को टिप्पा खिलाने के बाद ये गेंद सफल होते हुए गेंद कौन साइड पर उछालना चाहा, बिल इस वक्त जरूर गिरा है, लेकिन मैं समझता हूँ विकेट कीपर का पैर या फिर गेंद विकेट कीपर के हाथों से टकराने के बाद बेल पर टकराई होगी और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित बल्लेबाज के लिए। स्कोर रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए जगदीश दाहिने हाथ ओवर द विकेट तंजीम के लिए। ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन, जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन एट द लास्ट मोमेंट एंड वेंट इनटू द हैंड्स ऑफ विकेट कीपर आफ्टर बीटिंग द बैट्समैन। गुड डिलीवरी फ्रॉम द बॉलर और डॉट गेंद उनके खाते में जुड़ता हुआ स्कोर बोर्ड वहीं पर रुक चुका है 15 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। एक धीमी प्रगति यहां पर करता हुआ फास्ट टेक वॉरियर्स और इस ओवर में अंतिम बार जगदीश गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए तंजीम सामना करने के लिए तैयार। जगदीश तंजीम के लिए ये गेंद बेहतर गेंद, हल्के से गेंद किस वक्त मोड़ दिया, आखिरी मौके पर स्टीयर कर दिया कहना पड़ेगा। बैकवर्ड पॉइंट पर 1 रन का इजाफा और 1 रन के साथ द थर्ड ओवर हैज बीन केम टू एन एंड। 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, हाफ द वे मार्क इन first take Warriors innings and they managed to score only 16 runs on the board for losing 2 wicket in their first halfway, that means in their first 3 overs। 3 overs remaining in their innings, 3 ओवर का खेल अभी भी बाकी और देखना यह है कि इन बचे हुए 3 ओवर में फास्ट टेक वॉरियर्स के बल्लेबाज और कितने रन न बटोर पाते हैं। और इससे पहले कि चौथा ओवर प्रारंभ हो, माइक्रोफोन पर मेरे अजीज दोस्त जनाब अब्दुल समद को राज्य भाषा कन्नड़ में आंखों देकार सुनाने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। धन्यवाद, थैंक यू।
3 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 16 ಬಂದಿದೆ, 2 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆಗಾರ ರಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ, ತನ್ಜೀಮ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು. KPL ಸೀಸನ್ 6 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. 3ನೇ ದಿವಸ ಈ ದಿನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವುದು KPL ಸೀಸನ್ 6. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ, ಚೆಂಡುಗೂಟವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಸ್ಟಂಪಿಂಗಿನೊಂದಿಗೆ ತನ್ಜೀಮ್ ರಂತಹ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ದಾಂಡಿಗನ ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 3ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ 16 ಬಂದಿದೆ. 16 ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 3 ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ. ತನ್ಜೀಮ್ ರವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತುಂಬಲು ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಶಾರೂಕ್. ಶಾರೂಕ್ ರವರ ಆಗಮನ, ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ರವರನ್ನು ಕೂಡಲು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಶಾರೂಕ್. ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಹಾಗೂ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶೈಲಿ ಎಸೆಗಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗಿಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಶಾರೂಕ್ ರವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಚೆಂಡು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶಾರೂಕ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾಯದ ಅಂಚು. 3rd ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ತೀರ್ಪು. ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮೂರನೇ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ತೀರ್ಪು. ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 3rd ಅಂಪೈರ್ ಅದನ್ನು ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡದ 2 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿನ್ ಹಾಗೂ ಶರಣ್ 2 ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ 4 ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡೊಡನೆ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿಯವರ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಚೇತನವನ್ನು ನೀಡಲು. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕುಸಿದ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ 16 ರನ್ನನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ 4 ವಿಕೆಟನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಸಲೀಂ ಹಾಗೂ ಅಮಾನ್ ಆಧಾರವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. 40 ರನ್ನನ್ನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಬಲಿಷ್ಠ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಸೆತಗಾರ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ
ಶ್ರೀರಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸಲೀಂರವರಿಗೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಯತ್ನ ಇತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್ ರವರದ್ದು, ಆದರೆ ಸಲೀಂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದು ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ತಿಕ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿತ್ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ. ಸಲೀಂ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳನ್ನು ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲವರು. ಈಗ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ದಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿ ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರಿಂದ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 17 ಬಂದಿದೆ. ಇದು 4ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ರಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಾನ್ ಓರ್ವ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ. ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್. ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಹೊಡೆತ ಅಮಾನ್ ರವರಿಂದ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 18 ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಚೆಂಡು 1+1 ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ. ಒಟ್ಟು 20 ರನ್ಗಳು ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 4ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಕ್ಷಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೀತಾರೆ. ರಕ್ಷಿತ್ ರವರ 1 ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಕನಿಷ್ಠ 6 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ 1 ಓವರಿಗೆ 3 ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತ್ ಭಾಳ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 6 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು 1 ಓವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ವೈಡ್ ಚೆಂಡು ಎಸೆದು 21 ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಕ್ಷಿತ್. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಇದ್ದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಿತ್. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದ ಓರ್ವ ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಆಟ ಮತ್ತೆ ಅಮಾನ್ ರವರಿಂದ. 1 ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಿಂಚಿನ ಓಟ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಅಪಾಯದ ಅಂಚಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ. 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ 3ನೇ ಅಂಪೈರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೈ ಚಳಕವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾನ್ ಹೊಡೆತ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಓಟ ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಸಲೀಂ 2ನೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟರು. ವೇಗವಾಗಿ ಧಾವಿಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆತಗಾರನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಎಸೆತಗಾರ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ತೀರ್ಪು 3ನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಗೆ ಮೊರೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮೂರನೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಅದನ್ನು ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 23 ಜಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 24 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 23 ರನ್ನುಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 4 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಓವರ್ಗಳು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಮಾನ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸುದೃಢ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಸಲೀಂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಥ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಟಗಾರರು ತಂಡಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ವೈಭವದ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಸೆತಗಾರ ಅಶ್ವಿತ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಲೀಂ ರವರಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 5ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿದೆ. ಸಲೀಂ ಇಲ್ಲಿ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. 1 ಓಟಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದರು. ಅಶ್ವಿತ್ ರವರ ಎಸೆತ, ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತ ಅಮಾನ್ ರವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಟಚ್ ಚೆಂಡಿದಾಗಿತ್ತು, ಸುಲಭ ತುತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 25 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. 2 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 2 ರನ್ನುಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧೂಳಿನೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕುತ್ತಾ ನೇರವಾಗಿ ಆಟಗಾರನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಚೆಂಡು. ಆಟಗಾರನ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ಚೆಂಡು ಅಂತೂ ಭಾಳ ಸುಭದ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಆಕರ್ಷಕ ನೋಟ ಆ ಚೆಂಡಿಗೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಶ್ವಿತ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸಲೀಂ ದಾಂಡುಗಾರ ಸುಂದರವಾದ ಹೊಡೆತದೊಂದಿಗೆ ಚೆಂಡು ಸೀಮಾರೇಖೆಯತ್ತ ಧಾವಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯ ಬೌಂಡರಿ ಸಲೀಂ ರವರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಲೀಂ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು ಗಿಟ್ಟಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ 29ಕ್ಕೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 5ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ರೀಪ್ಲೇ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಬೌಂಡರಿಯನ್ನು. ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟ ಸಲೀಂ ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಲೀಂ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಆಟ, ಭಾಳ ಕಾಳಜಿ ಆಟ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಟ ಸಲೀಂ ರವರಿಂದ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚೆಂಡು ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಬಹಳ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 1+1 2 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ 31 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತಗಳು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿತ್ ರವರ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಅಮಾನ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಶ್ವಿತ್ ರವರ ಎಸೆತ, 5ನೇ ಎಸೆತ ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ತುದಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತ ಅಮಾನ್. ಸುಂದರತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ 2 ಓಟವೂ ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿ. ಮಂಗಳೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಗರಿ ಮೂಡಬಿದ್ರೆಯ ಈ ಚೆಲುವ
ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಇದು, ಆದರೆ ಇವರಲ್ಲಿರುವ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಅಳತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಉದಾರವಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಆಟ ಅಮಾನ್ ರವರಿಂದ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 33 ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅಶ್ವಿತ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು LBW ಮನವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾನ್. ಆಕರ್ಷಕ ರೀತಿಯ ಎಸೆತ, LBW ಮನವಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಮಾನ್. 5ನೇ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ, 33 ಬಂದಿದೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಓವರ್ ಇದು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಓವರ್. 33, 5 ಓವರಿನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯ 6 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. 6 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 7 ಓಟಗಳು ಗೌರವವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ, ಈ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಯುವುದರ ಒಳಗೆ ಸಹಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ಕಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ ಎಸೆಗಾರ, ತಂಡದ ನಾಯಕ, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ವಿಶ್ವಾಸ್ರವರಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಎಸೆತಗಾರ, ಭಾಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಟವನ್ನು ತಮ್ಮೆಡೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಓರ್ವ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಸೆತಗಾರ ವಿಶ್ವಾಸ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನು ಸಲೀಂರವರಿಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲ, ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 34 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊನೆಯ 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಹೊಸ ಆಟಗಾರನ ಆಗಮನವಾಗಿದೆ ತಸ್ಲೀಮ್ ಹಾಗೂ ಸಲೀಂ. 5 ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 5 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 34 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 2ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ. ತಸ್ಲೀಂ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣಾತುದಿಯಿಂದ ತಸ್ಲೀಂ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ರವರ ಎಸೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ. ಆಟಗಾರನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಂಚಿಸಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ, 3ನೇ ಬಾರಿ ತಸ್ಲೀಂರವರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ತಸ್ಲೀಂ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಹೊಡಿಬಡಿಯ ದಾಂಡಿಗ ಸಲೀಂರವರಿಗೆ. ಈ 3 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಸಲೀಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ 35 ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ವಿಶ್ವಾಸ್ರವರ ವಿಶ್ವಾಸದ ಎಸೆತ. ಶ್ರೀರಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ್ 4ನೇ ಬಾರಿ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂದು ಸುಲಭದಲ್ಲಿ ನೇರ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು, ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಂದರತೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, 36 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ತಸ್ಲೀಂರವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಲೀಂರವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಸ್ಲೀಂ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಆ ಎಸೆತವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ ಸಲೀಂ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಹೊಡೆತ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಅಡಕವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ.
ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ, ಒಂಟಿ ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 38 ಬಂದಿದೆ. 39ರ ಸವಾಲನ್ನು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕುತ್ತಾರು ತಂಡಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 39 ಮಾಡುವ ಆ ಕೌತುಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ರಸವತ್ತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So thank you very much, Abdul Samad Katipala. So outstanding bowling performance by all the bowlers of Friends Kutar. After winning the toss, they elected to field first, and really they're justifying the decision of their captains and bowlers bowled very disciplined bowling performance. Of course, a little bit extras is conceded. The 5 runs in the form of wides, and altogether 9 runs they conceded in extra. And now they set a target of 39 to win the match for Friends Kutar. Fast warriors, and in their batting department, not that much of good enough batting performance from the batsmen. No one able to get a double figure, and the highest individual score came from the bat of Imran only, who got 9 valuable runs, and otherwise Salim has got 7. And then in the end Aman has got 5 runs. Otherwise it's going to be a disappointment batting performance, because their big shots almost dried up. Only one boundary which came from the bat of Salim. Otherwise no boundaries at all in that innings. That's why didn't got that much of big runs in their 6 overs quota. But still, Fast Track Warriors, they can depend this total of 39 to win the match for the opposition, and for that they needed some good bowling performance, considering the fact that Friends Kutar, they got the very good batting department. They got very good batting department. They got the 3-4 batsmen who really, the batsmen there in the form of course Nikhil, not in that in this tournament, not looks like that much of in good touch, but the players like Mahesh, and of course Naveen, who missed out his first match of today's match. He missed out, but still he is coming to the playing 11 in this important match. So that all will go into positive thing here for Friends Kutar. They got some senior players back into their playing 11, and that's why I'm mentioning Fast Track Warriors. If they wanted to win the match, they have to bowl really very well, and wait and see how well they're going to give a challenge here for the batsmen of Friends Kutar. And I request the opening batsmen of Friends Kutar, please go for bat immediately. Already you have taken a lot of time for the fieldings. Now your batsmen are not coming here. Please cooperate with the organizers. After giving a lot of the warning by the umpires, field umpires, please cooperate with the organizers. Now the batsmen are walking towards the middle, and outstanding 2 opening batsmen. And I just mentioning about Naveen, who missed out his match, the previous match. Now is coming to the playing 11s of Friends Kutar. Now is coming to middle as the opener for the side, along with one of the destructive and fantastic striker of the ball, Chammu Arimala, the player who belongs to Kasaragod district. And Chammu Arimala, I watched him so many tournaments in Kerala state, and the last tournament I went there for Manamguji Premier League. Selected Manamguji, organized that big tournament at a 2 lakh cash prize and 1 lakh for the runners of, with a lot of attractive prizes, gold for the owners, the big tournament.
and Chammu Arimala, who really performed very well from his bat, and now he's got a chance here to perform by representing for Friends Kutar. He's a fantastic striker of the ball, very clean striker of the ball, and once he get in, the 2 to 3 over is enough for him to change the complexion of the match. And it's so important here for fast tech warriors to get some wickets early, and so that they can manage to give some pressure for the batsmen. So Arshad straight away got a ball in his hand. Every time for fast tech warriors he starts the proceedings, and every time he starts the proceedings he got some good start from his good bowling. So one more opportunity here for Arshad, being the experienced bowler, have to get some good start from his bowling, because they are not defending a big total. They are only defending the 39 to win the match for the opposition. Here is the first ball. Away from us, right arm round the wicket to Chammu this time going for the off drive, but not quite able to do that, so because just the way he is holding the bat, just like the left hand batsman holding the bat, and top end in the bottom and in the top, and X, that's what we're talking about, just like left hand batsman holding the grip of the bat. That's why for that reason sometimes the batsman fails to make a stroke on the offside. The very difficult when you are holding that grip. This time lofted that one towards the extra cover region, but protection there in the deep. So before the fielder from deep long off to running towards the deep extra cover region, batsman got ample time to complete the single. One without loss of any wicket. One without loss in this first over in progress. 39 going to be a target. Short fine leg, square leg. That was very close, left and right of square leg umpire. One fielder standing very close to the umpire, square leg umpire in left, and one fielder we can see that at wideish long on, between wideish long on and mid wicket, mid on is there, mid off is there, short extra cover is there, and backward point, cover point in fact for right-hander batsman Naveen. Naveen is a very intelligent cricketer, know exactly the condition of the game, and just opening the face of the bat, and warning number 1 has been given to the batsman. In yesterday's match also, when Roland Pinto is the field umpire, he gave 2 warning for Naveen, then 1 run which is deducted for that continuation of that mistake. So Naveen need to be very careful, because in this match each and every run going to be very crucial. So Chammu back on strike now. Arshad away from us, right arm around the wicket balls. So Chammu went for the slog sweep shot. Ball is in there for a while. Looks like it's an opportunity. I don't know why the fielder is not really thinking about that catch, because this is one where fast tech warriors need to grab the opportunity. There might be a lot of time for the fielders to go there to take the catch. Maybe that the short fine leg fielder thought that square leg fielder will going to take the catch, and that fielder thought that this fielder is going to take the catch. But that's what we're talking about. It's a little bit misjudgment by the fielders, and Chammu just survived from that delivery. So 3 on the board without loss of any wicket. Arshad again bowling from the commentary box, and right arm over the wicket balls to Naveen. Naveen in yesterday's match is become a man of the match for his wonderful innings. Under pressure situation he came into bat and performed very well for his team. Now he's facing Arshad. Looks like a little bit disturbance while he was delivering the ball. Arshad again bowling around the wicket to Naveen. Naveen standing outside the line of leg stump. That's beautifully played, but protection there in the deep third man region. Just giving the direction by playing the switch it, and picked up a single for that. With that single, scoreboard moves on to 4 on the board without loss of any wicket in the over number first in progress. And a steady start coming from these 2 opening batsmen. No need to panic at all. Just 39 to get in stipulated 6 overs, and almost 6.5 runs per over is the required run rate for them to win this match. Here is Arshad bowls. This time again Chammu went for the big shot. Excellent line. Looks like it was a nick. Looks like it's a nick here from the bat of Chammu. Then wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball, and might be that ball is hitting his stomach, and
The batsman survived. Good over there from Arshad. Just like I mentioned about Arshad, is a very good bowler for the side of Fast Tech Warriors. Every time when he is in action, he's bowled very well. And once again, he gave a very good start here for Fast Tech Warriors. Chasing 39 to win the match. Friends Kutar has managed to score exactly 4. And that means another 35 more runs required for the victory. And in remaining 30 deliveries. And asking run rate is going exactly 7 runs per over. 7 runs per over, I think, in this condition. And if the bowlers, if they're able to exploit this condition, cloudy weather condition, little bit overcast condition, now we can see that the sun is just playing with the clouds hide and seek. Now it's going to be a cloudy weather condition here in UCG ground. And there might be the opportunity for the bowlers of Fast Tech Warriors to bowl some good overs, so good, put some pressure onto the batsmen of Friends Kutar. But here we are having one player, very cool customer, Naveen, very experienced, who can handle the pressure very well. And probably sometime the potential of the batsman was tested when he was batting under pressure situation. The only good player can handle the pressure. And Naveen, just I watched the previous match, yesterday's match, when his team is lost 5 wickets. He's just a spectator watching in the other end. The wickets are tumbling, but he's standing tall. He's not really, looks like he's disturbed from that the fall of wickets. But he's playing his own batting, he knows that staying in the middle is so important, and throwing the wicket. If you spend a little bit time in the middle, you can get some good score, and that's so important here for Fast Tech Warriors. As quick as possible, they have to pick this man, Naveen, and then only they got a chance here to win the match. Taslim from the Venkatesh Bandarian. Bowling, right arm over the wicket to Naveen. Naveen this time, look at that one. This is intelligent cricket, isn't it? Cricket is not all about his hitting. You cannot call that one who hitting the big shots like boundaries and sixes is going to be a good batsman. But sometime this rotation of the strikes, I think, is going to be a sign of good batsman as well. Of course, they're playing a 6 overs game, understandable. There is no much option at all for the batsman. I have to look for some big shot. But playing as per the condition, it's so important. And here is Naveen knows that better than me. The one batsman I am having as my partner is a very good striker of the ball. So he knows that, and that's why he's picked up a single and giving chance for his partner Chammu to take over Taslim. And where is he? How Taslim will go into ball to Chammu. So far Chammu is very quiet. The previous over also didn't got enough runs, and he is facing next over. This time again looking for the expansive off drive. Didn't got that much of timing behind the stroke. Ball is landed very safely in front of Imran there at cover point region. One more addition to total scoreboard, moves on to 6 on the board without loss of one wicket. 33 to get. 33 to get in remaining 28 deliveries. The match seems to be very interesting. Low scoring game, but seems to be very good matches going on here between these two teams. And from the far end, Taslim from the Venkatesh Bandarian. Right arm over the wicket, bows. Clever cricket there from Naveen. Just like a left hand batsman is steering the ball towards a short third man. And good thinking there by Taslim, in fact, I will tell you, because he knows that Naveen is looking for the reverse sweep, just changing the line. His ball down the leg stump. And Naveen knows that if you left the ball, it will go into be a fair delivery. So that is just having a bat onto that, so that he managed to rotate the strike. 7 on the board. A good cricket is going on here. The very good cricket is a quiet cricket, but still it is a very good cricket. The very classical cricket is going on in this two teams, between these teams. Again, Chammu across the line of delivery, swinging his bat. He's got a protection in the deep mid wicket. Good piece of fielding there by the fielder. Excellent pickup. The young man for the side of Fast Tech Warriors, I think, is Sahil, the man who's got, I already mentioned in the previous, watching him, the bowling and fielding, is a future. He's got a future. The application and dedication towards the cricket, I think, is definitely going to be one of the future of underarm cricket. And the way he's handling the pressure in the deep outfield, the man has to hold the ball, collect the ball, and return it very quickly. Taslim. Oh, that was a beauty, absolutely beauty. That's what I'm talking about. If Fast Tech Warriors wanted to back into this game, they need to pick this man.
And Navin, I think, little bit making room to play the shot. That was the problem here. He's just exposing his stumps. Look at that in a replay. Taslim bowling with the face, with the run-up. The batsman, look at that one. I think, yes, he's just exposing his stumps. Moving towards the onside, try to play inside-out cricketing stroke. But against the face of Taslim, I think Navin, little bit wrong shot selection in the relegation. He pays the penalty for that and ball hits the stump. That was outstanding. That was outstanding bowling performance here from Taslim. That's what they wanted to see. That fast-tech warriors, the need to back into this game with some excellent bowling. And very interesting to see that Nikhil is now coming down in the order because he's a man is out of the form. He's out of the form, but he wanted to get his form back. And that's why a little bit up and down in the batting department, batting orders. In fact, is coming in the number 3 position. And wait and see how well Nikhil will going to justify. And here we are, some dignitaries out here in this community box watching this cricket tournament along with Tilak. They have, of course, Sharan, Ashwin, Vivek, the masterclass bowler of challenge bowler, enjoying the game of cricket. And left of me, Babu. Meanwhile, this time Nikhil going for the big shot in the relegation. The ball is outside the line of off stump. What a fantastic over this comes to an end after completion of 2 overs. Looks like fast-tech warriors. They're really now bowling like a warriors here in the middle. 2 overs completed. They considered 8 runs and picked up 1 wicket. And straight away coming back to the equation. Just coming back to the equation now. 4 overs remaining. 24 deliveries remaining. They have to get another 31 runs. That means this match seems to be very interesting. At one time it looks like Friends Kutar, when they're restricting their opposition for just 38, it is going to be the match. Certainly Friends Kutar will going to win the match quite easily. But after that they picked up a wicket of Naveen. I think we can see that the changes in the body language of the field spans of fast-tech warriors. They started to feel, started to dreaming about the victory. They knows that if they bowl one or 2 good overs here onwards, the all possibility here for fast-tech warriors to win the match. Why not? Because they got a very good bowling department. They got young talented bowler now just coming into ball here from the commentary box, and we are talking about the bowler Sahil, who's so far so good. He's been outstanding throughout the tournament. He's been one of the innovative invention, I will tell you. He's one of the invention in underarm cricket, and wait and see how he will going to bowl in this particular match, because this is a very important match. It's a knockout. This is a quarter final under pressure game. There is no excuse at all for any mistake, and that's why it's so important here for this young talented bowler to handle the pressure here in this most important over. From the commentary box and bowls. This time a lovely leg cutter in the relegation, but batsman batted very well in the relegation. Chammu is so good in his legs, so that is not really missing the opportunity. He won a little bit across the line of the delivery, but he's very confident in the relegation that he wanted to play some big innings. This is the one time I think Chammu is not in a form, and but this match I definitely tell you, Chammu definitely take this match as a challenge. He wanted to play a big innings with his partners. The promising left-hand batsman Nikhil. 9 on the board. That means they have to get another 30 runs to win this match, and they got only 23 deliveries to spare. Sahil with the jersey number 1. Of course, he's a number 1. Why not? He's a number 1 bowler. So far, I watched in this cricket tournament in this local group. Very impressive, and bowling away from us. Right arm over the wicket. Bowls to Nikhil. Full toss in the relegation, and Nikhil again not quite able to take the advantage of that full toss. Of course, even that was a full toss, but that full toss is a very difficult hit, the big shot, because that full toss just outside the line of off stump. That's why Nikhil not really thinking about the big shot. You know exactly if he across the line of the delivery, if he wanted to hit, might be chances of taking a leading edge, chance of losing the wicket. That's why Nikhil wanted to spend a little time a little bit, and he knows that the 1 or 2 runs if he able to get,
he can bounce back again. A lovely delivery. Look at that. What I'm talking about, the ability, the potential of this bowler. And once again, the V1, the tremendous striker of the ball, Chamu, is really surprising. Seeing the line of the delivery, seeing the face and controlling that line and length is so impressive. 10 on the board for the loss of 1 wicket. 29 runs required for the victory. From the commentary box and Sahil, right arm over the wicket, balls to oh, that was the delivery. That was the delivery. I think Sahil need not to ball to the batsman like Chammu, because he just missed it, I will tell you. If he able to hit that one, that definitely that ball going to disappear out of the park. And a wide call by umpire. One more addition to total. With the addition at that wide, scoreboard moves on to 11 on the board for the loss of 1 wicket in the over number 3 in progress. Sahil might be thinking about some extra turn. He didn't got that turn actually. If he able to get that turn, might be that it was a good delivery. Maybe the ball is just passing the leg stump, but he didn't got that much of turn what he's expecting from that delivery as Sahil. Balls. Oh, that was again one more wide. Wicket keeper behind the stump, very electrifying, and a fantastic diving stop there from wicket keeper behind the stump. But Sahil, all in sudden in this big match, started to feel the pressure. That shows that inexperience of playing a big matches. Of course, playing in a other first round, second round is different, but playing in quarter final, little bit under pressure and in front of that huge spectators, I think the young man might be started to feel the pressure, but need not to do that, because you have to be a little bit relaxed and how to ball good line and length. Here is Sahil, right arm over the wicket, balls. That what we're talking about. If you ball to the legs of this man Chammo, he definitely going to disappear. That one out of the park. That's what I'm mentioning about. Ball is just sailing out of the boundary line for a maximum. Sahil just not really learn from his mistakes. He's bowling to the leg of the Chammo. He didn't got a ample pace in this particular delivery, and he didn't got adequate field for that. Chammu is such a fantastic slog sweeper of the ball, and he didn't got fielder. If it is a fielder there in the deep backward square, like I will tell you, might be the chance of catch there. Any tall fielder standing in that deep backward square, like might be it was an exact height that ball is travels, and now they're keeping one fielder there. I think it's needed before, after seeing that Sahil is bowling a leg cutter, trying to bring the ball around the legs of the bat, need to have some protection there. But after the 6 runs, they got one protection. It's too late. 18 for the loss of 1 wicket. This time again, Chamo dragging the ball. Almost looks like he drags the ball into the stump. Good comeback there by young man. In the occasion, seeing that potential of the batsman is so strong on his legs. He bowled little bit outside the line of off stump, and batsman tried to hit one more big shot. And just lucky here. Ball is just missed the stumps. And Sahil again, already 18 on the board. Little bit expensive over Sahil in this over, because of 2 wides he bowled, 1 6 he conceded. Already Friends Kutta got what they wanted. This time Chammu again went for the reverse sweep, again not quite able to get that one right from the middle of the bat. Clever piece of bowling there by Sahil, but expensive, I will tell you. Sahil, first time looking in this tournament, he's become that much of expensive in this big match. And after completion of over number 3, chasing 39 to win this match, Friends Kuttar are 19 on the board. That means equation now 20 to get in remaining 3 overs. 18 balls remaining, and they have to get another 20 runs. I think Friends Kuttar, they're strongly back into this game, because they got 9 wickets in hand. And that's the same left and right combination is on. One promising left-hand batsman, another very attacking right-hander batsman. Having these 2 batsmen in the middle, I think Fast Tech Warriors have to ball like a Warriors. Then only they got a chance here to back into this game. And before that, next over will go into commence. It's time to ask Gopi to take over the microphone. Gopi, looks like it's match the quarter final, high voltage, but 2 overs, which is really belongs to the 2 overs, which is belongs to Fast Tech Warriors. But first time watching that the young talented bowler Sahil, little bit expensive, and bowls 2 wides and 1 6, which is really expensive in this situation. What do you think now? 22 to get, 18 balls remaining. Will it go into possible here for Fast Tech Warriors? Because opposition team has got 2 fantastic batsmen are in the middle. Friends Kuttar. One is Nikhil, another one is Chammu Arimala. The both are talented left and right combination in the middle. I think breaking the partnership is so important here for Fast Tech Warriors if they wanted to back into this game.
बिल्कुल सतीश, जहां तक का सवाल है, पहले 2 ओवर में बेहतर गेंदबाजी का प्रदर्शन फास्ट टेक वॉरियर्स ने किया था, लेकिन तीसरी ओवर में कुछ हद तक महंगे पड़े उनके प्रमुख गेंदबाज, और उस ओवर में एक छक्का भी लगा था शाहिल के ओवर में, और उसके बाद कुछ हद तक इस मैच में वापस आ चुका फ्रेंड्स कुत्तार। और जैसा कि आपने फरमाया, इस वक्त फास्ट टेक वॉरियर्स को इस मैच में कमबैक करना है, तो निस्संदेह इस पार्टनरशिप को ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा, क्योंकि क्रीज पर मौजूद बल्लेबाज चम्मू और निखिल इस वक्त काफ़ी हद तक जम चुके हैं, और यहाँ पर अगर वो इस साझेदारी को तोड़ते हैं तो निस्संदेह इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। 18 गेंदों में इस वक्त चाहिए 20 रन। देखते हैं क्या होता है। चौथे ओवर की पहली गेंद लेकर गेंदबाज जग्गू इस वक्त तैयार, ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा, बेहतरीन गेंद थी इस वक्त, और गेंद सीधे पहुंची विकेट कीपर के हाथों में, रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा। तो जहाँ तक सवाल है, इस श्रृंखला के पहले सेमीफाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए संघर्ष यहाँ पर जारी है फास्ट टेक वॉरियर्स और फ्रेंड्स कुत्तार के बीच में। और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, तो इस वक्त जग्गू गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए यह गेंद चिप किया, लॉन्ग ऑफ पर एकमात्र रन मिलेगा बल्लेबाज को। और जहाँ तक सवाल है बल्लेबाज का, तो छोड़ 1 रन के साथ वो बदल चुके हैं और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 20 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। हर रन के लिए कड़ा संघर्ष यहाँ पर जारी है। और जहाँ तक सवाल है लक्ष्य तक पहुंचने का, तो अब इक्वेशन उनके सामने है 19 रन, जबकि गेंदें बाकी हैं 16। तो स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं निखिल, और वो इस वक्त जग्गू की गेंद का सामना करते हुए। खामोशी का वातावरण इस मैदान, माहौल कहना पड़ेगा, इस मैदान पर छा चुका। दर्शक लगभग मैदान पर भर चुके हैं खामोशी के साथ मैच का मुआयना इस वक्त करते हुए। और जहाँ तक सवाल है मैच का, तो मैच इस वक्त भी बराबरी पर रुक चुका है। और अगली गेंद लेकर इस वक्त गेंदबाज तैयार जग्गू, बाएं हाथ ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए। बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल के लिए अगली गेंद लेकर तैयार। 19 to get now from 16 balls. So a fine match is now progressing here. और गेंदबाज जग्गू ये गेंद ऑन साइड पर उछालना चाहा स्टंप्स को कवर करते हुए, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद को कनेक्ट करने में शॉर्ट स्क्वायर की दिशा में गेंद पहुंची। और जब तक विकेट कीपर गेंद तक पहुंचे, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 4 in progress. A battle is now continuing here for to entering into the semi-final of this competition. और इस बीच जग्गू बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज चम्मू इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। और जग्गू की गेंद, ये गेंद चम्मू के लिए उछालना चाहा, मिड विकेट पर गेंद पहुंची, एकमात्र रन बल्लेबाज को मिलेगा। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हुए जग्गू बल्लेबाज को कोई रूम या विड्थ इस वक्त प्रदान नहीं कर रहे हैं कि बल्लेबाज खुलकर स्ट्रोक से खेल सके। और इस बीच अपने टीम के अन्य खिलाड़ियों से कुछ बातचीत करते हुए फील्डिंग के सजावट के बारे में। और इस बीच तैयार बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज निखिल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। जग्गू निखिल के लिए ये गेंद इस बार ऑन साइड पर मोड़ा, खूबसूरती के साथ मिड विकेट पर गेंद जाती हुई मिसफील्ड इस बीच, और गेंद जाती हुई सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। दिस इज एन एब्सोल्युटली स्लॉपी, आसान सा फील्डिंग था वहां पर, और हड़बड़ाहट में, जल्द से जल्द फील्डिंग करने के हड़बड़ाहट में देखिए किस तरीके से यह हुआ था। गेंद तक पहुंच गए थे, आसानी के साथ गेंद फील्ड कर लेनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी मौके पर गेंद उनके हाथों से छूटी हड़बड़ाहट में, और गेंद के साथ खुद भी सीमा रेखा से बाहर चले गए। और फील्डर थे अरशद, और इस फील्डर की गलती की वजह से ये चौका यहां पर जुड़ चुका है फ्रेंड्स कुत्तार के खाते में। और इस चौके के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 26 रनों पर। 13 रन और चाहिए। अब इक्वेशन सीम्स टू बी इजियर नाउ फॉर फ्रेंड्स कुत्तार। 13 टू गेट फ्रॉम 13 बॉल्स। और जग्गू एक लंबे रनअप के साथ इस वक्त गेंदबाजी करते हैं। ये गेंद
इस बार लेग स्टंप पर आती हुई स्विंग करना चाहा, आखिरी मौके पर विकेट चटकाए जरूर, लेकिन अंपायर पर इस वक्त कोई प्रभाव नहीं। बल्लेबाज का पिछला पैर क्रीज पर मौजूद और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। और इसी के साथ ओवर नंबर 4 की समाप्ति यहां पर हो चुकी है। 26 रन बन चुके, 1 विकेट के नुकसान पर 4 ओवर की समाप्ति के बाद। 4 overs completed, and after completion of 4 overs it's 26 for the loss of 1 wicket and 13 to get now from remaining 12 balls। और कुल मिलाकर इस ओवर में मेरे ख्याल से 7 रन बने। और सतीश, एक ओवर था जिसमें ना सिर्फ फ्रेंड्स कुत्तार को इस ओवर में बेहतर हुआ, लेकिन मैं समझता हूँ अगर उस एक गेंद को एक्सक्लूड करके देखा जाए जो चौका मिसफील्ड की बदौलत फीडर ने दिया था, ये ओवर बेहतर था फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के लिए। Exactly, Gopi. And the fast track warriors might be thinking about that misfield and what could be a certain single or just a couple of runs. But just now required run is 13 runs. Maybe that fast track warriors thinking about any 15 to 16 runs in 2 overs might be that the position going to be very better, much better here for fast track warriors. But still, Gopi, the match is not yet over. Just seeing the condition of the weather, I will tell you, the overcast condition, cloudy weather condition, not that much of easy for the batsmen. I think so, because the bowler bowls good line and line. But question raising here is that having these two batsmen, the left and right combination, I think Nikhil and Chamo, and they lost only 1 wicket. They can take some risk, isn't it? Because they know that they got plenty of batsmen to come. So 13 to get from 12 balls, I don't think they're going to feel any pressure here. But if they want to put the pressure, this young talented bowler, I think Sahil, not that much of impressive in the previous over, but he's got a talent, he got a skill. Everything he's got. If he's ball as per his reputation, what he did in the previous 3 matches, then certainly he can put some pressure onto the batsman. बिल्कुल सही बात आपने फरमाया सतीश। और साहिल पिछले ओवर में कुछ खास असर नहीं डाल पाए थे, लेकिन इस ओवर में एक बार फिर से उनको मौका प्रदान किया गया है कप्तान द्वारा कि वो बेहतर गेंदबाजी करें। और खासकर ये जोड़ी को इस वक्त तोड़ना होगा फास्ट ट्रैक वॉरियर्स को, इस मैच में कमबैक करना। ये गेंद ऑन साइड पर, गेंद को खेल दिया मिड विकेट पर, थोड़ी सी मिसफील्ड और इस बीच रनों का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 27 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट एट द स्टार्ट ऑफ द 5th ओवर इनफैक्ट। तो यहाँ पर जैसा कि आपने कहा, रन्स बनाना उतना आसान नहीं है क्योंकि धूप बिल्कुल गायब हो चुकी है, बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है और कुछ मात्रा में घने बादल इस वक्त नीलाकाश को ढक चुके हैं। वर्षा की संभावनीयता हो सकती है, लेकिन हम उम्मीद अपेक्षा करते हैं जब तक न सिर्फ आज के दिन बल्कि ये श्रृंखला समाप्त ना हो, वर्षा यहाँ पर ना आए। तो यहाँ पर गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए गेंदबाज साहिल और बाएं हाथ के बल्लेबाज रियाज, माफ कीजिए निखिल, इस वक्त सामना करने के लिए तैयार था। ना तो ऊपर द विकेट गेंदबाजी करते हुए पैरों पर गेंद टकरा है, प्लम, एब्सोल्युटली प्लम। और इसी के साथ ये विकेट यहाँ पर साहिल प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं कहूँगा जहाँ तक सवाल है ये विकेट का, तो बेहतर गेंद थी, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को ऑन साइड पर इस वक्त मोड़ना चाहा था, लेकिन जहाँ तक का सवाल है गेंद को वो मोड़ नहीं पाए, गेंद उनके पैरों पर टकराई और आखिरकार उनका पैर बिल्कुल मिडल स्टंप के सामने रहा। और इसी के साथ ये विकेट नंबर 2 यहाँ पर गिर चुका है 27 रनों के ऊपर। इट्स 27 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट। अब कुल मिलाकर गेंदें बाकी हैं 10, जबकि रन से चाहिए 12 और नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है महेश का, और वो इस वक्त क्रीज पर कदम बढ़ाते हुए, खिलाड़ी इस वक्त पानी का ग्रहण करते हुए और खेल जो कि कुछ क्षणों के लिए यहाँ पर रुक चुका है। तो निस्संदेह यहाँ पर एक बेहतरीन माहौल छा चुका है इस मैदान पर, और खासकर जहाँ तक सवाल है न सिर्फ दर्शक बल्कि कुछ आज के दौर के बेहतरीन खिलाड़ी भी इस मैच का मुआयना करते हुए, खासकर जो सादिक एंडम क्रिकेटर्स के जो मैदान के दाईं ओर वहाँ इस वक्त बैठे हुए हैं अपने टीम के चंद साथियों के साथ इस मैच का मुआयना करते हुए, और निश्चित रूप से वो इस श्रृंखला में एनएम का प्रतिनिधित्व शायद कर सकते हैं, इसकी उम्मीद है, देखते हैं क्या होता है। और निस्संदेह आज के दौर के अंडरआर्म क्रिकेटर बेहतरीन अंडरआर्म क्रिकेटर्सों में से एक जाने जाते हैं
सादिक और वो इस वक्त इस मैच का मुआयना करते हुए उनका हृदयपूर्वक स्वागत उनके और उनका साथियों का करते हुए कुडला प्रीमियर लीग के संगठक। यह गेंद अच्छी गेंद थी, गेंद को ड्राइव कर दिया, इस वक्त कवर पॉइंट की दिशा में गेंद पहुंची, 1 रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 28 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। इट्स 28 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट, 11 to get now and 9 balls remaining. What a match is now going on here. Absolutely a fantastic battle is now continuing here for the qualify for the semi-final of this competition. और साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए और सामना इस वक्त करने के लिए तैयार चम्मू। ये गेंद चम्मू के लिए इस बार वाइड, 2 for outside the off stump और वाइड का इशारा यहाँ पर हो चुका है। 1 रन का इजाफा और 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 29 रनों पर पहुँच चुका है। रन्स इस वक्त चाहिए फ्रेंड्स कुत्तार को, वो किस तरह से बनते हैं ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है, चाहे वो वाइड के रूप में हो या फिर बल्ले से लगकर आया हुआ रन हो। तो यहाँ पर इस बात को मद्देनज़र रखते हुए रन बनाने की हर तरीके की कोशिश, हर तरीके का प्रयास यहाँ पर करते हुए बल्लेबाज फ्रेंड्स कुत्तार के। और इस बीच गेंदबाज साहिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिना तो ओवर द विकेट। ये गेंद चम्मू के लिए परफेक्ट लेग कटर गेंद थी, अपील, लेकिन अपील को नकार दिया, बिल्कुल जमीन के सहारे आए थे, लॉन्ग द कार्पेट टर्न लेते हुए मैं समझता हूँ ऑफ स्टंप से बाहर की ओर गेंद निकलते हुए आखिरी मौके पर गेंद लाइन पर जरूर टिपा खाई थी, लेकिन इतनी ज्यादा घुमावली कि गेंद ऑफ स्टंप की बाहर की ओर जा रही थी। और जहां तक सवाल है सही निर्णय इस गेंद पर अंपायर सी रद्द दे दिया। 1 रन का इजाफा, स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 30 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। 9 रन इस वक्त चाहिए जबकि गेंदें बाकी हैं 8। तो कांटे का टक्कर हमें यहां पर देखने को मिल रहा है और अब महेश स्ट्राइक पर आ चुके हैं, फील्डिंग का मुआयना यहां पर करते हुए और तैयार। गेंदबाज साहिल गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, आखिरी मौके पर मोहन माफ कीजिए महेश कुछ हद तक असंतुष्ट हो, ड्राइव करना चाहते थे कवर और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से स्क्वायर, लेकिन गेंद गई सीधे मिड ऑफ पर, लेकिन 1 रन ना उन्हें ज़रूर मिला और इस बीच 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 31 रनों पर 2 विकेट के नुकसान पर। पहला क्वार्टर फाइनल मैच, फर्स्ट क्वार्टर फाइनल मैच ऑफ KPL 2021 edition 6 is now progressing here and the match is now heading towards to a nail biting finish। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, साहिल गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, चम्मू स्ट्राइक पर आ चुके हैं, एक बेहतर पारी अपने टीम के लिए खेलते हुए फ्रेंड्स कुत्तार के लिए इस वक्त सामना करने के लिए तैयार साहिल की गेंदों का। ये गेंद ऑफ कटर बैक टू द बॉलर की दिशा में, महेश काफी आगे निकल आए थे और इस बार आसान सा रन आउट होता हुआ नॉन स्ट्राइकर एंड पर। और दुर्भाग्यवशात यहाँ पर महेश आउट होकर पेविलियन वापस लौटते हुए और इसी के साथ ये विकेट नंबर 3 यहाँ पर गिर चुका है। 31 रन 3 विकेट के नुकसान पर, अंतिम ओवर बाकी, 8 रन चाहिए। और जहाँ तक सवाल है इस ओवर में सिर्फ 5 रन सतीश इस ओवर में प्रदान किए गेंदबाज साहिल ने और दूसरे ओवर में, पहले ओवर में कुछ हद तक पिटने के बाद दूसरे ओवर में जो उम्मीद अपेक्षा के साथ गेंदबाज को गेंद सौंपी थी कप्तान ने फास्टिक वॉरियर्स के, उस उम्मीद अपेक्षाओं को काफ़ी हद तक साकार किया। सिर्फ 5 रन अंडर प्रेशर सिचुएशन पर इस मौके पर उन्होंने प्रदान किए। अब 6 गेंदों पर 8 रन चाहिए और मैं समझता हूँ इस वक्त जहाँ तक फ्रेंड्स कुत्तार का सवाल है उनके बल्लेबाजों को इस ओवर में कुछ सूझबूझ भरी बल्लेबाजी करनी होगी। जहाँ तक सवाल है फास्टिक वॉरियर्स के गेंदबाजों का इस अंतिम ओवर में उन्हें एक कसी हुई गेंदबाजी करनी है। गेंद और बल्ले के बीच में एक बेहतर संघर्ष यहाँ पर होगा और इस उम्मीद अपेक्षा हम रखते हैं। और जहाँ तक सवाल है अंतिम ओवर का, तो विनिंग पॉसिबिलिटीज़ के बारे में कहा जाए सतीश, तो मैं कहूँगा एट दिस सिचुएशन इट्स गोइंग टू बी 50-50। Exactly, Gopi. It's the match is even poised. Just seeing that condition here, because the last delivery of the Sahil's over, they lost the wicket of Mahesh, the very experienced batsman. At the same time, one more thing, noticeable thing in this final over is that, Gopi, that new batsman going to the strike and Chammu is out of the strike. So I think if Fast-Tech Warriors, if they bowl sensibly, and whoever the bowling the last over, they want to keep Chammu out of the strike. As much as ball the new batsman will going to consume, I think the winning chances here for Fast-Tech Warriors is going to be very brighter. And but question here is that who will going to bowl that last over? And every time you're watching that, this man
what you can say that yesterday also we are talking about this is gambling, and the bowlers like Jagu, I think so, will going to bowl the last over. Different kind of who is bowling different kind, slow leg spin bowler. Of course, he is a left-hand bowler, but he's off spin bowling for the right-handed batsman. But it's gamble, but sometimes is very effective as well. And it's going to be so interesting how these two batsmen will going to tackle with this man. If Jaggu bowls good line and length, and winning chances for fast X over is brighter. As far as winning perspective of this Friends Kuttar is concerned, I think sensible batting required, and especially this man have to pick the single and gives the strike to Chammu. बिल्कुल एक जुआ इस वक्त खेलते हुए गैम्बल, जैसा कि आपने कहा सतीश, जग्गू को गेंदबाजी पर उतारा है, और लेकिन ये जुआ जो गैम्बल जो खेला है ये उनके लिए पॉजिटिव साबित हो सकता है अगर जग्गू इस वक्त बेहतर गेंदबाजी करेंगे। बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद स्वीप किया स्क्वायर लेग पर नीरज के हाथों में, और इसी के साथ पहली गेंद पर ये जुआ जो गैम्बल खेला था कप्तान ने वो काम यहां पर लाता हुआ। तो यहां पर चौथा विकेट गिर चुका है। शफल होते हुए गेंद को ऑन साइड पर उछालना चाहता बल्लेबाज अश्वित ने, लेकिन गेंद टॉप एज पर टकराई और स्क्वायर लेग फील्डर ने, नीरज ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। और पहली गेंद पर ये गैम्बल जो कि रंग लाया है, लेकिन 5 गेंदें अभी भी बाकी है, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है। और देखते हैं इन 5 गेंदों में जग्गू यहाँ पर उस बेहतरीन लेंथ और लाइन को बरकरार रख पाते हैं जो उन्होंने पहली गेंद पर इस वक्त फेंकी है। तो जहां तक सवाल है, बॉलर बैट्समैन त्यागराज का आगमन यहां पर हो चुका है, और इस वक्त त्यागराज स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, जबकि जग्गू इस वक्त गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए। तो त्यागराज का जहां तक सवाल है, एक बेहतरीन हार्ड हिटर के रूप में वो जाने जाते हैं, और इस वक्त वो सामना करने के लिए तैयार। 8 रन चाहिए 5 गेंदों में, और दबाव दोनों टीमों के ऊपर इस वक्त साफ बढ़ता हुआ। जग्गू बाएं हाथ राउंड द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज त्यागराज के लिए, और अगली गेंद लेकर तैयार। 8 to get from 5 deliveries। जग्गू बॉल्स त्यागराज के लिए आक्रामक स्ट्रोक, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर वहां पर आते हुए क्लीन कलेक्शन, एकमात्र रन मिलेगा। त्यागराज 2 कदम आगे जरूर बढ़े थे, लेकिन ऐन मौके पर अपने कदमों को क्रीज पर खींचते हुए सुरक्षित देखा कि थ्रो वहां पर पहुंच चुका, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 32 रनों पर, 4 विकेट के नुकसान पर। छठा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, और 7 रन चाहिए अब विजय के लिए, 4 गेंदें बाकी। कम से कम कपल्स 1 या 2 गेंदों पर इस वक्त कम से कम निकालने होंगे फ्रेंड्स कुत्तार को अगर उन्हें इस मैच में वापस आना है तो। और जहां तक फास्ट टेक वॉरियर्स का सवाल है, मैं कहूंगा इस वक्त उन्हें गेंद को डॉट करनी होगी या फिर विकेटें उखाड़नी होगी इस मैच में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए। और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, तो जग्गू इस वक्त गेंदबाजी करते हुए, और यहाँ पर स्ट्राइक पर आ चुके हैं चम्मू, जो कि एक बेहतरीन पारी, एक लंबी पारी अपनी टीम के लिए खेलते हुए छक्का भी वो जड़ चुके हैं। देखते हैं क्या क्या होता है इस गेंद पर। चम्मू का स्ट्रोक और गेंद सीधे मिड विकेट पर उछाला, लेकिन उतना ऊंचा नहीं कि गेंद मिड विकेट फील्डर के सिर के ऊपर से निकल सके, और गेंद सीधे पहुंची मिड विकेट फील्डर के हाथों में। और मिड विकेट के फील्डर के हाथों से पहले गेंद छिटकी जरूर, लेकिन अपने दूसरे प्रयत्न में इस कैच को उन्होंने लपक लिया। अब कुल मिलाकर रन से चाहिए 7, जबकि गेंदें बाकी हैं 3। तो इस वक्त तख्ता भारी लगता हुआ फास्ट ट्रैक वॉरियर्स का, लेकिन मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, मौका जरूर है बाउंस बैक करने का फ्रेंड्स कुत्तार को। एक चौका या छक्का मैं समझता हूं फ्रेंड्स कुत्तार को पूरी तरह इस मैच में वापस ला सकता है। और नए बल्लेबाज के रूप में इस वक्त विश्वास इस वक्त मौजूद, काफी विश्वास के साथ इस वक्त क्रीज पर वो मौजूद है, और देखना यह है कि वो अपने विश्वास को किस तरह बरकरार रख पाते हैं। तो जहां तक सवाल है बचे हुए गेंदों का, 3 गेंदें बाकी, 7 रन चाहिए, और कुछ बातचीत इस वक्त की दोनों बल्लेबाजों ने अगले गेंद को किस तरीके से खेलना है, और वापस अपने स्वस्थान पर वापस। जग्गू बेहतर गेंदबाजी का सिलसिला यहां पर जारी रखते हुए, और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। बाएं हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, बिल्कुल बदली भरा वातावरण यहां पर छा चुका है, क्लाउडी एटमॉस्फेयर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और यहां पर मैच एक दिलचस्प मोड़ की ओर आकर रुक चुका है। ये गेंद अगली गेंद के लिए तैयार, इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, मिड ऑन पर गेंद पहुंची, 1 रन न मिलेगा, थ्रो पहुंच चुका है, लेकिन बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का।
33 for the loss of 5 wicket. 6 to get from 2 balls. छक्के की जरूरत है और छक्का लगाने वाले क्षमता एबिलिटी रहने वाले बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर मौजूद त्यागराज। और जहां तक त्यागराज का सवाल है, जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका हूं, काफ़ी आक्रामक बल्लेबाजी के रूप में वो जाने जाते हैं और देखना यह है कि उनकी इस आक्रमणशील बल्लेबाजी को इन बचे हुए 2 गेंदों में वो किस तरह से दिखाते हैं। तो निस्संदेह 4 बेहतर गेंद वो फेंक चुके हैं अंडर प्रेशर और निस्संदेह दबाव को इस वक्त बेहतरीन तरीके से झेलते हुए गेंदबाज। और इस बीच 2 गेंदें बाकी है, 6 रन इस वक्त चाहिए और गेंदबाज जग्गू इस वक्त तैयार त्यागराज के लिए। फील्डिंग में जमावट इस वक्त करने के बाद लॉन्ग ऑन डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑफ डीप एक्स्ट्रा कवर 5 फील्डर ठीक सीमा रेखा के पास तैनात। द प्रेशर इज नाउ बिल्डिंग अप ऑन बोथ साइड। 6 टू गेट फ्रॉम 2 डिलीवरीज। हियर वी गो। गेंदबाज तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद चिपकी है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े लेकिन नहीं बच पाएंगे और इस बीच ये विकेट यहां पर गिर चुका है। अब अंतिम गेंद में चाहिए 5 रन। चौका अगर लगाते हैं तो मैच टाई होगा और अगर मैच टाई होता है तो 3 गेंदों का सुपर डिलीवरी का खेल यहां पर खेला जाएगा। तो 5 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल, 4 फॉर टाई एंड 5 फॉर विन। और यहां पर विकेट गिर चुके हैं 6। अब अंतिम नंबर 8 बल्लेबाज क्रीज पर पहुंचते हुए, लेकिन उनको अंतिम गेंद खेलना नहीं होगा क्योंकि स्ट्राइक इस वक्त है त्यागराज के पास। जग्गू 5 बेहतर गेंदें इस ओवर में फेंक चुके हैं इस अंडर प्रेशर परिस्थितियों में और इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। मैच की अंतिम गेंद लेकर जग्गू वेंकटेश भंडारी मुंबई इंडियंस की ओर से गेंदबाजी करते हुए त्यागराज को ऐसा कहना पड़ेगा फास्टेक वॉरियर्स का भविष्य जग्गू के हाथों में, जबकि फ्रेंड्स कुत्तार का भविष्य त्यागराज के हाथों में। देखते हैं इस मैच निर्धारित गेंद पर क्या होता है। 5 टू गेट फ्रॉम लास्ट बॉल, 4 फॉर टाई एंड 5 फॉर विन एंड द लास्ट बॉल ऑफ द मैच इज नाउ कमिंग अप। जग्गू टू त्यागराज, left arm round the wicket. Here we go. Last ball, lofted, misses. That's it. 4 runs victory for Fastech Warriors against Friends Kuttar. And with this thrilling 4 runs victory, Fastech Warriors are now through to the semi-final of this competition, defeating Friends Kuttar in a nail-biting encounter. So what a fantastic performance. And at last they through to the semi-final of this competition. The first semi-finalist in this competition, Fastech Warriors. And now just we have to wait for the man of the match of this match. तो बेहतरीन मैच समाप्त हो चुका है। अगला मैच शुरू होगा और एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे कन्नड़ में जनाब अब्दुल समद के साथ, जब अगले मैच की शुरुआत यहां पर होगी। धन्यवाद, थैंक यू। ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರ ಆ 2 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ ಜಗ್ಗೂರವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ಜಗ್ಗೂರವರಿಗೆ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒಲಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಇದರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಸಫ್ವಾನ್ ರವರು 5,000 ರೂಪಾಯಿಯ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನ ಕೂಡ ಜಗ್ಗೂರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಶ್ವಿನ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸಮಯೋಚಿತ ಆಟಗಾರ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರುವ ತಂಡಕ್ಕೆ ಓರ್ವ ಬಲ ನೀಡುವ ಓರ್ವ ಛಲಗಾರ
ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರನೆಂದರೆ ಅದು ಅಶ್ವಿನ್ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅಶ್ವಿನ್ ರಾಜ್ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಜಗ್ಗೂರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಶ್ವಿನ್ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಾರೆ. 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸಫ್ವಾನ್ ಜಗ್ಗೂರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಥಮ ತಂಡ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಈ ತಂಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದ ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಣ್ಮಣಿ, ಓರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ರಮೀಸ್ ತೋಡಾರ್ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದ ತಂಡಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದ ಶಿಯಾಬ್ರವರು ಕೂಡ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಶುಭವನ್ನು ನೀಡಿ ಆ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶುಭವನ್ನು ಕೋರಿದ ಆ ಮಹನೀಯರಿಗೆ. ಈಗ ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ಹಾಗೂ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ನಾಯಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ಆ ಗೌರವದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಜ್ರವರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರರಾಗಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ತನ್ನ ಆ ಕೈಚಳಕವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನವನ್ನು ಆ ಸ್ಕೋರ್ ಬುಕ್ ಕಡೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಕಿಂಚಿಂತೂ ಲೋಪದೋಷವಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಅಪೂರ್ವ ಅಂಕಿಅಂಶ ಬರಹಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತ ಸತ್ಯಾರವರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಕೋರರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಹೇಶ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಂತೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಿ, ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮೈದಾನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ಮೊಳಗಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ಪರವಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ದಾಮೋದರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಆಗಿ ದಾಮೋದರ್, ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ತನ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಎಸೆತವನ್ನು, ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ, ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ, ಸೋತರೆ 2 ದಿನದೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಆ ಸವಿ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತೃಪ್ತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಕೆಟ್ ನಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ರಿಲ್ವಾನ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ ರವರಿಗೆ. ಸಂಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಗುಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ದಂಡಿಗೂ ಬಹಳ ನಿಕಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸಂಜಯ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 1, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 3. ಇದು ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ವಾತಾವರಣ. ಭಗವಂತನ ಇದೊಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ನೋಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗೆ.
ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಅದು ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗುಡಿಸಿದ್ರು ದಾಮೋದರ್. ಸಂಜಯ್ ಗುಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಂಜಯ್ ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 4. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಅಶ್ವಚಂಡನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. 2 ಓಟವನ್ನು ಓಡಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯ 6 ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 4, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂಜಯ್ ರವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮೊತ್ತ 2, ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 6 ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅಡಿಪಾಯ ಸುಭದ್ರವಾಗಿದ್ರೇನೆ ಮುಂದೆ ಆಡುವ ಆ ಪಯಣ, ಮುಂದೆ ಸಾಗುವ ಆ ಪಯಣ ಸುಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿರ್ತದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ಮನಮುಟ್ಟುವ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗನ ಆಟವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವಂತಿಲ್ಲ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಲ್ಪ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಂಬಂತೆ ಅಕ್ರಮ್ ಬಹಳ ಲಘುಬಗಣೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದೊಂದು ಅಪಾಯದ ಗಂಟೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ತೌಸೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಂತೂ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ತೌಸೀಫ್. ಈ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಫೀಕ್ ಆದರೆ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಸಂಜಯ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡು ತೌಫೀಕ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬಂತೋ ಅದೇ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆ ದಂಡನ್ನು ಒತ್ತುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಜಯ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್. ಸಂಜಯ್ 3ರಲ್ಲಿ, ತಂಡ 7ರಲ್ಲಿ. ಇದು ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ 6 ಓವರಿನ ಪಂದ್ಯ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪಂದ್ಯ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಮೋದರ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರ ಆ ತುದಿಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಎಸೆಗಾರ ತೌಸೀಫ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆ. ಇದು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ 1+1 ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಗೆ ಈಗ 9. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತಲೂ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರವಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹನಾಹನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಆಫ್ ಸೈಡಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು. ಸದಕತ್ತುಲ್ಲಾ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಬೈ ಎಂಬ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಶ್ರೀರಾಜ್, ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋ ಹಾಗೂ ಸೂರಜ್ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ತರವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಪನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಭೂಮಿ ತಾಯಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕೊತ್ತ. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ದಂಡನೆ ನೇರ ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಯಾವುದೇ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. 10ರಲ್ಲಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ. ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೌಸೀಫ್ ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು 4ನೇ ಬಾರಿ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿದರು. ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೂಲಕ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ತೌಸೀಫ್ ರವರಿಂದ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. 4 ಎಸೆತವಾಗಿದೆ, 11 ರನ್ನು ಬಂದಿದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತೌಸೀಫ್ ರವರ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತಾ ಜರ್ಸಿ ನಂಬರ್ 09 ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಎಸೆತವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೋ. ತೌಸೀಫ್ 5ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ದಂಡಿನ ಅಂಚಿಗೆ ತಗುಲಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಒಂಟಿ ಓಟ ಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡ್ರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 12 ಬಂದಿದೆ. 12 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ.
ತೌಸೀಫ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೀರಾಜ್ರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಬಲವಾದ ಮನವಿ. ಈ ಮನವಿಯ ಮುಂದೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಲೆಗ್ ಬೈ ನಿಶಾನೆಯೊಂದಿಗೆ 13 ಬಂದಿದೆ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟ. ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಸೂತ್ರಧಾರ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಈಗಾಗಲೇ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣಾ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅಸನ್ಮುಖರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ 3 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ಭಾಳ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಎಂಬ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇದೆ. ಆ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಿಲಕ್ ಗುರು ಬರುವ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂದು ಪರಿಸರದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂಡ ಫೈನಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಸಮರ. ನಿಜವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಛಾಪು ನಾಳೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ 8 ದಿಗ್ಗಜರ ಮಧ್ಯೆ ಕದನ ಕುತೂಹಲ ಇಲ್ಲಿ ನಾಳೆ ಇದೇ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಸಾಧನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಮೆರೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ. 2 ಓವರ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ, 13 ಬಂದಿದೆ, 2 ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ. 3ನೇ ಓವರ್ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಕಿರಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, ಹಿರಿಯದಾದ ಸಾಧನೆ ಇದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮೆರೆದವರು ಈ ಅಸ್ವದ್. ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಓವರಾಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲೂ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದಲ್ಲೂ ಕುಲಾಯಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಸರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ದಿಗ್ಗಜರಂತೂ ಈ ದಿನದ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನಸಾರೆ. ಕಾರಣ ಇಂದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ವದ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ದಾಮೋದರ್. ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡನ್ನು ಸುಲಭ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಟ್ಟುವುದರೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 14 ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. 14 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ. ಅಸ್ವದ್ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಎದುರಿಸಿ ಆಡುವಂಥ ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಎಂಡ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಸುಂದರತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಳತೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿತವರಾಗಿ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ದೃಶ್ಯ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವುದರಲ್ಲಿ 3ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಆಟಗಾರ ಸಂಜಯ್ರವರಿಗೆ ತೀರ್ಪುಗಾರ ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಗುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಜಯ್ರವರ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು. ಸಂಜಯ್ ಈಗ 5ರಲ್ಲಿ, ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 15ರಲ್ಲಿ. ಇದು 3ನೇ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಾದರೂ ಬರುವವರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕರೆಯಿರಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಕಲಾತ್ಮಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡನ್ನು ಬೀಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ರನ್ನನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 16 ಬಂದಿದೆ ಅಸ್ವದ್ ತಂಡ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ. 4ನೇ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಸ್ವದ್. 5ನೇ ಬಾರಿ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅಸ್ವದ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ರೊಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾಳ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆದರು. ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಇತ್ತು. ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರು ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್. ಯಾವುದೇ ಅಪಾಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ. 17 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ. 3ನೇ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂಥ ಪಂದ್ಯ ಇದಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಗೆದ್ದರೆ ಸಮಿಗೆ, ಸೋತರೆ ಮನೆಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ. ಈ ಬಾರಿ ಬಾಣಂಗಳದಲ್ಲಿ ತೇಲಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ರಮ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಸರದ ಚೀತಾ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ್ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಥಮ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಮೋದರ್ ರವರ ವಿಕೆಟ್ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. 17 ಮಾಡಿದೆ. 3 ಓವರ್ಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ
ಕನಿಷ್ಠ 25 ರನ್ನನ್ನಾದರೂ ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಗೌರವದ ಮೊತ್ತವಾದೀತು. ಇದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸುವಂಥ ಮೊತ್ತವಾದೀತು, ನೋಡುಗರನ್ನ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಮೊತ್ತವಾದೀತು. ಮೊತ್ತವಾಗಲಿ, ಈ ಪಂದ್ಯ ತುದಿಗಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಲಿ ಎಂಬ ಆಶಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. So thank you very much, Abdul Samad Kadipala. The 17 for the loss of 1 wicket after completion of 3 overs. Torpedoes Khana won the toss, elected to field first, and they are bowled well, field well, restricting the batsmen of YFC Krishnanagar for just 17 runs. Outstanding bowling performance, and YFC Krishnanagar has really need to bat very well in remaining 3 overs if they wanted to get some good score. Chance of run out here, and it's going to be a big wicket. Ranjit is one of the most valuable player for the side of YFC Krishnanagar, is back into pavilion without facing a single delivery. Is back into pavilion. Total misunderstanding between the wicket. Batsman going for the reverse sweep, and at that time I think Ranjit thought it might be a single there, but batsman is not really observing his partner, and he pays the penalty for that, and YFC Krishnanagar have lost their big wicket. Ranjit is back into pavilion, 17 for the loss of 2 wicket. The second quarter final of this most prestigious Kudla Premier League is going on here. In the first quarter final, it is outstanding first quarter final in that the Warriors of Fast Tech won the match quite dramatically against Friends Kutar, and they got a place in the semi-final. And wait and see in these two teams which team will going to qualify for the semi-final from the far end. Batsman bowler bowls, Taufik bowls, the batsman drives that one quite handsomely towards a deep long off region for a single by Sanjay. The with that single scoreboard moves on to 18 for the loss of 2 wickets. The new batsman in is Ashraf, one more talented and tremendous striker of the ball, will going to face Taufik from the Venkatesh Bandarian. Bowls Ashraf watching the ball till the last moment. Chance of run out in the strikers, and I think it's going to be a close call if the ball is hits the stump. Look at the batsman there. I don't know why he wanted bat there. If you look at that in the replay, it's such a funny thing is happening in the middle. Look at that one. As a batsman looking the white ball, wicketkeeper missed it. Non-striker Sanjay runs, and wicketkeeper shying for the stump and missed it. And look at the Sanjay there. He lost his bat from his hand. Little correction, Ashraf, and when he just wanted to pick his bat first, then he started a run. My goodness, more than becoming the run out, he has got a love with his bat. He doesn't want to lose his bat here. So 20 for the loss of 2 wicket. All that we can see, some funny things are happening in the cricket ground. Here is the next one. Right arm over wicket balls. Oh, that was an opportunity, but I think it's too late for wicketkeeper behind the stump. He's missed the golden opportunity here. Ashraf out of the crease in that occasion when the ball came into the hands of wicketkeeper, and wicketkeeper in first attempt missed out completely. In the second attempt, he managed to remove the stumps, but in that time, I think batsman has got opportunity to back. 20 for the loss of 2 wicket. Taufik from the far end, from the Venkatesh Bandarian. Right arm over the wicket. Balls to Ashraf. Ashraf improvising by playing the switch it right off that the fieldsman, but not more than a single. Then the batsman have to settle for the single. With that single, scoreboard moves on to 21 for the loss of 2 wicket. Torpedoes Khana. I think this season they got a fantastic achievement. They're clinching some prestigious tournaments which is played in South Kent district. Taufik, this time improvising quite beautifully there by Sanjay, right off that fielder, ball running down to deep backward square leg division, but good piece of fielding there by the fielder in the deep. Excellent work
the quick movement of the fielder is stopping the batsman from the second run, and batsman have to settle for the singles. So one more good over completed there by the bowlers of Torpedoes Ghana. 22 for the loss of 2 wicket. Tawfiq is completed his first over, and he conceded 8 runs in that over, and after completion of 4 overs, is a 22 for the loss of 2 wicket. Just under the 6 runs per over runs rate is progressing here, and exact run rate is 5.5 runs per over. The run rate here for YFC Krishnanagar, but they have to play very well the remaining 2 overs. Now I think the sun is just beating out from the black clouds with the full strength, and we can see some bright sunshine here in the middle, and little bit the condition of weather today different. Sometime it's a bright sunshine till the afternoon. After that 2 o'clock it's going to be a little bit overcast condition till now. Now it's a bright sunshine out here. Now altogether I think the perfect weather condition today for the players. Not that much of hot, and suddenly some wind in the ground as well. So altogether it's a good condition for the cricket. Meanwhile, the very experienced Anil brought into attack, the man of the match in the first match, bowled well, picked up wickets for his team. And every time when Anil is in action, he is a fantastic performer who would give 100%, and he bowls first delivery. Sanjay quite easily placing the ball towards the deep extra cover region before the fielder from the deep extra cover, Sharif, to field that one. The batsman got ample time to complete the single. 23 for the loss of 2 wickets. The very slow cricket is going on between these two teams, and the batsmen are not really getting some big strokes in this excellent and disciplined bowling performance by the Torpedoes Ghana. And now Ashraf is got a potential of hitting a big shots, and wait and see how Ashraf will going to face Anil. It's going to be a very good contest between these two. Anil, the experienced bowler, the Ashraf is the experienced batsman. This time again went for the mighty stroke in that occasion, not quite able to get that one from the middle of the bat. Mistimed it, ball went towards a short mid-on region. One more addition to total. Captain of Torpedoes Ghana is not really bothered about the single. You know exactly if you're able to protect that boundaries and sixes, they can restrict YFC Krishnanagar less than 40. Now it's a 24 on the board. It's over number 15 progress. Anil. Right arm over the wicket this time again. Batsman tries that one. Sanjay right off that short mid-wicket fielder. And once again the fielding is so good in that occasion. Rilwan, the fieldsman there in the short mid-wicket, quickly moving towards the direction of the ball. And just a single for the batsman. 25 for the loss of 2 wicket. 25 for the loss of 2 wicket. Anil once again back to his bowling mark. One of the most valuable and talented cricketer. Anil bowling away from us. Alright, over the wicket. Bowls to Ashraf. This time Ashraf drives it on just over that of Rilwan down at short mid wicket, and batsman got opportunity to complete the single. Again Ashraf trying for the big shot, not quite getting hold of the strokes properly. The reason that Anil is a very good off bowler who can bowl some very good off cutters, and because of his getting some extra turn with the surface, of course a little bit dust in the pitch, so the bowler like Anil definitely will going to exploit that condition, getting some extra turn. And again he bowling right arm over the wicket balls. Beautifully bowled, but wicketkeeper behind the stump fails to collect the ball. Going to be a one more single, and wait for the umpire signal. It's by signal. So with that a by score moves on to 27 for the loss of 2 wicket. Anil again bowling from the commentary box end, bowling right arm over the wicket, bowls to Ashraf. Ashraf again going for the expansive drive. Again he is not going to get a big shot in that occasion because Anil so clever, absolutely perfect over there from Anil, handling the pressure very well in this slog overs. So 5 overs completed, still searching for the right track. YFC Krishnanagar struggling in the middle in the line of in the form of run rate. 28 for the loss of 2 wickets. So in this break, I would like to give special thanks to the donors of KPL Season 6. They're leading from the front always, the Venkatesh Bandari Mumbai, the one who really going to be the big supporter of any cricket tournament. But
Whenever there's a Kudla Premier League, he is always there and backing up this cricket tournament. Thanks to Venkatesh Bandari Mumbai for your support. Then Uday Pujari of Ballalbagh, Jayaprakash Shetty, Bandharamane, Bashir of BC Road, Shrikant Shetty of Vijayalakshmi Cricketers, Nitin Kottari of Amlamaguru, Nasir and Yasin, Vishal Lobo Pandeshwar, Suhan Lobo, Alvin Richard, Anwar Bajal, Manukumar, Sarvada Distilleries Udupi, Naveen Banjan, Manoj Shetty Chilimi. We're coming back to the more names after this over. If Drill 1 starts the fresh over. And the final over of the innings of IFC Krishnanagar, and Ashraf Beck picked up a single here. With that single, scoreboard moves on to 29. So far, Torpedoes Khana looks to be pretty good in the field. Again, from the far end, from the Venkatesh Bandari and Rilwam bowling round the wicket. This time, bowler's back drive. Chance here for the Rilwan to take the cotton ball, but for difficult chance because batsman hit that one pretty hard, Sanjay. And batsman bowler just Rilwan reacting that one very quickly, stopping the speed of that strokes, and batsman have to settle for the single. And with the single, scoreboard was on to 30 on the board for the loss of 2 wickets. 4 deliveries remaining in the innings of IFC Krishnanagar. Rilwan, batsman charging down the track, lofted but not quite able to get more than single for that. After one bounce collected, directed chance here for the run out in the non-strike strikers, and now umpire Roland Pinto says not out. The batsman is safe. They completed 2, and with that couple of runs, scoreboard moves on to 32 for the loss of 2 wickets. It's coming back to the names of the donors. Naveen Banjan, Vinu Shetty Naharla, Manoj Shetty Chilimbi, Rakesh Salyan Chilimbi, Karthik Shetty Suratkal, Vijay Kumar Bangalore, Rakshit Amin Chilimbi, Mithun Ashok Nagar, Trescon, Shrikant Bhatt Udupi, Karunakar Pujari Kutthar, Nitesh Kutino Babukatte, Sandeep Shetty Kolya, Nikhil Amlamaguru, Dhanraj Ullal, Sandeep Urwa, Godwin Kariyappa, Dheeraj Munna Bolur, Ranjan Divya Jyoti Electricals. So we are thankful and grateful to all the donors for contributing for the success. This time Rilwan got a wicket and in his own style he's celebrating that wicket, telling that Ashraf that you need not to go for the big shot for my bowling. You need to go to the pavilion for that delivery. So that one more wicket is back into pavilion here. 32 for the loss of 3 wickets. And this is the over number last in progress. So far it's outstanding bowling performance there from Torpedoes Khana. Now Kishore is walking towards the middle. One more experienced campaigner for the side of IFC Krishnanagar. He batted very well. That was a tournament which is held last Sunday at ARD Cricket Ground. And in that tournament, one catch has become very viral in social media. That is a catch of Deepak. And now we can see in the big screen the Ashwin, Tilak and Tanvir and Sharan all are enjoying the game of cricket here. And one more single is taken here. And a leg by call by umpire. 33 for the loss of 3 wickets. Here in commentary box, all are enjoying. This is a cup of tea of the evening. Rilwan from the Venkatesh Bandari end. Balls, this time swept that one towards the deep square leg region. Anil the fieldsman there in the deep, they're going for the second. Oh my goodness, absence of mind. But here I think so. Here I have to see whether it's out or not out. Umpire suddenly calling for the third umpire. Now, this is the last delivery of the over. If it is not out in this side, then they will going to get a couple of runs. If it is out, I think they will not going to get more than single. Look at that throw coming from the fielder. Absence of mind there for wicket keeper. Quickly realizing that batsman is not here. And I think third umpire have to give the decision here.
will it going to be out or not out? Because each and every run going to be very crucial here. And the wicket keeper first is thinking about throwing the ball towards the non-strikers and quickly realizing that batsman is not in the crease. Is going for the run out. Out is the call from third umpire. That means yes, only one run. Out. So 34 is the total score of YFC Krishnanagar, 35 target for Torpedoes Khana to win the match, and once again low scoring game, quite understandable, just like in the previous matches, the low scoring game between Friends Kutar versus Fast Track Warriors, and I think Fast Track Warriors depended very well, that small total 38 they depended very well. Now YFC Krishnanagar have to depend this small total again 34, and they need to depend 34 not to get 35 for the opposition. It's going to be one more interesting matches coming up here, and before the innings of Torpedoes Khana will going to start here. Once again I would like to invite Gopi for the first explanation of the match. And Gopi, all in sudden we can see that and still 4 o'clock 3 o'clock it's high scoring games all in sudden, and when overcast condition is started here, looks like the batsmen started to feel the pressure, and now we can see that crowds really enjoying the game of cricket here. Some I think there are some big names in Underarm cricketers. Altaf Walpadi enjoying the game of cricket. The hero of the previous match, Jagu, got a man of the match. He is just enjoying the game of cricket here. And Tanzim is there also along with that players. Nikhil and Ansar all are enjoying the game of, and Shahrukh all are enjoying the game of cricket, and Bedra Media and cameraman catching that all big figures, and Alpha Fall Party was the man of the series in this all Oman cricket tournament which is played at Chukabetu. He's got outstanding tournament. And now Gopi, and it's just coming back to that I'm mentioning about the overcast condition, looks like encouragement for the bowlers. Do you think that the previous matches of 39 that was the target, now it's a 35 is the target? And what do you think, what's really happened after that overcast condition? Looks like the bowlers are dominating. Will it be possible for YFC Krishnanagar to defend this small total against Torpedoes Khana? जैसा कि आपने फरमाया सतीश, अंडर दिस कंडीशन मैं समझता हूँ ये कॉम्पिटिटिव टोटल है. अगर YFC कृष्णनगर के गेंदबाज पहली ओवर से एक बेहतरीन गेंदबाजी करते, लेकिन अगर टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज पहले ही ओवर से आक्रामक बल्लेबाजी अपनाते हैं, टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज खासकर पावर प्ले का फ़ायदा उठाते हैं, तो निस्संदेह वो अपनी मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं जैसा कि आपने फरमाया. तो देखते हैं क्या होता है. और इस वक्त अकरम स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और गेंदबाज सुस्तान ना, ये गेंद बेहतर गेंद थी इस वक्त, बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद को इस वक्त ड्राइव करना चाहा चूके, और गेंद सीधे पहुंचे विकेट कीपर के हाथों में. रन इस बीच बल्लेबाज को नहीं मिला. बेहतर गेंद थी सुस्तान की. और जहां तक गेंदबाजी का सवाल है तो सुस्तान एक बार फिर से गेंदबाजी के मार्ग पर आते हुए और अगली गेंद लेकर तैयार था. यहाँ तो ऊपर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए. ये गेंद इस बार बेहतरीन गेंद थी. आखिरी मौके पर एक बार फिर से बेहतर गेंद. मैं समझता हूँ गेंद लगभग स्टंप से कुछ दूरी पर निकली, 2 इंच दूरी पर, और आखिरकार बल्लेबाज इस गेंद पर बाल बचते हुए. तो 2 बेहतर गेंदें इस वक्त अकरम को फेंक चुके हैं सुस्तान, और नॉन स्ट्राइक रन पर जलाल क्योंकि इस वक्त क्रीज पर मौजूद. और अकरम के लिए एक बार फिर से गेंदबाज सुस्तान गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए. गेंद स्विंग किया इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा की ओर बढ़ती हुई गेंद, और लंबा दौड़ इस वक्त लगाते हुए. गेंद अपने रफ्तार को खोने के बाद इससे पहले कि बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के अंदर फील्ड हो, बल्लेबाज के पास मौका 3 रन लेने का, और ओवर थ्रो के रूप में चौथा रन पूर्ण कर चुके हैं. सो दे कंप्लीटेड 4 विद रनिंग, और 4 रन
यहाँ पर मिल चुके हैं और डीप मिड विकेट और डीप बैकवर्ड स्क्वायर के दरमियान सीमा रेखा के अंदर जो फील्डर ने गेंद को काफ़ी लंबे दौड़ के बाद रोका था वो प्रयत्न इस वक्त व्यर्थ जा चुका है और जितने रन मिलने चाहिए थे उतने रन यहाँ पर मिल चुके हैं ठोड़ पड़ोस काला को। और इस बीच विकेट कीपर दौड़ कर आए, बल्लेबाज से कुछ गेंदबाज से वो कुछ कहते हुए इस वक्त कि किस सही लेंथ और लाइन के साथ उन्हें गेंदबाजी करनी चाहिए। और इस वक्त एक बार फिर से गेंदबाज सुस्तान अपने गेंदबाजी पर तैयार और अकरम स्ट्राइक लेते हुए इस वक्त सुस्तान की गेंदों का दाहिना हाथ ऊपर द विकेट। ये गेंद इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को उछालना चाहा, स्क्वायर ऑफ द विकेट, गेंद पहुंची, एक रन का इजाफा यहाँ पर हो चुका है। एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है इस वक्त 6 रनों पर बिना किसी नुकसान के, 6 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर फर्स्ट इन प्रोग्रेस। Absolutely a better start needed for Torpedoes Khana if they have to reach the target of 35 runs set by YFC Krishnanagar in this second quarter-final match of KPL Edition 6 2021 Kudla Premier League, which proudly organized by Young Friends Urwa Registered and Friends Urwa Registered in the celebration of their silver jubilee, 25 years in cricket. And this tournament is now progressing along fantastically. और जहाँ तक गेंदबाजी का सवाल है, सुस्तान इस वक्त राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हुए बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल के लिए अगली गेंद। यह गेंद इस बार जलाल के लिए ऑन साइड पर गेंद को मोड़ दिया इस वक्त डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में, और इससे पहले की गेंद को वहाँ पर फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का, और इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुँच चुका है 7 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक बार फिर से बदली भरा वातावरण मैदान पर छा चुका है, क्लाउडी एटमोस्फियर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, और घने बादल नीला आकाश को इस वक्त ढक चुके हैं, लेकिन क्रिकेट के लिए, खेल के लिए एक पर्याप्त रोशनी अभी भी मैदान पर मौजूद। और इस बीच इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट, एनफील्ड क्लियर करते हुए गेंद को इस वक्त चिप किया अकरम ने, और दौड़ लगाने के बाद डीप कवर पॉइंट सीमा रेखा के अंदर जब तक गेंद को रोके फील्डर बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का, और 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 9 रनों पर। तो एक बेहतर शुरुआत, अ परफेक्ट स्टार्ट made by the openers of Torpedoes Khana, chasing the victory target of 35 in 5 over. They are 9 without loss. तो निस्संदेह कई टॉप सीडेड मंगलोर के खिलाड़ी, टीमों के खिलाड़ी इस वक्त मुआयना करते हैं। मॉनिटर पर आप देख रहे हैं पवन हकीम जो कि KFC कोडिकल के हैं, और उनके साथ किरण जो कि इस वक्त सीढ़ियों पर बैठे हुए, सीमा रेखा के सीढ़ियों पर बैठे हुए इस मैच का मुआयना करते हुए। और कल जो कि अखाड़े में उतरेंगी मंगलूर के 8 टॉप सीडेड टीमें, और लीग स्टेजेस के मैचेस जो कि खेले जाएंगे, बेहतरीन क्रिकेट की उम्मीद हम अपेक्षा कल करते हैं। फिलहाल आज इस श्रृंखला के पहले फाइनलिस्ट के रूप में प्रवेश प्राप्त करने के लिए यहां पर मुकाबला जारी है ए पूल में। यह गेंद स्वीप कर दिया खूबसूरती के साथ इनटू द विकेट गैप, कम से कम 2 रन बल्लेबाज को प्राप्त होंगे, और इस बीच 2 रन बल्लेबाज पूर्ण कर चुके हैं। इससे पहले कि थ्रो पहुंचे गेंदबाज के हाथों में, और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 11 रनों पर बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहां पर प्रगति पर, और जहां तक सवाल है गेंदबाजी का, संतोष गेंदबाजी इस वक्त शुरू कर चुके हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज जलाल इस वक्त सामना करने के लिए तैयार। अगली गेंद दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद रिवर्स शॉट, इस वक्त गेंद को खेलना चाहा, चूंकि विकेट कीपर ने विकेट जरूर चटका है, लेकिन बल्लेबाज क्रीज पर मौजूद, और इस वजह से सब कुछ सुरक्षित। स्कोर रुक चुका है 11 रन बिना किसी नुकसान के। लगभग पूरी तरह बदली इस वक्त छा चुकी है, और बैटलाइट लगभग होता हुआ इस मैदान पर। तो इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूं कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया जल्द से जल्द खेल को आगे बढ़ाएं। इसके बाद इस श्रृंखला का पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाना बाकी है, और इस बीच ये गेंद स्वीप करना चाहा, गेंद पैरों पर टकराई, गेंद पहुंचे पॉइंट पर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 12 रन बच चुके हैं बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर यहाँ पर प्रगति पर, अकरम स्ट्राइक पर इस वक्त आ चुके हैं। पावर प्ले इस वक्त जारी, और देखना यह है कि इस पावर प्ले ओवर्स के जो बचे हुए गेंद है इस ओवर में, उन गेंदों में संतोष किस तरीके की गेंदबाजी करते हैं अकरम को बांध कर रखने के लिए। और इस वक्त गेंदबाज संतोष
गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, दिशाहीन गेंद, एब्सोल्युटली स्लॉपी डिलीवरी, 2 फॉर आउट साथ ऑफ स्टंप, एक रन का इजाफा और एक रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 13 रनों पर, 13 विदाउट लॉस इन द ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस। गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद इस बार चिप किया, स्क्वायर ऑफ द विकेट और गेंद इस वक्त एक्स्ट्रा कवर पर जाते हुए 2 रन बल्लेबाज को मिलेगा। ऐसा कहना पड़ेगा नॉट क्वाइट गेट दैट वन राइट फ्रॉम द मिड ऑफ द बैट, और लेकिन गेंद एनफील्ड को क्लियर करती हुई निकली थी इस वक्त डीप एक्स्ट्रा कवर पर, और जब तक एक थोड़े से दौड़ के बाद गेंद को फील्ड किया जाता बल्लेबाज के पास मौका 2 रन प्राप्त करने का। अक्रम काफी आक्रामक रवैया इस वक्त अपनाए हुए, दाहिना तो ऊपर द विकेट, लेग स्टंप से बाहर, टॉप एज, मौका यहां पर हो सकता है, मिड विकेट फील्डर गेंद के नीचे आते हुए, और इसी के साथ यह विकेट यहां पर गिर चुका है। ऐसा कहना पड़ेगा अक्रम ने जितना पूर्वानुमान एक्सपेक्टेशन लगाया था उससे गेंद धीमी आई और बल्ला पहले अड़ा गए और टॉप एज पर गेंद टकराए और डीप मिड विकेट के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। तो यहां पर अक्रम का विकेट गिर चुका है और यहां पर एक इनाम भी घोषित हो चुका है। अगर टॉर्पेडोज काना के कोई बल्लेबाज छक्का लगाते हैं तो उन्हें 500 रुपए का नकद पुरस्कार श्रीमान सुनील बोलूर इनकी ओर से दिया जाएगा, 500 रुपीज कैश प्राइज। तो अक्रम तो जा चुके हैं, अगर अक्रम क्रीज पर रहने में अगर मैं इस इनाम की घोषणा करता तो शायद अक्रम 1-2 छक्का लगाते थे शायद, लेकिन उनका विकेट यहां पर गिर चुका है। और देखते हैं अगले बल्लेबाजों के लिए यहां पर मौका है, और 500 रुपए 500 रुपीज कैश प्राइज फॉर एवरी 6 फॉर द बैट्समैन ऑफ टॉर्पेडोज काना डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर सुनील बोलूर। और यहां पर कुछ बातचीत दोनों बल्लेबाज करते हुए खेल यहां पर रुक चुका है कुछ क्षणों के लिए। कुल मिलाकर इस ओवर में एक गेंद अभी भी बाकी, 15 रन एक सुस्थिति में इस वक्त नजर आता हुआ टॉर्पेडोज काना। और जहां तक वाईएफसी कृष्णनगर का सवाल है, इस वक्त उन्हें जरूरत चंद कसे ओवर्स की, चंद विकेटों के। ये गेंद स्पेक्ट्रा वाइड, दिस इज नॉट अ गुड बॉलिंग और रन के लिए दौड़ पड़े, 1 रन बल्लेबाज को मिलेगा, 2 रन बल्लेबाज को नहीं मिलेगा, टीम को मिलेगा 2 रन। और इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका 17 रनों पर, धीरे धीरे अपनी मंजिल की ओर इस वक्त अग्रसर होता हुआ टॉर्पेडोज काना। और वाईएफसी कृष्णनगर को जैसा कि मैं पहले भी फरमा चुका, इस वक्त एक घातक गेंदबाजी की सख्त जरूरत है। दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद लेग स्टंप पर आते हुए हल्के से गेंद को पुश किया, तेजी के साथ रन के लिए दौड़ पड़े और आसानी के साथ 1 रन पूर्ण कर चुके हैं। इससे पहले कि सीरी में डाउन फील्डर गेंद को फील्ड करे और थ्रो करे नॉन स्ट्राइक रेट पर 1 रन के इजाफे के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 18 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर की मुकम्मल यानी समाप्ति के बाद। सो 2 ओवर्स कंप्लीटेड, इट्स 18 for 1। तो यहाँ पर टॉर्पेडोज काना के लिए हर छक्के के लिए 500 रुपए का नगद पुरस्कार इनाम रखा गया सुनील बोलूर द्वारा, जबकि इस वक्त उन्होंने वाईएफसी कृष्णनगर के लिए भी इनाम घोषित किया है। अगर कोई वाईएफसी कृष्णनगर का कोई भी गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट इस मैच में लेता है तो 1000 रुपए का नगद पुरस्कार उनकी ओर से यानी सुनील बोलूर की ओर से दिया जाएगा, 1000 रुपीज कैश प्राइज फॉर द हैट्रिक। If any bowler took a hat-trick in this match of YFC Krishnanagar, he'll be rewarded 1000 rupees cash prize from Sunil Bolur। तो दोनों टीमों के खिलाड़ियों के लिए इनाम इस वक्त घोषित किए गए हैं और देखना यह है कि कौन से टीम के खिलाड़ी कितना इनाम यहां पर प्राप्त करते हैं। 18 for 1, 2 overs completed, 17 to get from 4 overs, remaining 4 overs in fact। दामोदर गेंदबाजी प्रारंभ करते हुए बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन दिस टाइम, और सेंसिबल क्रिकेट यहां पर अपनाई। जैसे गेंद ऑफ कटर गेंद थी, टर्न होकर टिप्पा खाने के बाद अंदर की ओर आई, रक्षात्मक तरीके से गेंद को ढकेल दिया इस वक्त शॉर्ट कवर पर, और 1 रन के साथ बल्लेबाज अपना छोड़ बदल चुके हैं। 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। लेफ्टी बैट्समैन इज नाउ कम्स ऑन टू द स्ट्राइक। जलाल इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार, और दामोदर निस्संदेह एक बेहतरीन गेंदबाजी की सख्त जरूरत है एफसी कृष्णनगर को इस मैच में वापस आने के लिए। टॉप एज इस वक्त फाइन लेग फील्डर गेंद तक नहीं पहुंच पाएंगे और आखिरकार इस गेंद पर जलाल बच चुके हैं। काफी देर तक गेंद हवा में उछली थी, लेकिन फाइन लेग पर जो फील्डर थे वो काफी स्ट्राइटर जी तोड़ कोशिश
उन्होंने ज़रूर की थी, लेकिन आखिरकार गेंद तक पहुंचने में असफल। और इसी बीच 1 रन का इजाफा यहां पर हो चुका है। 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 20 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट इन द ओवर नंबर 3 इन प्रोग्रेस। और दामोदर एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, ये गेंद इस बार अच्छी गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन, मच स्ट्रेट लाइन, दैट्स द लाइन ही हैज टू बॉल इन दिस सिचुएशन। सो फैंटास्टिक लाइन फ्रॉम दामोदर इन दिस डिलीवरी। और स्कोर बोर्ड इस वक्त रुक चुका है 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और एक बार फिर से दामोदर तैयार, दाहिना तो ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद अंदर की ओर आती हुई, गेंदबाज की दाईं ओर से गेंद को खेला इस वक्त स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, मिड ऑन पर। और जब तक गेंद को वहां पर फील्ड किया जाता, बल्लेबाज के पास मौका था 1 रन प्राप्त करने का। और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 21 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर। कुल मिलाकर 2 गेंदें अब बाकी उनकी पारी में, उनकी इस ओवर में, उनकी पारी की इस ओवर में कहना पड़ेगा। और दामोदर, ये गेंद बेहतरीन गेंदबाजी, पॉइंट पर, रनआउट का खतरा, निशाना चूका, कोई बैकअप नहीं, बल्लेबाज दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े और यशस्वी तब दूसरा रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। 23 रनों पर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है। धीरे धीरे टॉर्पेडोज खाना अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होता हुआ और धीरे धीरे ये मैच वही FC कृष्णनगर के हाथों से फिसलता नजर आता हुआ। निस्संदेह एक घातक गेंदबाजी की इस वक्त जरूरत है वही FC कृष्णनगर को इस मैच में कमबैक करने के लिए, लेकिन मौका जरूर उनको है इस मैच में कमबैक करने का। ये गेंद टॉप एज, इस बार मौका, सर्टेनली दैट इज एन चांस। और इस बार ये विकेट गिर चुका है। जलाल की पारी समाप्त, 3 ओवर की समाप्ति, 23 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर, 23 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ओवर्स। Torpedoes Kana looking in a comfortable track now. 12 to get from 3 overs with the average of exactly, with the required run rate of exactly 4 runs per over. And at this situation, the target seems to be much easier for them. What will happening in the remaining their last 3 overs? अंतिम 3 ओवर में उनके पारी में क्या क्या होता है, ये अब आपको जानकारी देंगे मेरे काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अब्दुल समद। आइए समद, धन्यवाद, थैंक यू। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಗೋಪಿಯವರೇ. 18 ಎಸೆದ ಆಟ ಬಾಕಿ ಇದೆ. 12 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಥಮ ಎಸೆದ ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಚುಕ್ಕಿ ಆಟದ ಸರದಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಪಂದ್ಯ ಕುತೂಹಲ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು. YFC ತನ್ನ ಆ ಭದ್ರ ಭೊಗಸೆಯೊಳಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಪ್ರಯತ್ನ, ಆದರೆ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇತನ್, ಇದು ಅಜಯ್ ಕೈಕಂಬ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡದ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆ ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕಾಗಿ ಆಡಲು ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ 3ನೇ ಎಸೆತ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯಿಂದ ಚೆಂಡು ಜಾರಿದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಆ ಚೆಂಡನ್ನು ಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ 3 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಬಹಳ ಹಿಡಿತ ಬರ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ರಂಜಿತ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟಾರ್ಪೆಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ. 4ನೇ ಬಾರಿ ರಂಜಿತ್ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ್. ಈ ಬಾರಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ದಾಳಿ. ರಂಜಿತ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮನ ಮುಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಎಸೆತಗಳು ಕೂಡ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಒಂದು ಬೈ ಮೂಲಕ ಒಂಟಿ ಓಟ ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ರಂಜಿತ್ ತನ್ನ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 11 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಈ ಬಾರಿ ಒಂಟಿ ಓಟ ಸುಲಭದಲ್ಲಿ, ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಅಶೋಕ್ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ 25ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ. ಚೇತನ್ ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಂಜಿತ್ ರವರ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ. 10 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂಥ 13 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ರಂಜಿತ್ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಎಸೆಗಾರ ರಂಜಿತ್. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ
ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ ಆಫ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗೆತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷಮಿಸಿ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. 7 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8 13 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. 13 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ರಂಜಿತ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಅಶೋಕ್ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿ ಎಸೆತ, ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬೈ. ಇದು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೈ ಓಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಓವರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಈಗ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂಥ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 8 ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಈಗಾಗಲೇ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಈ 2 ತಂಡಗಳ ವಿಜಯೀ ತಂಡವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡುವ ತಂಡ ಯಾವುದು? ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ. ಯಾವ ತಂಡ ಬರಬಹುದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ? ಯಾವ ತಂಡ ಕಣ್ಣಿಡಬಹುದು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನನಸಾಗುವ ಸುಸಂದರ್ಭ ಇದು. 12 ಮುಂದೆ 8 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದಾಮೋದರ್ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೇತನ್. ಈ ಬಾರಿ ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಾಮೋದರ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನಸೂರೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆಟಗಾರನ ಚಲನವಲನವನ್ನು ಅರಿತು ಎಸೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯಲು ವಿಫಲರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಾಮೋದರ್. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಬಂದಿದೆ. 6 ಬೇಕಾಗಿದೆ ಉಳಿದಂತಹ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 12 ಮುಂದೆ 6. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಳನ್ ಪಿಂಟೋ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀರಾಜ್. 12 ಮುಂದೆ 6 ದಾಮೋದರ್. ಈ ಬಾರಿ ಅಶೋಕ್ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್. ಕೇವಲ 5 ಬೇಕಾಗಿದೆ 11 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. ಪವಾಡ ಸಂಭವಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ 35. ಇಲ್ಲಿ 3 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 12 ಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಎಸೆತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 4 ರನ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 5ನೇ ಓವರಿನ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿತ್ತು. ಈಗ 31 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅಶೋಕ್ ರವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ದಾಮೋದರ್. ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಅಶೋಕ್. ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. 32 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ದಾಮೋದರ್ ಚೇತನ್ ರವರಿಗೆ ಸೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಚೆಂಡನ. ಚೇತನ್ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿ ಆಟಗಾರ. ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ ಚೇತನ್ ರವರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಗೆದ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸತತ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಸೋತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯ ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಅವರ ಮನದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಗೆಲುವಿನ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಬಹುದು. ಆಗಲಿ ಎಂಬ ಆ ಆಶಯಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಿಂದ ನಾವು ವಿದಾಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. YFC ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡಕ್ಕೆ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಇದೆ. 10 ನಿಮಿಷದ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದಾರೆ
ಬಹಳಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 2 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 7 ರನ್ನು ನೀಡಿ ಕೃಷ್ಣನಗರ ತಂಡವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಶೋಚನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ತೌಸೀಫ್ ರವರಿಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಒದಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೌಸೀಫ್ ರವರು ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಳಿಗಾರ ಶರಣ್ ಇವರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಶರಣ್ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಬಹಳಷ್ಟು ರಭಸದ ಎಸೆಗಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ವಿಜಯದ ದಡ ಸೇರಿಸಿದ ಓರ್ವ ರೂವಾರಿ ಶರಣ್. ಈ ಪಂದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಶರಣ್ ರವರು ತೌಸೀಫ್ ರವರಿಗೆ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ನಂತರ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ.
Welcome back and request to two teams captain, the captain of Fast Track Warriors as well as captain of Torpedoes Khana, please report here immediately for the toss. ದಯಮಾಡಿ ಎರಡು ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯಾಗಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಟೀಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ದ ಟಾಸ್. So everything is going to be a fine year. So spectators all looks like they are ready here to enjoy this semi-final. Will going to be the finalist, and we can see in the screen here monitor and Altaf Fall Party along with him Imran. Imran, the admin of blood donors Mangalore, and along with some the supporters, big supporters of cricket, enjoying the game of cricket here. Now we're going to start off the semi-final. And in the middle, Mahesh and Anif of Young Friends Urwa are doing a lot of hard work here. Mahesh, the groundsman, as well as the man who are working in the scoreboard. And I think Bedra Media has got one new cameraman, Arshad of Young Friends Urwa, has got a new job in Bedra Media. He is operating camera in our commentary box. Arshad, the very aggressive and explosive left-hand batsman. Arshad using a camera here. One of his hobby, photography and videography, and is just using the camera of Bedra Media for this semi-final. So before the start of this big semi-final, and once again it's time to announce the names of the donors who really contributed heartily for the success of this cricket tournament. Leading from the front, one of the main donor of this cricket tournament, Venkatesh Bandari, Mumbai, Uday Pujari, Balalbag, Jayaprakash Shetty, Bandaramane, Bashir, BC Road, Srikanth Shetty of Vijayalakshmi Cricketers, Nitin Kotari, Amlamagaru, Nazir and Yasin, Vishal Lobo, Pandeshwar, Suhan Lobo, Alvin Richard, Anwar Bajal, Manukumar Udupi,
Naveen Banjan, Vinu Shetty, Narla, Manoj Shetty Chilimi, Rakesh Salyan Chilimi, Karthik Shetty, Suratkal, Vijay Kumar Bangalore, Rakshit Amin Chilimi, Mithun Ashok Nagar. So toss is going on here, and Torpedoes Khana, captain and captain of Fast Tech Warriors, I think, and Salim of Torpedoes Khana is in the center doing the tossing ceremony along with Tilak, along with the two officials, and Imran tossed the coin. Call from Torpedoes, but I think Imran of Fast Tech Warriors captain won the toss, and they yet to decide whether going to ball post or bat post. Torpedoes Khana not happy to see that they lost the toss. Of course, winning the toss is important, but not as much of important. More than toss, I think the performance is going to be very important here. And wait and see what Fast Tech Warriors will going to do here. By seeing the condition, the cloudy weather condition, it might be the decision going to be very crucial here. By seeing the previous two matches, of course, the Fast Tech Warriors depended in the previous match 39 runs, so they may be thinking about why not in the semi-final we are going to bat first so that we can depend. At the same time, Torpedoes Khana is also thinking about if they give them to bat second, and I think they will going to be happy because they chased down 34 quite easily, and in the previous match. It seems to be very interesting, and wait and see what Fast Track Warriors will going to decide whether going to bat post or ball post. But discussion is going on here between all the players of Fast Track Warriors. Neeraj is always the key man, being the experience, and they wanted to get his service. And again, Torpedoes Khana, they are also having some game plan along with their senior most players. Salim, one of the senior most player of Torpedoes Khana, along with some senior most players are discussing about the game plan. And cameraman here, Arshad, once again enjoying his duty. Might be next year thinking about he will going to do his own media. Might be Irfan having a little bit challenge next year in live telecast. So decision is pending. Now I think they are walking towards the middle. Fast Track Warriors, after winning the toss, they elected to field first. At last, a long discussion. They is elected to field first, and suddenly I think the condition seems to be a little bit better for the bowlers, so that the captain of Fast Track Warriors thinking that after their innings, after the innings of Torpedoes Khana might be a little bit of bright sunshine, little bit wind in the ground, maybe a little bit easier for them to chase down, so that they are elected to field first, and wait and see how they will go into restrict the batsmen of Torpedoes Khana. And in the 6 overs match, I think the 40 to 45 is going to be a good score to depend, and wait and see how well Torpedoes Khana will going to get those runs in their stipulated 6 overs. Coming to these two teams, how they came into the semi-final. It's really the fantastic performance from both the teams in this the knockout stages of the Group A. First we are coming to Torpedoes Khana. They defeated Urwa in their first match. Then they defeated Attackers Kudla as well.
And in the quarter final, they defeated YFC Krishnanagar in the previous match. And just like and Fast Tech Warriors, a fantastic performance. They came into this tournament and underdogs. Never looks like they will going to be in the semi-final, but because of their fantastic performance, they came into the semi-final, so that both the teams has got opportunity to occupy the place in the finals. First delivery, oh, that was a spectra wide. This is a big wide, defeating everyone. Ball running down to deep third man boundary. Oh my goodness! The fielder looks like, I think he's safe. The might be safe. Look at that one. The fielder chasing the ball. I always mentioned it's going to be very dangerous because the wall there in the deep third man. I think not that much of height. Very difficult when you are running hard, controlling your speed. Look at that fielder. Oh my goodness, he is safe. And ball is saved. Discussion is going on. We wait for the umpire signal. That is a wide. Then 2 runs. Yes, 3 runs total. So very good save from the fielder there. Absolutely athletic work. Outstanding footwork. As scoreboard is 3 on the board. 3 on the board, and without loss of any wicket in the first over. And I think he might be got a little bit injury for his right hand while he was trying to stop that one. There was right behind that boundary line wall. There is one shop. I think his hand is just hitting that roof, and because of that he has got an injury. And certainly we have first aid here, and Anif of Young Friends Urwa, the first aid doctor. The doctor going to the, just look at it in the replay then. That was outstanding save. That was outstanding save by the fielder. In the last moment he's got a very good footwork and saving a certain boundary for his team. So tomorrow will going to be the big day, and from tomorrow onwards there will be league matches to be played between 8 top seeded teams. They are going to clash here. The league league format. In this league format, I think it's going to be a very interesting to see. And I want to tell the matches of tomorrow's. KFC Kodikal takes on Team Elegant in the first match. And in the second match, NM Japu takes on Young Friends Urwa. It's going to be a high voltage matches. The second match itself is going to be very interesting. Young Friends takes on its arch rival NM Japu. And the third match, KFC Kodikal takes Gori Young Boys. In the fourth match, Sneha Malamar takes NM Japu. That is the fourth match. That was the first 4 matches of day number 4. And the schedules of league matches. And once again, on behalf of organizers, I would like to invite all cricket lovers that you are the one responsible for the success of cricket tournament, and please come and support this Kudla Premier League Season 6. Tomorrow going to be a very interesting day of cricket. And here the bowler Ashad, after bowling the spectra wide, and now he's bowling us right arm around the wicket. Bowls to Akram. Akram lofted that one just over the infield, but protection there in the deep in the long off region. Of course, that widest long off fielder is there. He's quickly moving towards his right, and he picked up a single. The protection has been given to the very attacking batsman Imran in the long off and mid wicket.
Now Jalal is a left-hand batsman. Straight away change in field. One fielder is going back to deep backward square leg, and one at deep wideish long on. Are the two fielders in the deep here for Jalal. Arshad bowling away from us. Right arm round the wicket to the left-hand batsman. Pass the umpire Suraj of Vijayalakshmi cricketers. This time Jalal went for the sweep shot, tried to play that one very fine, but not quite able to get that one middle of the bat. Just a single. With the addition of that single, scoreboard moves on to 5 on the board without loss of any wicket here in over number first in progress. Arshad again with a short run up. Right arm round the wicket, balls to Imran. Down the leg stamp, going to be a second wide of this over by Arshad. And extras helping Torpedoes Khana. The fast track warriors need to be very careful considering that much of extras against Torpedoes Khana. So far, fast track warriors' performance is so good. They need to continue that one these big matches as well. Lovely delivery. Wicketkeeper behind the stump. Aman fails to collect the ball. The big mistake here by call by umpire. Frustration for Arshad. And so far I think he's a young talented wicketkeeper. Aman is good behind the wicket. But this time he couldn't manage to gather the ball cleanly. And the ball is just slipping out of his hand. 7 without loss of any wicket. Arshad again back to his bowling mark. Short third man. There is a gully, short cover point, short extra cover mid off. No fielder in the deep in the offside, but all to precaution given in the onside. Deep backward square leg and deep long on. This time Jalal loved it. Oh, what a catch! Neeraj is outstanding. Neeraj is outstanding. Look at the crowd here. Why not? They want to see their favorite player Neeraj in this action. Look at it in the replay. Outstanding. Never looks like he's above 40. Just is looks like a 20 years old young talented player having that catch. Absolutely terrific commitment there from Neeraj. Diving to his right and oh my goodness, he is just maintaining his body ball and balance while he was just diving to his right, rolling 3 times in the ground and really not missing the opportunity to gather the ball very tightly from his hand, and he got a good catch. Absolutely terrific. Some supporters there at short fine leg. There are so many supporters we're having. Some the players of Vijayalakshmi cricketers, former cricketer. Some crowds we can see in the monitor. That was the crowd always backing up Vijayalakshmi cricketers. There we are having some big names of Vijayalakshmi cricketers. Gokul. There's Lakshmi Das, and we can't say clearly here, but they are all the big supporters of cricketer. Every time where there's a cricket tournament, they are always going to cheer the players, cheer this kind of catches down the leg stump. They're going for the big one, Imran, and missed it completely. The batsman picked up a single in the form of Akram, little protection, picked up a single here. 8 on the board for the loss of 1 wicket. So that wicket, the wicket of Jalal, definitely going to be a little bit, the spirit of the players will definitely going to galvanize. And that's why it's so important we are having some players like Neeraj in your playing 11. And sometimes age is just a number. When you are having some dedication, determination to perform. Maybe Neeraj, I think so, 42 to 44 years. But still, he's been outstanding. Going for the second, but going against because Taslim is a fielder there in the deep backward square leg. Is very quick in the negation, so batsmen have to settle for the single. With that single, the first over completed, then they got 9 valuable runs. Even they lost the wicket of Jalil, but the bowler bowling some wide deliveries, some extras is considered in that over. Still, I think Torpedoes Khana, they got 9 runs on the board.
Now second over will going to start from the Venkatesh Bandarian. Warm welcome to Naveen Banjan, one of our the supporter, the sponsor of this cricket tournament. Always is backing up when there was the KPL, Kudla Premier League. Very good supporter of the cricket and this Kudla Premier League as well. Welcome on behalf of organizers and on behalf of all cricket lovers. So from the far and Taslim will going to start his pressure. So far he is outstanding in his bowling, and the one problem that is need to control that wides, otherwise he is very effective if he bowls a good line and length. And wait and see how Taslim will going to bowl, and wait and see how this man, the new batsman Sharif, facing Taslim. Right arm of the wicket, Sharif went for the big shot, not quite getting hold of that stroke properly. Ball went towards the captain of Fast Tech Warriors. Correction, Imran is the captain of Fast Tech Warriors. Ashraf Kancha is also former cricketer of Vijay Lakshmi Cricketers. He played for Vijay Lakshmi Cricketers for some years. Ashraf Kanchar, 10 for the loss of 1 wicket. From the far end, Taslim bowling right arm over the wicket to Akram. Akram has got a very good tournament from his bat. Oh, beautifully bowled. Beautiful ball. Chance of run out. It does not strike a side. It's got directed. The one more wicket is back into pavilion. Now I think Fast Tech Warriors are back strongly by picking up 2 wickets. Sharif this time a misunderstanding between the wicket. Look at that one. Akram doesn't want to run, but Sharif wants to run, but it's too late. And look at the sharp shoot here from that fielder. Absolutely magnificent to watch. So one more wicket is back into pavilion of Torpedoes Khana. Lost their wicket number 2, and Torpedoes Khana might be a little bit under pressure there. They got runs actually. There's no problem whatsoever. The runs is concerned. They got 10 runs in 8 balls, but lost 2 wickets. Some outstanding fielding performance here by the fielders. I think Imran is the fielder, one of the outstanding fielder. I still remember when he was representing Gori Young Boys. Aman, the wicketkeeper, I think, shy the stumps at non-strikers, and very young, talented Aman from Mudibidri is outstanding in this tournament. Behind the wicket, from the bat, and here is Taslim bowls down the leg stump. Off stop by Aman because very difficult when ball is down the leg stump. And Taslim, little bit absence of mind, is turning back to his bowling mark. He's not really bothered about gathering the ball. He's looks like he's having a lot of pain in his right hand, the bowling hands, because he's putting a lot of effort for that delivery. So 2 more to the total, and 1 plus 1, 12 for the loss of 2 wicket in the over number 2 in progress. Taslim once again back to his bowling mark from the Venkatesh Bandarian. This is the last and the final over of the power play. Ashok facing Taslim. Taslim right arm over the wicket bowls. Again, lovely delivery. Ashok tried to turn that one in the onside region, but because of that slower one there from Taslim, the batsman couldn't manage to do that. So that one played that one along the carpet back to bowler, and there is no chance of any run at all. Score remains on 12 for the loss of 2 wicket. The very good crowd here in this semi-final of this prestigious Kudla Premier League Season 6 in right of our commentary box, almost the full ground. And here is the next one, right arm over the wicket balls. Ashok little bit struggling, not really moving his feet, but we can see that Taslim didn't looks like he's a 100% fit here. A little bit problem after delivering the ball, and
but he managed to get the line and length. And the last two deliveries, he able to stop the batsman from the runs. Two dotted deliveries, good comeback. 12 for the loss of 2 wickets. Venkatesh Bhandari and Taslim again with the short run up. Pass umpire Roland Pinto. Balls. Ashok drives it on right in the gap. And Neeraj once again. Excellent piece of fielding there by Neeraj. Once again, perfect commitment in the irrigation. Looks like once that ball is went in the gap between extra cover and mid off, it's going to be a chance of boundary then. But Neeraj once again quickly moving to his right and collects the ball, and there is no chance of more than single. Just a single. 13 for the loss of 2 wicket. That brings Akram into strike now. So far Akram very quiet, just batting on 1 run, and is facing Taslim. Akram again now going for the big shot. Appeal for leg before wicket, but ball is definitely going down the leg stump, and leg by call by umpires. So 2 overs completed. It's a 14 for the loss of 2 wicket. Torpedoes Khana searching for the right track. Of course, they are in the right track as for the run rate, and they lost to 2 wickets. Now 4 overs remaining. Wait and see how many runs they will going to score in remaining 2 overs. Coming back to Neeraj, I think he is just 3 or 4 years younger than me. We are studied in the same college, Gokarnatheshwar College, till 2nd PU. Then he went for the Kendra College, and he has played some overarm cricket as well. Even we played division match both for Gokarnatheshwar College team. My best friend, best colleague, even we are playing against each other. But always he is a very friendly nature, very decent, very disciplined, with good character. That's so important for the cricketer. Not the performance is important, but at the same time character which matters. It takes each and every players into high level. 14 for the loss of 2 wicket. Sahil, young talented bowler for the side, bowling to Akram. Sahil so far is got a magnificent tournament. What a great tournament. It's not so easy, I will tell you. Whenever representing the tournaments like the big tournament, like prestigious tournament like Kudla Premier League, coming and performing is not that much of easy. Handling the pressure is not easy. But this man, the young talented Sahil, did a great job for his team, and this 4 matches they played this time. Just I'm talking about, that was a line and length, so good. I was trying for the run out, but I think once it was, there is no backup, but there is a backup, I will tell you. Otherwise, going to be the overthrow might be costing a lot here, and the batsman able to complete that couple of runs in the irrigation. And once again, it's a very good line again. Ball there by Sahil, slight leg cutter in the irrigation. Akram got a little bit outside edge of the bat, and Sahil on his follow through tried to make the run out in the irrigation, but wide throw coming from Sahil. 16 on the board for the loss of 2 wicket in the over number 3 in progress. Sahil once again bowling away from us. Right now over the wicket, balls to Akram. Again, this is the one area. Sahil is to little bit work hard, because you need to see that we was bowling a leg cutter. When you're bowling the leg cutter, if you're bowling that outside the line of half time, that ball is definitely going further away. That's why he's getting some wide deliveries. So need to be see where to pitch the ball. And 17 on the board. Previous delivery is a wide. Right over the wicket. Sahil balls. This is a good line. Hoisting it on down to extra cover region, but fielder is in deep. Fielder there in the deep in the boundary line, so that the ball is landed safely just in front of that extra cover fielder. And with that single, scoreboard moves on to 18 for the loss of 2 wicket. Akram every time is looking for some boundaries there, but the bowlers are not really setting Akram for the boundary. But still, I think it's a good score on the board for Torpedoes Khana. Sahil balls, beautifully bowled, fantastic leg cutter. But here is a direct hit. Now umpire will going to see. Once it looks like umpire Roland Pinto. First he is lifting his right finger, then his right finger. Once I thought he's given addition is out, but he's done showing the right finger. Then he's calling that square, that he will going to get help from a third umpire. Will it going to be out or not out? Touch and go. Going to be very interesting. And umpire Sriraj, third umpire Sriraj will going to examine with our tactician of Bedra Media, Irfan, having some
work here. That was a sound of the heartbeat, not mine. It's maybe the heartbeat of supporters of Torpedoes Kana, and even that supporters of Warriors. Very, very close call. When there is the direct, it is going to be very difficult and to see. Of course, we know that technology is almost advanced technology we having, but here want to see because the wicket keeper almost coming right in front of that camera. But at last, it was after examining that Siraj, the third umpire, signal it's not out. Akram survives. Heartbeat looks to be a little bit coming down of supporters of Torpedoes Kana, and after seeing that there is no red light, there is no green light to signal here the decision of third umpire, but signal coming from third umpire is not out. So 19 for the loss of 2 wicket. Batsman survives. Sahil away from us. Right arm over the wicket. Lovely leg cutter. Slow leg cutter. Very difficult for the batsman to judge his line and length. But this Akram giving full respect to the delivery. Not only gave the respect, but soft hand comes into play. That was a good thinking by Akram. After playing that defense, you need to realize that there will be a single, and he picked up a single. 20 on the board for the loss of 2 wickets. Sahil, right arm over the wicket, he bowls. Improvisation, quite nicely. The Ashok right in the gap. Fielder running back. A good piece of fielding. They're coming back for the second. What an intelligent ball running between the wicket. The Ashok just looks like the sprinting. He's going for the 100-meter race. Never thought that the fielder thought that it might be a second run because ball is not far away from that fielder. But look at Ashok, how quickly he's calling his partner for the second run. How quickly he's going to that non-strikers, and outstanding running between the wicket. 22 for the loss of 2 wickets. And whenever you're running like that, then outfielder started to feel the pressure. And that was very, very important as far as the running between the wicket is concerned. You have to complete your first run very quickly. Again, going for the reverse sweep, appeal for LBW, but I think there is a bat is involved rather than the leg. Umpire Suraj knows that it's a bat. So over number 3 completed after completion of 3 overs. It's 23 on the board for the loss of 2 wicket, and run rate is just under 8 runs per over run rate here. But I will tell you one thing here is that that's a good score. 23 in 3 overs is a good score in this condition. And wait and see how many runs they will go into score in the remaining 3 overs. And before that, over will go into commence. Sudden change in commentary box as well. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. In the Gopi 23 in 3 overs. I think more than the contribution from the bat, I think opposition fast track Warriors considered some runs in the form of extra, and that extra certainly will going to be a big drawback here for fast track when they're going to chase those runs. That extras will going to play a big role because they're playing against Torpedoes Kana, one of the team which is the team in very good form after clinching some prestigious cricket tournament in this season. Looks like if fast track Warriors wanted to win the match, they have to bowl really very well. Remaining 3 hours, need to restrict the opposition less than 40. Otherwise, it's going to be very difficult for fast track Warriors to chase those runs. It's over to Gopi for the further explanation of the match in our national language. एग्जैक्टली सतीश, जैसा कि आपने फरमाया 3 ओवर का खेल बाकी है और किफ़ायती गेंदबाजी इस वक्त करनी होगी गेंदबाजों को फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के, क्योंकि 3 ओवर में 23 रन बन चुके हैं. अच्छा खासा रन रेट है, 7.66 रन प्रति ओवर. और मैं समझता हूं बचे हुए 3 ओवर में अगर टॉर्पेडोस काना कम से कम 20 के ऊपर भी रन बना लेता है तो निस्संदेह उन्हें एक चुनौती भरा लक्ष्य वो यहां पर प्रदान कर सकते हैं. और इसी के साथ दूसरी बार देखते हैं क्या होता है बोलकर. तो जहां तक सवाल है, 3 रन बन चुके हैं 2 विकेट के 23 रन बन चुके हैं 2 विकेट के नुकसान पर. 3 ओवर की समाप्ति और चौथा ओवर यहां पर शुरू होता हुआ. तस्लीम अपना दूसरा ओवर यहां पर प्रारंभ करते हुए, और जैसा कि मेरे काबिल दोस्त सतीश ने जिक्र किया था, बिल्कुल सही बात है. इस वक्त बचे हुए 3 ओवर में अगर
टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाज ज्यादा से ज्यादा रन बटोरते हैं तो निस्संदेह दबाव फास्टेक वॉरियर्स के बल्लेबाजों के ऊपर आएगा जब वो बल्लेबाजी पर उतरेंगे। तो इस वजह से फास्टेक वॉरियर्स को इन 3 बचे हुए ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी यहाँ पर करनी है और कम से कम रन के अंदर रोक कर रखना है। अगर फास्टेक वॉरियर्स के गेंदबाज टॉर्पेडोज खाना के बल्लेबाजों को 40 रनों के अंदर रखकर रोक कर रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके लिए इस मैच में मौका है विजय दर्ज करने का। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है, क्या टॉर्पेडोज खाना उन्हें इसका मौका प्रदान न करेंगे या नहीं। तो चौथा ओवर इस वक्त शुरू होता हुआ। तस्लीम फील्डिंग में जमावट करने के बाद दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद इस बार ड्राइव करना चाहे, एब्सोल्युटली परफेक्ट वन दिस टाइम, गॉन फॉर ड्राइव, मिसिंग द लाइन कंप्लीटली। और स्ट्रोक्स खेलते समय बल्ला बैट जमीन पर जिस तरीके से बल्लेबाज ने मारा था उसकी वजह से उनके हैंडल पर जो हाथ उन्होंने हैंडल पर पकड़ा था उस हाथ पर जोरदार एक झटका लगा और आखिरकार वो दर्द इस वक्त कुछ हद तक महसूस करते हुए। और जहाँ तक सवाल है रनों का तो रन इस वक्त नहीं मिलेंगे। 23 रन बन चुके 2 विकेट के नुकसान पर। बेहतर गेंद थी तस्लीम की पहली गेंद और अपनी ओर की अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए चौथा ओवर यहाँ पर प्रगति पर। गेंदबाज तस्लीम फील्डिंग में अभी भी जमावट करते हुए डीप मिड विकेट बैकवर्ड स्क्वायर लेग लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ थोड़ा सा वाइडर तैनात दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए और ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ये गेंद रिवर्स शॉट गेंद को खेलना चाहा ऑन टू द स्टंप्स और इसी के साथ एक और विकेट गिर चुका है। अशोक की पारी समाप्त। गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहता लेकिन बिल्कुल सीधी रफ्तार के साथ गेंद फेंकी थी और आखिरकार रिवर्स शॉट खेलने के प्रयास में चूके और गेंद उनके बल्ले को वंचित करते हुए सीधे जा टकराई ऑफ स्टंप पर, गिलने अब बिल्स ऑफ होते हुए और इसी के साथ एक और विकेट यहां पर गिर चुका है। 23 रनों पर 3 विकेट गिर चुके हैं चौथे ओवर के शुरुआत में। तो पहला सेमीफाइनल मैच इस केपीएल एडिशन 6 2021 श्रृंखला के अंतर्गत खेला जाता हुआ और कुडला प्रीमियर लीग 2021 इस मेगा श्रृंखला का शानदार तरीके से आयोजन किया है यंग फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड और फ्रेंड्स उर्वा रजिस्टर्ड इनके सहयोग से श्रीमान तिलक गुरु इनके सारथ्य में ये श्रृंखला एक बेहतरीन प्रगति करती हुई है और निस्संदेह इनके 25वें वर्षगांठ पर इन द सेलिब्रेशन ऑफ द 25th ईयर दे आर ऑर्गेनाइजिंग सच wonderful tournament in this ground in the name of KPL Kudla Premier League 2021 the festival of cricket क्रिकेट का त्योहार यहां पर खेला जाता हुआ। तो निस्संदेह यहां पर एक और इनाम घोषित किया है श्रीमान सुनील बोलूर ने हर छक्के के लिए इस मैच में, सिर्फ इस मैच के लिए दोनों टीमों में से कोई भी बल्लेबाज अगर छक्का लगाता है तो उसे 500 रुपए का नकद पुरस्कार श्रीमान सुनील बोलूर इनकी ओर से दिया जाएगा। इफ एनी बैट्समैन इन दिस मैच पर्टिकुलरली इन दिस मैच हिट अ 6 he will be get 500 rupees cash prize from Mr. सुनील बोलूर। ये गेंद अच्छी गेंद थी इस वक्त पॉइंट पर पहुंची और जहां तक सवाल है रनों का तो रन्स मिलेंगे 24 रन 3 विकेट के नुकसान पर और चौथा ओवर यहां पर प्रगति पर। तस्लीम एक बार फिर से गेंदबाजी यहां पर आगे बढ़ाते हुए स्ट्राइक इस वक्त लेने के लिए तैयार। अकरम, हालांकि अकरम के सामने 3 विकेट जरूर गिर चुके हैं लेकिन एक छोड़ पर वो इस वक्त डटे हुए अपने टीम के लिए एक बेहतर पारी खेलते हुए। तस्लीम की गेंद अकरम के लिए ड्राइव करना चाहा, विकेट कीपर पहुंचे तेजी के साथ, रन थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी वाइड और इस वजह से बल्लेबाज तेजी के साथ एक रन यहां पर पूर्ण कर चुके हैं। स्टोक्स के साथ ही दौड़ पड़े थे और आखिरकार बल्लेबाज को कोई दिक्कत ही महसूस नहीं हुई, उन्हें एक रन पूरा करने में 25 रन बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। निश्चित रूप से एक कड़ा संघर्ष यहां पर होता हुआ इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए इस पहले सेमीफाइनल मैच के पहले सत्र में और यहां पर बराबर का संघर्ष जारी है। तस्लीम गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद अच्छी गेंद ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, एक्स्ट्रा कवर पर स्वीपर मौजूद, अकरम दूसरा रन लेना चाहते हैं, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, नजदीकी मामला और इसी के साथ ये विकेट गिर चुका है। जोखिम भरा दूसरा रन
अक्रम लेना चाहते थे, भुगतान उन्हें करना पड़ा। इससे पहले कि वो नॉन स्ट्राइक रन पर पहुंचे, सीधा थ्रो पहुंचता हुआ डीप एक्स्ट्रा कवर फील्डर का गेंदबाज तस्लीम के हाथों में, और तस्लीम में थ्रो को रिसीव करने के बाद तेजी के साथ गिल्ली बिल्स उड़ा दिए और अक्रम अपने क्रीज से कुछ गज बाहर ही रह गए, और इसी के साथ ये विकेट नंबर 4 गिर चुका है। और मैं समझता हूँ अक्रम का विकेट कुछ हद तक ड्रॉबैक साबित हो सकता है टोरपेडोज के लिए, क्योंकि अक्रम बेहतर बल्लेबाजी यहां पर कर रहे थे, रनों की रफ्तार को बरकरार रख चुके थे। अब उनका विकेट गिर जाने के बाद सडनली क्रीज पर मौजूद दोनों बल्लेबाज नए हैं, और इन दोनों बल्लेबाजों को इस वक्त क्रीज पर जमने के लिए कुछ समय लगेगा, और यहां पर एक सही मौका है फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के गेंदबाजों को बाउंस बैक करने का। यहां पर वो एक कसी हुई गेंदबाजी करते हैं, तो निस्संदेह कम से कम स्कोर में टोरपेडोज को रोक कर रख सकते हैं। और देखते हैं क्या होता है बचे हुए गेंदों में। और गेंदबाज इस वक्त तैयार, तस्लीम एक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 3 रन अब तक प्रदान कर चुके हैं, और अगली गेंद लेकर इस वक्त तैयार। नए बल्लेबाज का आगमन हो चुका है, सदाकत और सिनान इस वक्त स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। तस्लीम दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए, ये गेंद अच्छी गेंद, ड्राइव किया, खूबसूरत स्ट्रोक, वाइड ऑफ द एक्स्ट्रा कवर, 1 रन मिलेगा। दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते हैं, रन नहीं मिल सकता है, ओवर थ्रो हो चुका है इस बीच, और 2 रन यहां पर मिल चुका है। लगभग पिच के बीच में थ्रो आया था, और आखिरकार बल्लेबाज के पास मौका था, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता स्लिप डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका था दूसरा रन प्राप्त करने का। तो 2 रन यहां पर मिल चुके हैं। 28 रन 5 रन इस ओवर में बने तस्लीम के, एक बेहतर ओवर साबित होता हुआ। और जहां तक सवाल है बचे हुए ओवर्स का, तो 2 ओवर का खेल अभी भी बाकी। 28 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर्स फॉर टोरपेडोज after being losing the toss and put it to bat by Fast Track Warriors in the first semi-final of KPL Edition 6 2021। और इस वक्त 5वां ओवर कमेंटेटर बॉक्स एंड की ओर से शुरू होता हुआ। शाम के ठीक 6 बज चुके हैं, धूप बिल्कुल मैदान से गायब हो चुकी है। रास्ते के बाहर जो रास्ते की मैदान के बाहर जो रास्ते की बत्तियां हैं, स्ट्रीट लाइट्स इस वक्त जल चुके हैं, और इस ढलते हुए वक्त के साथ साथ रोशनी भी यहाँ पर कम होती नजर आती हुई। और इसलिए मैं दरख्वास्त करता हूँ कि दोनों टीमों के सदस्यों से कि कृपया वे खेल को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। शाहिल गेंदबाजी इस वक्त प्रारंभ करते हुए, और जहां तक शाहिल का सवाल है वो इस वक्त गेंदबाजी करेंगे दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार, पांचवां ओवर शुरू होता हुआ टोरपेडोज की पारी में। शाहिल दाहिने हाथ ओवर द विकेट, शफल हो चुके हैं पूरी तरह, गेंद को इस वक्त स्वीप करना चाहता अपील होते हुए, और इसी के साथ यह विकेट गिर चुका है। स्टंप्स को, तीनों स्टंप्स दिखाई देने लायक पूरी तरह शफल हो चुके थे बल्लेबाज। ऑन साइड पर गेंद को स्वीप टॉप स्कूप करना चाहता, लेकिन गेंद एक्स्ट्रा बाउंस होकर टॉप एज पर लगती हुई, और शॉर्ट फाइनल के फील्डर ने आखिरकार कोई गलती नहीं की। 28 रन 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि 5वां ओवर उनकी पारी का यहां पर शुरू हो चुका है। कल मंगलोर के टॉप सीडेड टीमों के मैचेस खेले जाएंगे, ए और बी पूल के, और कुल मिलाकर 8 टॉप सीडेड मंगलोर की टीमों को 4 टीमों के 2 विभाग में डिवाइड यानी प्रत्येक किया गया है। और जहां तक सवाल है मैच का, तो मैच कल होगा। द फर्स्ट मैच विल बी प्लेड बिटवीन KFC क्रिकेटर्स का मुकाबला होगा टीम एलिगेंट के साथ। दूसरे मैच में भिड़ेंगे एनएम जप्पू और यंग फ्रेंड्स उर्वा के बीच में। तीसरे मैच में KFC कोडिकल का मुकाबला होगा गोरी यंग बॉयज का। मैच नंबर 4 played between स्नेहा मलेमार वर्सेस एनएम जप्पू। मैच नंबर 5 कमिंग अप, KFC कोडिकल विल टेक्स ओवर आदि महेश्वरी, और छठे मैच में भिड़ेंगे स्नेहा मलेमार यंग फ्रेंड्स उर्वा के साथ। 7वां मैच होगा गोरी यंग बॉयज और श्री आदि महेश्वरी क्रिकेटर्स के बीच में, और 8वां और अंतिम मैच कल का खेला जाएगा श्रीदेवी जप्पू और स्नेहा मलेमार के बीच में। तो ये थे कल के मैचेस के शेड्यूल्स, और मैं दरख्वास्त करता हूं कि कल जो भी टीम पहला मैच खेलेगी वो सुबह 8:15 पर यहाँ रहना जरूरी है। ನಾಳೆ ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ 8:15ಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಾಜರಾತಿಯನ್ನು ಕೊಡತಕ್ಕದ್ದು ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗಮನಿಸಬೇಕು। ನಾಳೆ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದ ಎರಡೂ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು। और जहाँ तक सवाल है 5वां ओवर यहाँ पर शुरू हो चुका है,
और गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए दाहिने हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए ये गेंद, इस बार गेंद को उछाला, एक्स्ट्रा, ब्रिलियंट, दैट इज एन ब्रिलियंट अटेम्प्ट बट हिज एफर्ट गॉन इन वेन, गेंद को लपक नहीं पाए, लेकिन ऐसा कहना पड़ेगा बेहतरीन प्रयत्न इस गेंद पर उन्होंने किया था। देखिए किस तरीके से डाइविंग लगाई थी, गेंद को उछाला था इस वक्त, एक्स्ट्रा कवर फील्डर गेंद तक पहुंचे लेकिन गेंद उनके हाथों से चूकी इस वक्त, और आखिरकार बल्लेबाज के लिए जीवदान और 1 रन यहां पर मिल चुका है। 30 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 30 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और गेंदबाज एक बार फिर से तैयार, दाहिने हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए शाहिल, दाहिने हाथ ओवर द विकेट, ये गेंद इस बार खूबसूरत स्ट्रोक, एक्स्ट्रा कवर की दिशा में, स्वीपर इस वक्त मौजूद, 1 रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़ पड़े, थ्रो पहुंचा लेकिन थ्रो काफी धीमा, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। बेहतरीन स्ट्रोक, स्क्वायर ऑफ द विकेट गेंद को इस वक्त स्कूप किया था विकेट से हटते हुए, और एक्स्ट्रा कवर स्वीपर फील्डर जब तक गेंद को फील्ड करे बल्लेबाज के पास मौका था 2 रन प्राप्त करने का। 32 रन 5 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन क्रिकेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश प्राप्त करने के लिए दोनों टीमों के बीच में कड़ा मुकाबला यहाँ पर जारी है। धीमी गेंद, एब्सोल्युटली गुड वन, जस्ट चेंज ऑफ पेस, लेग कटर गेंद थी लेकिन इस गेंद को खेल दिया था बैक टू द बॉलर की दिशा में, और फॉलो थ्रू में इस गेंद को ठीक तरह से फील्ड करने में असफल, जब तक गेंद को बैकअप किया जाता सी लिमिट डाउन पर बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 33 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट। और शाहिल एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए सदाकत यहाँ पर सामना करने के लिए तैयार। शाहिल दाहिने हाथ ओवर द विकेट गेंदबाजी करते हुए ये गेंद, इस बार गेंद को उछालना चाहा, मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, 1 रन मिलेगा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 34 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। सो 5 ओवर्स हैज बीन कंप्लीटेड। जहां तक सवाल है सिनान ने अंतिम गेंद पर ड्राइव किया था शॉर्ट मिड विकेट पर, सदाकत आउट होकर पेविलियन वापस लौट चुके हैं। और जहां तक सवाल है नए बल्लेबाज का, तो अस्वाद का आगमन यहां पर हो चुका है। 5 ओवर की समाप्ति, 34 रन 5 विकेट के नुकसान पर, 34 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 ओवर्स। सो नाउ लास्ट ओवर रिमाइनिंग इन देयर इनिंग्स, और वो अंतिम ओवर वेंकटेश भंडारी मुंबई एंड की ओर से गेंदबाजी इस वक्त करने के लिए उतरने वाले हैं। गेंदबाज देखना पड़ेगा किसको इस वक्त इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी के लिए उतारते हैं। टोपी इस वक्त दी है फील्डर ने, अपने नीली टोपी को अंपायर के हाथों में। जग्गू इस वक्त गेंदबाजी शुरू करते हुए, और अंतिम ओवर शुरू होता हुआ टॉर्पेडोस कान्हा की पारी में। फील्डिंग में जमावट यहां पर चलती हुई शाम के 6:06 कहना पड़ेगा, ठीक तरह से अगर कहा जाए तो बच चुके हैं, और आज का मैच का प्रथमार्ध यहां पर प्रगति पर रहा। फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ दिस कॉम्पिटिशन इज नाउ गोइंग ऑन हियर। गेंदबाज जग्गू फील्डिंग में इस वक्त जमावट करने के बाद ओवर की पहली गेंद लेकर तैयार। जग्गू देखना यह है कि पिछले मैच में बेहतरीन गेंदबाजी के जरिए उन्होंने मैन ऑफ द मैच का खिताब अर्जित किया था, क्या इस मैच में भी वो उस सफलता के सिलसिले को बरकरार रख पाते हैं या नहीं, देखना पड़ेगा। ये गेंद इस बार गेंद को ड्राइव कर दिया, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा, थ्रो पहुंचता हुआ, क्लीन कलेक्शन लॉन्ग ऑन फील्डर द्वारा, और 1 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 35 रनों पर 5 विकेट के नुकसान पर। 35 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट इन द ओवर नंबर 6 in progress. In fact, it's the start of the 6th over. और गेंदबाज एक बार फिर से गेंदबाजी आगे बढ़ाते हुए, इस बार मिडल ऑफ द बैट कनेक्शन नहीं, बैक टू द बॉलर की दिशा में, थ्रो इस वक्त लेकिन चूका निशाना, और इस बीच बल्लेबाज के पास मौका 1 रन प्राप्त करने का। 36 4 balls now left in their innings. रन्स अभी भी सिंगल्स में बटोरते हुए, और मैं समझता हूँ तीसरे ओवर की समाप्ति के बाद जो स्कोर था 23 रन, जब सतीश ने माइक्रोफोन मेरे हाथ में सौंपा था, उसके बाद चौथे, पांचवें और ये जो छठा ओवर चल रहा है, इसमें कमबैक बेहतर कर चुके फास्ट ट्रैक वॉरियर्स के गेंदबाज। और इस बीच ये गेंद उछाला, गेंद को इस वक्त डीप मिड विकेट पर 1 रन मिलेगा, दूसरा रन नहीं मिलेगा, और थ्रो पहुंच चुका है विकेट कीपर के हाथ में। 37 लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इस ओवर में वो गेंदबाजी करते हुए, और एक बार फिर से तैयार, बाएं हाथ ओवर द विकेट इस वक्त गेंदबाजी करते हुए। तो अस्वाद सामना करने के लिए तैयार, थोड़ी से लंबे रनअप के साथ ये गेंद, इस बार गेंद को ड्राइव करना चाहा, सीधे एक्स्ट्रा
था कवर फील्डर के हाथों में. Not quite middling it, and because of that he paid the penalty. 37 for 6, and now just 2 balls now remaining in their innings. और नए बल्लेबाज का यहाँ पर आगमन होता हुआ, और देखना यह है कि इन बचे हुए 2 गेंदों में टॉप पड़ोस काना के क्रीज पर मौजूद ये दोनों बल्लेबाज और कितने रन बटोर पाते हैं. जग्गू गेंदबाजी इस वक्त आगे बढ़ाते हुए, दाहिने हाथ के बल्लेबाज सिनान इस वक्त सामना करने के लिए तैयार. और जग्गू बाएं हाथ ओवर द विकेट. ये गेंद इस बार उछाला लॉन्ग ऑन की दिशा में, 1 रन मिलेगा. ओ मिसफील्ड इस बीच, और इस मिसफील्ड की बदौलत बल्लेबाज दूसरा रन पूर्ण कर चुका है. हड़बड़ाहट में गेंद उनके हाथों से छूटी और उनके घुटनों पर लगभग पैरों पर टकराकर गेंद आई थी सिली मिड ऑन द्वारा, और 2 रन बल्लेबाज को मिले. द लास्ट बॉल ऑफ देयर इनिंग्स इज नाउ कमिंग अप. अंतिम गेंद लेकर गेंदबाज जग्गू तैयार, और बल्लेबाज सिनान इस वक्त सामना करते हुए. थोड़ा सा लंबा सा रन अप, बाएं हाथ ओवर द विकेट, दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए पारी की अंतिम गेंद लेकर तैयार. ये गेंद बेहतर, एब्सोल्युटली गुड वन. अपील लेग बिफोर के लिए नकार दिया. गेंद कुछ हद तक ऑफ से बाहर की ओर निकलती हुई स्ट्राइकर की थ्रो इस वक्त पहुंचता हुआ, और एकमात्र रन अंतिम गेंद पर जुड़ चुका है उनके खाते में, और 1 विकेट भी पतन हो चुका है. सो द इनिंग्स इज अप फॉर Torpedoes Khana. They finished with 40 for the loss of 7 wickets in the stipulated 6 overs, and now they set a wicket target of 41 for Fast Track Warriors. So Fast Track Warriors have to score 41 runs, just under 7 runs per over. That means in exactly calculation it is going to be 6.85 runs per over they have to score for victory to qualify for the mega final of this competition. This is the present target for them at this situation, and let's see can they reach the target or not. 41 they have to score in their stipulated 6 overs, and their inning starts with rejection while, और उनके पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी. 41 रन उन्हें बनाने 6 ओवर में. 41 in 6 overs they have to score, और उनकी पारी की शुरुआत यहाँ पर चंद लम्हों बाद होगी. तब तक एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, और छोटे से ब्रेक के बाद हम आपके सामने उपस्थित होंगे आज अंतिम बार फॉर द लास्ट टाइम ऑफ द डे मेरे काबिल दोस्त राज्य भाषा कन्नड़ में जनाब अब्दुल समद के साथ, जब फर्स्ट ट्रैक वॉरियर्स की पारी की शुरुआत यहाँ पर होगी एक छोटे से अंतराल के बाद. धन्यवाद. थैंक यू.
ಧನ್ಯವಾದ ಗೋಪಿಯವರೇ. 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 41 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈಗ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಮೊದಲು ನಾಣ್ಯ ಚಿಮ್ಮಿಗೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿತು. 40 ರನ್ನಿನಿಂದ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾದ ಆ ಬಲಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 40 ರನ್ನನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಈಗ 36 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ 41 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆದಲ್ಲಿ ಈ KPL ಕೂಟದ ಫೈನಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಬಹುದು ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್. ಒಂದು ವೇಳೆ 40 ರನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಎಡವಿದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆ ಗೆಲುವು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದ ಪಾಲಾಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟು ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಪಂದ್ಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿದೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ವಾತಾವರಣ, ಯಾಕಂದರೆ ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. ಉರಿ ಬಿಸಿಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಂಪಾದ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು ಇದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಒಟ್ಟು ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕಾರಣಕರ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ತಂಪೆನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು 36 ಮುಂದೆ 41. ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡಿದೆ. ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾದ ರಿಲ್ವಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭ 36 ಮುಂದೆ 41. ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಸೊಗಸಾದ ಚೆಂಡು, ನೇರ ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್ ಕೈಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಚುಕ್ಕಿ ಎಸೆತದೊಂದಿಗೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾ ದ್ವಿತೀಯ ಬಾರಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ರಿಲ್ವಾನ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಮತ್ತೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ವಂಚಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಅನುಭವ ಇವರಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಅನುಭವದ ಮುಂದೆ ಆಡಬೇಕಾದರೆ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಎಸೆತಕ್ಕೂ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಒತ್ತಡವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವುದು ಇದು ಅನುಕೂಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್ ಮೂರನೇ ಎಸೆತ, ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ, ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ. ಇದು ಅನುಭವದ ಆಟ, ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಟ, ಇದು ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಮನೋಹರವಾದ ಬೌಂಡರಿ. ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಥಮ 2 ಎಸೆತಗಳು ಚುಕ್ಕಿಯ ನಂತರ ಅನುಭವದ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು ರಿಲ್ವಾನ್ ರವರಿಂದ. ತಪ್ಪು ಬಂತು, ಅದನ್ನು ದಂಡಿಸಿದ್ರು ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ. ನೋಡುಗರ ಕಣ್ಮನ ತಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್ ಸೊಗಸಾದ ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ರಿಲ್ವಾನ್ ತಮ್ಮ ಕೈಚಲಕವನ್ನು ಮುಂದಿರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಈ ಬಾರಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5 ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಆಟದ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಬೌಂಡರಿ ಮೂಲಕ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಆದರೆ ಮುಂದಿನ ಪಯಣ, ಮುಂದಿನ ಸಮರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಊಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್. ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ನಾವಿಕ, ಸಾರಥಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ ತೀರ್ಪುಗಾರನಿಂದ. ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಣೆ ಅಶೋಕ್ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡಕ್ಕೆ 4 ರನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದರೆ ರಭಸದ ಎಸೆದಾಗಿತ್ತು, ಭಾಳ ರಭಸ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶೈಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಶೋಕ್, ನೀವು ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿಸಿ ಬಿಡುವಾದಾಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ರೀಪ್ಲೇ ನೋಡಿ. ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ನೋಟ ನಿಮಗೆ ಬೆರಗಾಗಬಹುದು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಚೆಂಡು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ಶೈಲಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಲ್ವಾನ್, ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಇಮ್ರಾನ್. ಬೌಂಡರಿ ಹೊಡೆದು ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಂದ, ಮಿಂಚಿನ ಓಟ ಅಶ್ರಫ್ ರವರಿಂದ. ಒಂಟಿ ಓಟ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದರೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆ 8 ಇದೆ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಓಟ 2 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಶ್ರಫ್ ಹಾಗೂ ಇಮ್ರಾನ್. ಅಶ್ರಫ್ ಬಹಳ ಅನುಭವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಳೆಯ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀರಜ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚು 40+,
ನೀರಜ್ ಹಿಡಿದ ಕ್ಯಾಚು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಂದಿನ ಎಳೆಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾದರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಓಡಿ ಬಂದ ಶೈಲಿ, ಆ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದ ಶೈಲಿ, ಆ ಚೆಂಡು ಹಿಡಿದ ನಂತರ ಭೂಮಿಗೆ ಧರಬಿದ್ದ ಶೈಲಿ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ, ಓರ್ವ ಅನುಭವಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಸತೀಶ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ಈ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ನೋದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತೇಳಿ. ನೀರಜ್ ನಿಜವಾಗಿ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 8 ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ, 3 ಎಸೆತ ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ. ಆದರೂ 8 ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ, 8ರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 8. ವೀಕ್ಷಕ ವಿರಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ 3 ಆಟಗಾರರು ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಿಲಕ್ ಗುರು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಬಹಳ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದು ಎಂಬ ಆ ಉದ್ದೇಶವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸನ್ಮಿತ್ರ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ತಿಲಕ್ ಗುರು ಬಹಳ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹನೀಫ್ ಪ್ರಥಮ ದಿನದಿಂದಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಶತ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಶ್ರಫ್ ಡಾನ್ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಯತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸಂಘಟನೆಯೇ ಸರಿ. ಪ್ರಥಮ ಓವರು 8 ಬಂದಿದೆ, 41 ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಉಳಿದ 5 ಓವರ್ಗಳು ಬಾಕಿ. ಎಸೆಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೌಸೀಫ್ ನಜರ್ 9th ಬ್ಲಾಕ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ತೌಸೀಫ್ ಈ ಬಾರಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನಾ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತವನ್ನ ರೊಲಾನ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ದಾಟಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ ಸ್ವೀಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಚೆಂಡು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ಷೇತ್ರರಕ್ಷಣೆ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಅವಳಿ ಓಟಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಗೆ. ಈ ಅವಳಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟುಗಳಿಕೆ 10ಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಸೊಗಸಾದ ಪಂದ್ಯ, ಸೊಗಸಾದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ, ಸೊಗಸಾದ ಸಂಘಟನೆ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸೊಗಸಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನಕ್ಕೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವೇ ಸರಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ಈ ಬಾರಿ ಗುಡುಗಿದ್ರು ಇಮ್ರಾನ್. ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಅನುಭವದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಅನುಭವದ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಇದು ಅನುಭವ. 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ 500 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಇದನ್ನ ಸುನಿಲ್ ಬೋಲೂರು ಈಗಾಗಲೇ ಓರ್ವ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಈ ಅಂಡರ್ಆರ್ಮ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ನಗದು ಬಹುಮಾನವನ್ನ. ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ. 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುವುದು ಇದು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೌಢಿಮೆ. ಈಗಾಗಲೇ 500 ರೂಪಾಯಿಯ ಬಹುಮಾನವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸೊಗಸಾದ ಪಂದ್ಯ. 1 ಸಿಕ್ಸರ್, 1 ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಂದ್ಯದ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೊಗಸಾದ ಆಟದೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉರ್ವಾ ತಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಈ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಓರ್ವ ಸಾರಥಿಯುವಾದ ರೋಹನ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೀಕ್ಷಕ ವರ್ಣ ಕೊಠಡಿಗೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಯ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದವರು. ಈ ಶುಭ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಕ್ರೀಡಾ ಕೂಟವನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು, ಇಲ್ಲಿಯ ಹಾಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಮತ್ತೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ತೌಸೀಫ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ಓರ್ವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದಾಂಡಿಗ. ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರು ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಗುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನ ತೆಗೆದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲವೇ ಅನುಭವ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವವೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಅನುಭವಿ ದಾಂಡಿಗರು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಪಾಳಯಕ್ಕೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸಿಂಹ ಸ್ವಪ್ನವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನುಭವ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಂದು ಇಂದಿನ ಯುವಕರಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಅನುಭವಿಗಳು. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೌಸೀಫ್ ಚೆಂಡನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು
ರೊಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತವೇ ಸರಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಚೆಂಡು ನೇರ ಗೂಟಕ್ಕೆ ಬೀಳುವ ಚೆಂಡದು. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿತ್ತು. ರೊಲ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟೋ ಅದನ್ನ ಕೈಯನ್ನ ಗಗನಕ್ಕೇರಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಇಮ್ರಾನ್ ರವರ ಈ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್, ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್, ಒಂದು ಬೌಂಡರಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಮ್ರಾನ್ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 15 ರನ್ನಿನ ಒಂದು ಸುಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 18 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ, ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 18 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರಂಭ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅಡಿಪಾಯ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ರವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಅನುಭವದ ಆಟವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಆಟಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯವನ್ನ ಹೇಳಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ದಾರೆ ಇಮ್ರಾನ್. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ 15, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಸಿಕ್ಸರ್, ಮತ್ತೊಂದು ಮನಮಿಡಿಯುವ ಬೌಂಡರಿ. 18 ಬಂದಿದೆ, ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೊಂದು ಮಹೋನ್ನತವಾದ ಪಂದ್ಯ, ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ತನ್ಜೀಮ್ ತನ್ನ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 19 ಬಂದಿದೆ 12 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ. 41 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು 36ರ ಮುಂದೆ, ಇಲ್ಲಿ 12ರ ಮುಂದೆ 19 ಬಂದಿದೆ. 24ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 22 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ, ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಸವಾಲೇ ಸರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ KFC ಕೋಡಿಕಲ್ ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಂಡವನ್ನೇ ಸೋಲಿಸಿತ್ತು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ. ಆ ಗೌರವವಿದೆ, ಆ ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ, ಆ ಅನುಭವವಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಬೇಕಾದರೆ 24ರ ಮುಂದೆ 22 ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್, ಇಲ್ಲವೇ ಫಾಸ್ಟೆಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೂಟದ ಫೈನಲ್ಗೆ ಏರುವ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣ ಮುಂದಿದೆ. 24ರಲ್ಲಿ 22 ಮಾಡುವುದು, 24ರ ಮುಂದೆ 22 ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಕತಾಳೀಯ. ಕಾದು ನೋಡೋಣ ಗೆಲುವಿನ ಮಾಲೆ ಯಾರಿಗೆ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಚಂಚಲೆಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಯಾರ ಕೊರಳಿಗೆ. 24ರ ಮುಂದೆ 22 ಎತ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 3ನೇ ಓವರನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಅನಿಲ್, ಓರ್ವ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಸೆತಗಾರ, ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಎಸೆಗಾರ ಅನಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ತನ್ಜೀಮ್ ರವರಿಗೆ. ತನ್ಜೀಮ್ ತೋಡಾರು ಪರಿಸರದ ಈ ಯುವಕ ಇಂದು ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ಭುತವಾದ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದ್ರು ಈ ತನ್ಜೀಮ್. ಮತ್ತೆ ಅನಿಲ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ವೀಕ್ಷಕರ ತುದಿಯಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆದ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ, ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವದ ಆಟ. ಇದು ಮಿಸ್ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್, ಇದು ಅಪಘಾತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. 24ರಲ್ಲಿ 22 ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಗಲಿಬಿಲಿ, ಇಂತಹ ಒತ್ತಡ, ಇದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಸುಸೂತ್ರವಾದ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟವನ್ನ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಅಬಾದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡದ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಅಜ್ಮಲ್ ತದೇಕ ಚಿತ್ತದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಇದು ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರ ಹೃದಯವನ್ನ ಗೆದ್ದ ಒಂದು ತಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಶತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ತಂಡ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನ ವರ್ಣರಂಜಿತವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು 3ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಇಲ್ಲಿ ತನ್ಜೀಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್. ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ ತನ್ಜೀಮ್ ರವರಿಂದ. ಕಾರಣ ಅನಿಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಎಸೆತಗಾರ, ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, ವೇಗಿ ಅಂದ್ರೂ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ವೇಗ ಅಡಗಿದೆ, ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಅಡಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಒಂದು ಎಸೆತವನ್ನು ಎಸೆದರು. ಕ್ಲೀನ್ ಬೌಲ್ಡ್ ತನ್ಜೀಮ್. ಇದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಹೋರಾಟ.
ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಓಡಾಟ ಕಾದಿರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಇಂತಹ ಅನೇಕ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ 35+ ಆದ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಅನುಭವ ಅವರಲ್ಲಿದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟನ್ನು ಜೀವಂತವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಫಾಸ್ಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿನ ಕಾಶಿ ಉರ್ವಾ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಡ್ಲಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಆಟಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್. ಅನಿಲ್ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಟಗಾರ ಸಲೀಂ ಸತತ 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರು ಸಲೀಂ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಮಾಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸಲೀಂ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಸಲೀಂರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು, ಅನಿಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು. ಈ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂಟಿ ಓಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಆಟಗಾರ ಸಮಕ್ಷಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಓಟ, ಮಿಂಚಿನ ಓಟ. ತಂಡದ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 22. ಅನಿಲ್ ರವರ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಬಹಳ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪಂದ್ಯ. ಸಾಗಲೇಬೇಕು, ಕಾರಣ ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಗೆದ್ದರೆ ಫೈನಲಿಗೆ, ಸೋತರೆ 2 ದಿನಗಳಿಂದ ನರಳಾಡಿ ಹೊರಳಾಡಿ ಬೇಸತ್ತು ಈ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ನೆನಪಿನೊಂದಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯ. ಮಾಡು ಇಲ್ಲವೇ ಮಡಿ. ಅನಿಲ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ಚೆಂಡು, ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ ದಂಡು. 5ನೇ ಬಾರಿ ಸೊಗಸಾದ ಆಟ ಅಶ್ರಫ್. ಇದು ಅನುಭವದ ಆಟ. ಎಷ್ಟೇ ರಭಸ ಇದ್ದರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಂತ್ರಿಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಅಶ್ರಫ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಚೆಂಡು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಅನುಭವ, ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಕೆಚ್ಚದೆ, ಅವರಲ್ಲಿದೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಎಲ್ಲವೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅಶ್ರಫ್ ಕೊಂಚಾರ್ ದಂಡನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ 23. ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಅನಿಲ್ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ ಸಲೀಂ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರಜ್ ರವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊಗಸಾದ ಆಟ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಮಾತ್ರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂಟಿ ಓಟದಿಂದ ತೃಪ್ತರಾದರು. ಇಲ್ಲಿ 24 ಬಂದಿದೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ. ಓವರೊಂದಕ್ಕೆ 8ರ ಸರಾಸರಿಯಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ 18ರ ಮುಂದೆ 24 ಬಂದಿದೆ. 18ರ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇನ್ನು 17 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ. ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ಕರೆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಆಚೆ ಈಚೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟೇ ಸಂದಿಗ್ಧ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಇಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವಿರಿ. ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ಅದ್ಭುತ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಗಾಗಿ 18ರ ಮುಂದೆ 17 ಸತೀಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ. Thank you very much, Janab Abdul Samad Katipala. The match is so excited, and more than your commentary is very excited. And thank you very much for that fantastic commentary. And 24 for the loss of 2 wickets, 17 to get from 18 deliveries. Match is evenly poised. And what an absolutely, one thing I want to say here, the reply which is came from the batsmen of Fast Tech Warriors, just like what the name what they got, Warriors. They really played like a Warriors. Especially the Imran, he got a start here for the first over. He just opened the gate here for the Fast Tech Warriors. Now, I think if they definitely after getting that much of start, they doesn't want to lose this match. Because 17 to get from 18 balls. But Torpedoes Khana have to pick some wickets if they wanted to back into this game. The first delivery quite nicely played, delicately played by the batsman. Batsman quickly realizing that no need to panic at all in the middle. Just dealing with the singles for them, enough for them to win this match. So they're implementing the same strategy here as they're rotating the strike. And I think Salim, the batsman who picked up a single, and umpire Roland Pinto just having an examination of the bat of Salim. And now it looks to be everything is okay. 25 for the loss of 2 wickets. 16 to get. 17 balls remaining. Anybody's game. Match is evenly poised. This man, Rilwan, is going to be a key bowler for the side of Torpedoes Khana. Because he's got a lot of experience playing for NM Cricketers Mangalore as well. And in the present season, he is a very successful bowler. This time improvising. Chance of run out. And oh my goodness.
This is definitely going to be a chance of run out, easy chance of run out. Looks like might be the ball is hits the stump. I want to see in the replay. Wicketkeeper fails to collect the ball. Oh my goodness, yes, ball is hits the stump. Bails are not off. The bails are not off, and that shows. I think Fast Tech Warriors, they're dealing with some lucks. And always I'm mentioning that luck is the key ingredients of success. If you have luck enough, then no one can stop you to get the win here. Looks like the batsman has got a lot of luck. Even the ball is after hitting the hands of wicketkeeper. Ball fell into the stumps, but bails are not off, and batsman survived. More than the wicket, they got one run as well. That's very important. 26 for the loss of 6 wicket. 15 to get. 16 deliveries remaining. Real one from the far end. Balls. This time, lovely shot. That was a rocketing towards the fence. I don't think fielder will going to get that. That ball is winning the race against the fieldsman. That reverse stroke is definitely going to release the pressure from the batsman. What an outstanding, unbelievable reverse stroke comes into play. Under pressure situation, it's been audacious thinking there by the batsman. Absolutely bold and brave. It's not that much of easy to play the reverse stroke against the face of real one. But Salim, how well he managed to get a contact with the bat. Exquisite footwork. And the bat speed has been very, very sweet enough to get past that infield to got the boundary score, jumped into 30. Now just 11 more runs required for the victory. Renewal balls, try to repeat that reverse sweep. This time Salim missed it completely. Good thinking by the bowler, seeing that again Salim wanted to play the reverse sweep, changing the line little bit and bowled down the leg stump, and batsman completely beaten. 11 to get. 11 to get. Down the leg stump, wicketkeeper behind the stump. Excellent work, but that was well within the reach of the batsman. One more dotted delivery. After that, 2 boundaries. Ridwan bounced back very well with the 2 dotted deliveries. All in sudden, the experienced Ashraf coming down the track, giving some suggestion to the batsman after getting the boundary. You need to rotate the strike. Might be the Ashraf wanted to tell to his partner, don't play the dotted deliveries. Need to rotate the strike. Just 11 to get. Here is Rilawan. Balls going for the sweep shot. Wicketkeeper missed it. Chance of run out. Wow, that was a throw. High throw. But umpire doesn't want to take any risk here. They wanted to see whether it's out or not out from the third umpires. Looks like it's a look at the throw. High throw. Rilwan gathers the ball and try to remove the bails, but batsman is in. The batsman is in, not out, signal coming from umpire, third umpire. All that we can see, the heart in the mouth of the supporters of the fans of Fast Warriors, because that could be a turning point if the wicket falls, but batsman is saved. So total score is 31 for the loss of 2 wickets. That means 10 runs required for the 2 overs. And Gopi, what an outstanding semi-final. Just like the spectators wanted to see the semi-final like that only, isn't it? And that 2 boundaries, what do you think, Gopi? One which is a 6 came from the bat of Imran, and then under pressure situation, the previous match, Salim plays the exquisite reverse stroke, and that was might be the little bit turning point of the match. 2 big strokes changed the complexion of the match. बिल्कुल सतीश, और पिछले ओवर में छक्का लगा था, तब उसके बाद वापस ला चुके थे खेल को टॉर्पेडोस खाना, और जहां पर सलीम का चौका लगा पिछले ओवर में विद रिवर्स शॉट बैकवर्ड थर्ड मैन पर, वो चौका मैं समझता हूं पूरी तरह फास्ट टेक वॉरियर्स को इस मैच में वापस ला चुका है. लेकिन 11 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी है, 10 रन चाहिए, 12 गेंदें बाकी है, मैच अभी भी समाप्त नहीं हुआ है. और ये जो ओवर शुरू होने जा रहा है, मैं समझता हूं सतीश, दोनों टीमों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ओवर. इसमें किफायती गेंदबाजी करते हैं तो निस्संदेह टॉर्पेडोस खाना का पलड़ा भारी हो जाएगा. और इस ओवर में 7 से 8 रन बटोरते हैं बल्लेबाज फास्ट टेक वॉरियर्स के, तो वो अपने मंजिल की ओर अग्रसर हो सकते हैं. और जहां तक मैच के विजय का सवाल है, मैं सतीश अभी भी कहूंगा मैच बराबरी पर रुक चुका है. Exactly, Gopi. The match is evenly poised. That was our prediction. But we want to see how
the batsman and bowler will going to handle the pressure here. Absolutely to the under pressure situation. But Anil, I think, is so experienced bowler for the side of Torpedoes Ghana. Wait and see how he's going to ball here. That was an excellent delivery. That was a definitely excellent delivery. The batsman tried to play that one down to third man region, but everybody knows that Anil is a very good half-cutter bowler, and because of that extra turn in the negation, batsman almost confused. That was a well within the reach of the batsman. Batsman completely missed out. Now, 10 to get, 11 balls remaining. Anil trying his level best to get some economical deliveries. Bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls to Salim. Salim went for the reverse sweep again. That was again one more dotted delivery as well. And I think that was a two magnificent deliveries. That was a clever piece of thinking there by Anil. Seeing the batsman going for the reverse sweep, he bowled down the leg stump. As far as the present rules and regulation is concerned, whenever the batsman going for the twisted bat, then bowler can bowl down the leg stump, and he bowled that very good line. Two back-to-back dot deliveries takes the match very interesting. Now 10 to get, 10 balls remaining. What a great match is going on here. After getting that boundary, I think Salim in the previous over, then he played with 4 dotted deliveries. So that means if hitting the boundary is not important, but at the same time even the rotation of strike is so important in this condition. And now 10 balls remaining and 10 required for the victory. Here is Anil bowling away from us. Right arm over the wicket. Balls to Anil. Anil going, this time batsman going for the off drive. And this is the right call. Absolutely right call for umpire Suraj Vijayalakshmi. This is a good call. And this is not an easy job, even for the official. Under this condition, this seems to be a little bit careful. And I think Suraj did a good job seeing that ball is outside the line of going away from the batsman. And right call, the white signal by umpire. 32 for the loss of 2 wickets. Now, 8 required. Now ball is going, I think is going to be a 9. 9 required and 10 balls remain. This ball is in the air but out of the reach of the fieldsman. The batsman cross off for signal. But interestingly, wait for the umpire signal. No signal coming from the umpire. That might be the opportunity for the fielder to take the catch. This is what I'm talking about. We need to grab all this opportunity. Ball is in the air for a long time. 3 balls completed in this over. 33 is on the board. 8 runs required. 9 balls remaining. What a great match is going on here. Absolutely magnificent match. Look at the crowd here. Here in the right of our commentary box is all we can see that jam-packed stadium. They know exactly this match is going to be very, very interesting. And both the teams are battling hard here. Battling hard here for the victory. No, exactly. This is the KPL. This is the Kudla Premier League. Because going to the finals of this Kudla Premier League, the prestigious cricket tournament, it's going to be a big honor for every team, so that the battle is going to be very interesting here. Again, Anil bowls. This time, going for the slog sweep shot. The chance of run out in direct, it has gone. Ashraf is gone. Celebration is on here for the Torpedoes Ghana. Ashraf is well short of his crease. Batsman going for the slog sweep shot. Appeal coming for the leg before wicket, but ball definitely outside the line of off stump. But look at the presence of mind here from the fielder at backward point region. Seeing that Ashraf is little bit struggled to go his home, and he hits the stump, direct it. The wickets are fell. Now is equation going to be very interesting, Gopi. 8 runs to get. Little bit correction, yes, 8 runs to get and 8 balls remaining. What do you think? This wicket of Ashraf will going to be a turning point of this match, because whenever the new batsman coming into the middle, it's not so easy, isn't it? Handling the pressure is not so easy. I think Torpedoes Ghana rightly wanted the wicket in this situation, and now new batsman coming into the middle have to handle the pressure. बिल्कुल, जो नए बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर उतर रहे हैं उन्हें दबाव को झेलना होगा इस वक्त. दे हैव टू हैंडलिंग द प्रेशर. और मैं समझता 9-8 गेंदों में 8 रन चाहिए, और इस ओवर में गेंदबाज ने बेहतरीन गेंदबाजी की है, मैं कहूँगा. और विकेट टू विकेट अनिल ने जो 3 गेंदें फेंके हैं निस्संदेह काबिल तारीफ हैं, और 3 गेंदें अभी भी बाकी है. और जहाँ तक सवाल है लक्ष्य तक पहुँचने का, मैच जो कि अभी भी बराबरी पर रुक चुका है, और जैसा कि आपने फरमाया बिल्कुल सही बात सतीश, जो दबाव को झेलेगा वही इस मैच में विजय दर्ज करेगा. फिलहाल इस वक्त दबाव दोनों टीमों के ऊपर साफ दिखाई देता हुआ, और देखते हैं यहाँ पर अगली गेंद पर क्या होता है. Absolutely, Hope you rightly pointed out that Anil is really bowled very well. All that we can see that is the quality deliveries. One wide is bowled, otherwise is bowled fantastic line and length. Now job is not yet over. 8 to get from 8 deliveries. Here from the commentary box, and Anil bowls. This time one more good delivery here. They're going for the run chance of a run out, but umpire says it's a leg by.
I don't think there's not anything wrong with that running between the wicket, I will tell you, because seeing that Salim is running in the right way, I don't think anything is happened here is as obstruction of fielding is concerned. Might be the Kurapada's Khanas, the fielders are asking for that, but I think umpire says it's a run. 34 for the loss of 3 wicket, but now 7 to get, 7 balls remaining, but outstanding delivery once again there for Manil. Not only the jam pack stadium out here in UCG, but in YouTube, just I got information from Irfan that 2K viewers enjoying this game of cricket in Bedra Media, through Bedra Media in YouTube. That was a fantastic. That shows the popularity of KPL, Kudla Premier League Season 2. 2K viewers in this semi-final watching this excitement match. Right arm over the wicket, Anil bowls. This time swept that one, very fine, down to deep at square leg, but fieldsman there in the deep. The one is a single, they're looking for 2, but I don't think they will going to get a couple of runs here. But outstanding over is comes in and there for Manil. He's just handled the pressure. Now, last over remaining, 6 balls remaining, 6 runs to get, and Gopi they got 7 wickets in hand. It might be that was one benefit here for chasing team, fast tech warriors. The last one is 7 wicket, but that all 7 wickets not that much of important if they're not able to get 6 runs in 6 balls. And each and every dotted ball, then pressure is on for the batsman. But each and every singles in every ball, I think fast tech warriors definitely they got a golden opportunity to enter into the finals of this prestigious cricket tournament. बिल्कुल सतीश, यहाँ पर अंतिम 6 गेंदों पर 6 रन बनाने हैं और देख रहे हैं कि यहाँ पर अंधेरा हो रहा है. लाइट्स इट्स गोइंग टू बी डिमर और यहाँ पर सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की जरूरत है. सेंसिबल क्रिकेट रिक्वायर्ड फॉर द बैट्समैन ऑफ फास्ट टेक वॉरियर्स. और एक भी गेंद अगर व्यर्थ होता है तो निस्संदेह बल्लेबाज के ऊपर दबाव पड़ जाएगा और इस वजह से हर गेंद पर इस वक्त उन्हें सेंसिबल क्रिकेट अपनाते हुए रन्स बनानी होगी. और जहां तक सवाल है टॉर्पेडोज खाना का, मैं कहूंगा यहाँ पर ये जो बैड लाइट जो यहाँ पर हो रही है इसका फायदा गेंदबाज को उठा सकते हैं अगर वो एक बेहतरीन लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी करते हैं, सूझबूझ भरी गेंदबाजी करते हैं. और मैं समझता हूँ यहाँ पर चंद डॉट गेंदें इस वक्त टॉर्पेडोज खाना के पलड़े को मजबूत कर सकते हैं. लेकिन क्या होगा ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा. 6 गेंदों पर 6 रन चाहिए और अभी भी यहाँ पर सती दोनों टीमों के लिए समान अवकाश है. और देखना यह है कि इस अंतिम ओवर में कौन सी टीम विजय दर्ज करते हुए इस श्रृंखला के मेगा फाइनल में प्रवेश करती है. तो चलते हैं अंतिम ओवर की ओर. आप आगे बढ़ाइए सतीश. Well, Gopi, the Akram is a so experienced bowler. Has been asked to bowl that last and final over. Need to be because only the experience, the players can handle the pressure. Here is Akram. Bowls, first delivery. The batsman just tapping the ball inside. Oh, that was a run out chance. The fielder then the short third man reached one trying his level best. Oh, they're going for the second chance of run out. Is that necessary here? I don't think so. Might be the batsman almost settled for the single. I think Salim. But his partner is not happy with this partner. Look at that one replay. Ball is just away from the wicketkeeper and Rilwan trying for the run out, missed the ball completely from his hand, and that time non-striker wanted to come back for the second run, but it's too late here. And yes, he's out. 36 for the loss of 4 wickets. Just 5 runs required for the victory. So 5 runs required for the victory. What a game of cricket we are having. The 1 runs taken, but 1 wicket's fall. Now 5 balls remaining. 5 runs required for the victory. And more than anything else, Gopi, if the match is tied, then it's going to be a super over of 3 deliveries. And in this underlight condition, the 3 deliveries of a super over, because there is no super over played in this tournament. And will it go into a super over? Wait and see. Now 5 to get from 5 deliveries. But Fast Track Warriors doesn't want to see the super over of 3 deliveries, but they wanted to finish the match. For that, they need to get 5 runs from 5 deliveries. Akram from the far end. Right arm over the wicket. Balls. Batsman tries that one right in the gap towards the deep backward score like Richard. They completed single looking for the fumble from the fielder. In comes the throw from the deep end. Batsman completed that couple of runs. They completed that couple of runs because of that couple of runs, I think released. The pressure is down. Pressure is off because now have to get another 3 runs out of 4 deliveries. Even they can play 1 dotted delivery, no problem whatsoever. But they have to get 3 runs from remaining 4 deliveries. But I think Akram
is being the experienced campaigner for the side of Torpedoes Ghana. He has to bowl two good deliveries if they wanted to back into this game. Otherwise, I think Fast Track Warriors definitely going to win this match. Akram, right arm over the wicket, balls. That's one ball, caught and bowled! Caught and bowled! What a fantastic reflection catch taken there by the Akram there. Now, once again, match is evenly poised. Now match is, look at that catch, absolutely fantastic reaction catch coming from Akram there. Batsman going for the drive, got a top edge, on his follow through Akram, extending his right hand, takes a wonderful catch and sending danger man Salim back on strike, back into pavilion. Now 3 to get from 3 deliveries. Once again Gopi's match is turning out. Once it was a 2 runs is taken, we all thought that now Fast Track Warriors will going to win the match. And immediately after this, after that 2 runs, they've taken a wicket of well settled batsman Salim. Now new batsman coming into the middle. Taslim into the middle now. 3 to get from 3 deliveries. What a great game of cricket we are having here. Certainly the organizers must be pleased with this. Absolutely, they wanted to see such kind of the finish for the semi-final. Even the spectators here in UCG, even those who are watching the 2K viewers of YouTube through Bedra Media, they definitely wanted to see this match is going to be a nail-biting finish. Here is Akram. Bowling, 2 to get from 2 deliveries. Taslim rotating the strike here. Now 2 to get from 2 deliveries. Is a new batsman, the young talented Aman is back on strike. Now everything is tested now. I think the cameraman not getting enough light to give some quality coverages here. And Irfan saying sorry for that. And quite understandable not having that much of light here, but you have to deal with just 2 deliveries. You have to wait for the 2 deliveries. How 2 deliveries is going to be, I don't know. Heartbeat is mounting up. 2 deliveries remaining. 2 runs here get. Here is umpire says dead ball. Absolutely right. Absolutely right. Roland Pinto immediately saying that when stride is over from the bowler, then no chance at all for making any monked out. The batsman almost walking down the track of the bowling of Akram. Akram quickly stopped his run-off, tried to make a run-out in a non-cycle and immediately umpire interfering, Roland Pinto, saying that gentleman game and already this stride and make an action to deliver the ball. Now 2 to get from 2 deliveries. What an excitement match is going on here. Here is the next one. Oh, missed it! Missed it! This is going to be a fantastic comeback. Akram not really left this game. As Aman is the man who put his team into deep trouble. Now 1 ball's remaining and 2 runs to get. And 1 ball's remaining, 2 runs to get. If the match is tied, then going to be a super 3 deliveries. Little question, super over of the 3 deliveries. Will it going to be a super over of 3 deliveries? Is it possible? That was definitely left to the organizers and umpires. But more than anything else, I think I would like to say, Neeraj is walking towards the middle. It's very interesting to see the local hero, the man who's got a lot of fan behind him. He's got a chance here to get some winning runs and become the hero after a long time. Is definitely, this ground is one of his favorite ground. He's achieved a lot of things in this ground, and now he's got opportunity. But we'd like to appreciate Neeraj in this condition. He is just having a bat in his hand. That is called cricketer. This is what you call the guts, the bravery decision coming from Neeraj, because he know I can do this. But even Akram, he also saying same thing, I can do this. But after picking up for 2 wickets, he is also very confident. The bowler is a confidence, batsman is confident. Wait and see who will going to win the race. 1 ball remaining, 2 runs for the victory. Here you go, tapping the ball in the gap, completed single, looking for 2, pummel from the fielder, coming from the throw, and match is tied. Now match is tied. What a great semi-final we had. Outstanding and astonishing the match here. Absolutely. This is going to be more interesting to see
that the super over of the 3 deliveries, will it going to be possible here? Will the two teams agree for that super 3 deliveries of in this condition? That's going to be the interesting up to the umpires, up to the organizers, and of course up to the two captains of both the teams. But I think it's a great match, absolutely great match. What a great finish for this match. It's been outstanding semi-final here. The first match which is ended in a tie of this tournament, of this 3 days of cricket, and we are really appreciate the effort of both the teams, and especially Akram in the final over, where they handled the pressure, the bowling in the final overs. This has been outstanding. Even Neeraj tried his level best to send that one in the gap, but not quite able to get a couple of runs, but he managed to tie the match, and that's so important. And now all up to the decision of organizers, will it going to be possible here to play a super 3 deliveries, super over of the 3 deliveries. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೀ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಬಂದು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕೀಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೋದು. ಒಂದು 2 ವೀಲರ್ನ ಕೀ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡವರು ಈ ಒಂದು ಕೀಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೇವೆ. So here is announcement. The super over of 3 deliveries, super over of the 3 deliveries of the semi-final will go into Friday. Yes, the organizer decided to play between these two teams that super over of 3 deliveries on Friday, and time definitely they will go into inform you the timing of that match, the super 3 over of the deliveries. If that match is tied, then toss will go into decide who will go into the winners. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸೂಪರ್ ಓವರ್ ಆಫ್ 3 ಡೆಲಿವರೀಸ್, ಈ 3 ಓವರಿನ 3 ಎಸೆತದ ಸೂಪರ್ ಓವರನ್ನು ಇದುವೇ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಪಂದ್ಯಾಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಂಘಟಕರು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. So till then we are saying goodbye from commentary box, and thank you very much each and everyone. Special thanks to the all spectators, those who are coming in a big numbers here to support this cricket tournament. Kudla Premier League 2021, outstanding support coming from the spectators, and we're expecting the same support in remaining 2 days of cricket. And tomorrow we'll go into one more the interesting day of cricket is coming up, because the seeded teams will go into clash here in the league matches of the Kudla Premier League season 6. And the first match, Team Elegant versus KFC Kodikal, that will going to start exactly 8:30 a.m. in the morning. And till then we are saying goodbye from the commentary box. Once again, myself Satish